I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes.
guys, this is Archie from Houseofesport. We wish you all happy Women's Day. Hi, this is Sakura OP from Team ESG and we wish you all a happy Women's Day. Hi, this is AJ Emin from Team Aronai Esports. Wish you all a happy Women's Day. Hi, this is Advika from Esports. I wish you all a very happy Women's Day. Hi, this is Dolly from BleedESP. I wish you all a very happy Women's Day. Hi, this is Pixu from Team BleedESP and I wish you all a very happy Women's Day. Hi, this is Anakin from Team Daddychill. We wish you all happy Women's Day. Hi, this is AJ Yuna from Aronai Sports. We wish you all a happy Women's Day. Hi, this is Ashma from Team BleedESP. I wish you all a very happy Women's Day. Hi, this is Celcius Yumiko from Celcius. Girls, wish you all a very happy Women's Day. Hi guys, this is Aisha from Team BL and I wish you a happy Women's Day. Yes, this is Spicy from Panic Esports. Happy Women's Day to everyone. Hi, this is Ishika from Team Bleed. I wish you all a very happy Women's Day. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to the Femstars 2022 concert by Immortals India in association with Houseofesport, along with our broadcast partner Playtonia and our media partner SportsKeedaesports. I am Alika FTW and with me joining on the desk is one very talented woman, that is Shadow, and we are going to be a storyteller for today. Well, thank you so much, Alika. You are most talented. But Femstars 2020 is the third iteration of Femstars brought to you by Immortals India. And Alika, this time top 16 female teams of BGMI are going to be competing against each other. And at the end of the day, the champion will be crowned. Yes, and it is, of course, the prize pool of 50,000 rupees. Yeah. I mean, that is a huge amount. And as we are celebrating the Women's Day, a very happy Women's Day to every woman out there. And you too, Shadow. Thank you so much, Alika. Yes, it's a day of the women, and this time only women are going to be part of this stream. The teams, the players, everyone. And who will be the champion is the main question, because these teams we have seen them in the past. They have all the skills and the talents, and this time the competition is going to be very fierce. Yes, it definitely is. We've got 16 teams participating and battling it out for that one champion crown, and that is 50,000 rupees. And firstly, I want to thank our sponsors, to taking such a great initiative on Women's Day, organizing tournaments like these, which will not only encourage but also build new female gamers who are, still looking out for opportunities. And as we see, so many female players from captains from the team coming out, and wish you all happy Women's Day. I hope you all have a great day. But today we are gonna see 5 map series of BGMI, and it's all gonna be battling out only by female players. Now that is one special thing. So we don't usually see a lot of female tournaments coming up, but a great initiative by Immortals India that they have bought out such a tournament and a beautiful platform to showcase their talents to every woman out there. And also, as a woman, I believe that you do of course play BGMI personally. So what do you think is very special about BGMI? For me, I think it's the action, because it's so better to be in life. Like I feel the life in the game when you're playing. Well, certainly, and this, especially the fact that you are able to connect with your teammates so absolutely well. The synergy is also quite well. When we play BGMI, it's all about the game. We involve in the game so much that sometimes there is a little aggression also, that why didn't you give me that sniper, and things like that do happen in the game, because outside everyone is a friend, but when you're playing so with such dedication that you want that winner chicken dinner for yourself. And the best part, you tend to make new friends. Also is a very, very big part of the game. And like you mentioned, the prize pool, the teams are fighting for the prize pool. So let's have a look at the prize pool that the champion will be getting. How much? The total prize pool is going to be 50,000 Indian rupees, and obviously it is going to be split among the top 4 teams. The first place will get 25,000, the second will get 15,000, the third and the fourth will get 5,000 each. So it's a big prize pool, Elika. Yes.
I mean, it is very big to begin with, and very soon in future we're gonna see much and much prize pool coming in through. Or the third and fourth position walking away with 5,000 rupees. It's not just the prize pool which you walk away with, but tons of experience, tons of fun today. I hope that more than making it all about winning, I also want all the women out there who are currently playing this game, this tournament, I also want them to have fun, take out some good experiences, make new friends, is what I expected. Anyway, moving forward, we've got 16 teams. Very special, by the way, because these teams, they just form the teams, and few of them already are professional players, I believe. There are a lot of content creators, a lot of surprises coming on the way. I mean, if you have any of your favorite streamer or content creator currently playing, then go ahead and spam their name in the chats. I mean, the support that all the audience will give, I think it definitely will give strength to the women to compete. As we move on to the team lineup, we've got Godlike Girls, Team Bleed, Team Daddychill, Team Nox All Stars, forwarded by Shadow. Do you want to carry? Yeah, sure. Then we have Team Aronai Esports, Team BleedESports, Team ESG, Team NP Girls, Team B4M, Team BLX Officials, Team Fineapple, Team Panic Esports, Team Bleed Officials, Team Celcius Esports, Team Levelx Winter, and then we have Team Exception Esports. These are the 16 teams, Alika, that are going to be competing today. And like you mentioned, all the female lineups, all the female content creators, the professional players, the casual players, everyone is going to be part of this event. So it's going to be full of excitement, and let's see what the day is going to hold ahead. In the team list we saw, I think I knew that Godlike had a male BGMI roster, but it's so surprising to see that Godlike also acquired a female roster. It's the first time I'm actually noticing a lot of girls in BGMI. Usually when I see it keeps around between professional teams, top teams. But moving forward, Shadow, do you have any predictions or anything that you would like to say to the audience before we move on to the first game of the day and the points table? Well, the points table is going to be pretty standard that we have been witnessing in the past events also of BGMI. But like you mentioned, what's new is going to be there. That first, let's have a look at the schedule. We have Erangel followed by a Miramar or slow-paced game, and then we have the fast-paced map that is going to be Senok, and the winter, the weekend is there, and like in fashion, we'll be ending the day with a classic OG map that is going to be Erangel. Talking about the points table, that is how you win the prize money. The first place gets 15, second gets 12, third gets 10, fourth will get 8 points, and it keeps on reducing. And 8th position to 16th position is somewhere you don't want to end up at all, because there are very high chances that you might end up with 0 or just simple 1 point. But the game changer is going to be the finish points. Per finish, you are going to get 1 point. Yes, so the more number of finishes you concentrate on, the better your chance you have to increase your score. Even if you miss out on the placement points, even if you miss out on the position points, don't worry. Every finish can get you a point. It's a backup option. Try to balance between the placement points and the finish points. It's just going to make the game even more easier. And as Shadow already walked us through the schedule, we're going to be beginning the game with Erangel. Erangel is one of my favorite maps actually in BGMI, considering the fact that it's the second biggest map and the greenery is just so beautiful. Actually, like Erangel is the OG map. Everyone who plays BGMI, they are so familiar with Erangel, every single ridge, nook and corner of this map. So it's an advantage for everyone. It's an even field, I'll say. Erangel is the even field for everyone, and considering the fact we have 2 Erangels, that means things are even steady for every single team. Yes, we've got 2 Erangels, and by default everybody has to go and play this map before entering into the esports side of BGMI, and I believe it's one of their favorite maps as well. So having 2 times Erangel gives us one more chance. If you are not better at any maps like Vikendi or Miramar, you can go back and grab your points in Erangel. That's going to be the last map for today. Also beginning with Erangel, ending with Erangel. In between we've got Vikendi, Miramar and Sanok. Although I'm not much fan of Vikendi due to the height proportion coming in, but Miramar is my favorite map.
Well, Miramar is your favorite map. That means you are a very sniper fan, I'll say. But I'm excited about Sanhok because Sanhok is usually the game changer. Sanhok and Vikendi, they change game completely. Sanhok is the fast map. This is a map where you can get maximum finish points. But Vikendi, last I saw the circles of Vikendi, they are bizarre. They can go any side and they can change your game completely. So these two games, girls, better be careful in these two maps. Yes, especially starting the day with Erangel, I believe a lot of crash landings are gonna be happening at Pochinki, George Pool. All the George Pool seems to be out of the meta now. I've seen pretty much the meta changing of BGMI. Initially it was Pochinki, then it was switched to George Pool. Now I think it mostly revolves around Gatka and School. Although I think the entire meta has evolved into something better. Now we can see most of the fights happening short range. I don't see much snipers coming out. I don't know if that's a new meta or if players are trying to build into more into firepower, invest in their skills rather than take a shot or take a risk with the sniper. But it's a good thing that fights are happening very quick and aggressive, very less third party scene in recent days of BGMI. Well, because position points, the fact that position points, placement points have completely changed. Everyone wants to be in the top 5. That's why initial fights teams tend to avoid most of the time. But sniper, like you mentioned, yes, the complete meta has changed. Now the teams will go for the sprays, M4 6 times spray they go for. But the sniper lovers, it doesn't matter which map, because sometimes I have seen sniper lovers using that bolt action even in Senok. So the sniper lovers are definitely going to go for that. I'm very sure of it. It doesn't matter which map is there. So my eyes will definitely be on those sniper lover girls who loves that bolt action shots, because the sound itself is so thrilling. Now the opponent teams little gets scared when you hear that AWM shot or the M24 shot. You're like, okay, I'll think before peeking. Yes. We've also got a final slot list ready, just a few minutes away from before we enter the first map of the day. And what are your favorite spots in Erangel? For me, I feel like Gatka is one of a very relatable spot, safe rape, good loot, I should say. Well, Gatka offers good loot. The loot, like you mentioned, has completely changed. Even the smaller compounds, teams go for secondary loot. They go for the smaller compounds, and later on they go for the secondary loots. But my favorite place will be the southern island, military base island. I know it's not favorite for so many people because of the circles towards the Fernie side. The rotations becomes a little difficult. But the fact that military base loot meta has not changed completely, it offers loot for even 3-4 teams. I think military base is going to be my favorite. Oh, yes, I've seen a lot of teams, take the dare to actually drop in the military base. But anyway, without any further delay, I think we'll move into the first map of the day, Erangel. But before that, I also want to say that Circle plays a huge toll in the game, and circle predictions I think get really difficult when it comes to BGMI. Although in the recent days, I've seen only northern side circle, northeastern side circle coming in at Erangel most of the times. It's very less that Gatka or the western side of the map is included, like George Pool. It being isolated, I feel a little bad because George Pool was one of my favorite places in the beginning, but now switched to Gatka since of the loot. Dropping down in military base is also a smart idea because you can have the entire islands loot by yourself, and it's in very less cases that you'll have a clash drop in military base. But bridge camp, there is a very high chance of a bridge camp happening. But talking about the circle, like you mentioned, these girls are very accurate with their circle predictions. Their IGLs know where the circle is gonna shift. Initially, first circle is a little difficult. You can't predict the first circle, but later on they are very on point with their rotations. I'm hoping so. We'll see that in the first game itself. So let's see how they are going to predict the circles, how their rotations are going to be coming in. Are they going for the slow rotation, or they are going for fully action-packed, aggressive from the very first game? That I have to see.
Also, to get more updates on which content creators and which streamers are actually participating in the tournament, for that you have to go ahead and check us on our social media. All the links are mentioned in the description. You can follow us on our Instagram, that is Immortals India, and House of Esports. The updates are available in both of the accounts, and also do subscribe to our YouTube channel because we have 5 long maps today with 16 teams competing out for the prize pool of 50,000 rupees. And also, if you would like to give us any tips or if you like the casting, you can follow us on our social. I'm Tanvi Jasmine FTW, and you are on Robin Shadow Instagram. 47. And if you guys have any feedback, also you can definitely give us. We'll forward it to the management. And if for us also, if you have got any suggestion, do ping us in the DMs. Yes, I एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जब मैं चैट देख रही हूँ। इतने सारे फैंस आ चुके हैं, इतने सारे ऑडियंस आके अपने फेवरेट टीम का नाम स्पैम कर रहे हैं। कीप डूइंग दैट गाइस, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड इट आल्सो इज अ वे टू सपोर्ट योर फेवरेट फीमेल कंटेंट क्रिएटर और एन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर। फॉर मी, I think in the current matches, I know one girl who plays very well, or not personally, but at least I've seen her play professionally. She's Olive. So I hope, she performs to my expectations today. And finally today I can get to choose. Do you have any, do you know any of the female players? Or like, Yeah. are you rooting or are you predicting out for some team? Actually, talking about the girls, every single girl right now in the lobby is skillful. They have the talent, but I think one particular girl I would like to say, Rebel. I think she is too good. She's too good. I won't be surprised if she becomes the MVP also today in any of the game. So I'll be having my eyes on that lineup. I believe she's a tomboy for the entire, BGMI industry. I've actually seen her clips recently a lot on Instagram. For a second, I thought, Rebel. I thought, is she playing in our tournament? And thank you for actually bringing her up. I've seen a lot of fans, and she definitely is a daring girl. I think not only BGMI, she has been playing a lot of games, and she's been in esports for a while. She's been a very good streamer as well. So all the best to everybody who is participating. And audience, go ahead, spam your favorite team in the chat, your favorite content creator, your favorite streamer in the chat. And meanwhile, within no time, we'll be moving into the first map of the day, that is a map of Erangel, with 4 more maps followed. And eventually we'll end up our game, end our day also with Erangel. Yeah. Elika, I would like to ask you, which is your favorite map? My favorite map is personally Erangel, since I played much of Erangel and Miramar only. And previously, I would say Vikendi was, one of the ice-breaking map for me. But I think later on, I just slowly switched to the basics of the game when it got relaunched. And I think I fell in love with the meta. And now that Pochinki is not a crowded place, you have enough space to get the loot and do the rotations. I really love the way how everybody's adapting with the game. It's not just players who are getting better, even the game is helping them do so. Well, the game and the entire ecosystem of our esports industry in India is developing. So are the players. So थोड़ी देर में एलिका अगर बात करें तो हमारा गेम यहाँ पे शुरू होने वाला है. फर्स्ट मैप लाइक यू मेंशन, इरांगल यहाँ पे रहेगा. Flight path, first circle. I'm very excited to see because from the very start first circle से ही जो है गेम कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाना शुरू हो जाता है अगर आपका फेवरेट ड्रॉप लोकेशन सर्कल के अंदर है. एंड फर्स्ट फ्लाइट पाथ, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. बहुत ही अगर बात करें तो प्रिमोस से कामिश्की की तरफ जाते हुए फ्लाइट पाथ है. मैप को कंप्लीट 50-50 पार्ट में डिवाइड करा है. दैट मींस यू कैन इजीली ग्लाइड टू योर फेवरेट ड्रॉप लोकेशन. यस, वेल कितना टाइम के बाद मैंने ऐसे प्लेन पाथ देखा है. यूजुअली मैं बहुत इस इनसाइड देखती थी, बट इट्स अ गुड स्टार्ट. अ डायगोनल कट कमिंग इन फॉर प्लेन पाथ इनटू द मैप, which means we have good chances of players dropping at shooting range. One team has already taken a drop over towards Quarry. We've still got Gatka, Pochinki unoccupied. Is there any team who's going to go all the way to military base is my question. I think Godlike की team military base के वास्ते जा रही है. They might take a very early drop into military base. We've got other teams slowly. One of them is trying to take over towards Gatka, and
I think plane path की route के वजह से a lot of teams will easily be able to reach their destinations. Usually we see a very one-sided plane path, but this is very impressive enough. And of course, Shadow आपकी favorite team और आपकी favorite जगह पे उतर रही है, that is Godel at military base. वेल एडवांटेज जरूर उनको रहेगा, लूट उनके पास अच्छा रहेगा, हीलिंग फर्स्ट एड एवरीथिंग दे विल हैव, इवन लेवल 3 आर्मर भी आई एम होपिंग उनको इजीली मिल जाएगा. बट वहीं अगर बात करें क्वेरी में एक और टीम हमें दिखाई देगी, दैट इज फाइन एप्पल. द क्वेश्चन इज, अगर एक सर्दर्न सर्कल बनता है या थोड़ा सा वेस्टर्न सर्कल भी अगर बनता है, ब्रिज कैंप की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है. पर अगर सिवर्नी की तरह सर्कल जाएगा, आई थिंक एवरी सिंगल टीम विल गो फॉर द अर्ली रोटेशन, तो ब्रिज कैंप की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी. बट गॉडल टीम बीइंग द एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल टीम, उनको पता है एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट आई थिंक फाइट ऑलरेडी आपके फेवरेट ड्रॉप लोकेशन जॉर्जपुल के नियर बाय में होती हुई दिखाई दे रही है, ग्लाइड करते हुए. आई थिंक वेपन नहीं मिला था, एक प्लेयर लॉबी से शायद एलिमिनेट हो चुके हैं. Yeah, that is not a good start actually. A rough start to begin the match with, but despite of that, I think we've got EST taking a drop, and it looks like they're going in for a quick loot. And one of the player, Fifi, is still in the parachute. She hasn't taken the drop yet. Yep, she did it right now. 3 players all together, but I guess last player दिख नहीं रही है मुझे कहीं आजू बाजू में. होगी कहीं दूर में. Hopefully she'll regroup back with her team. And Bleed ki team has to be really careful because they've got one of the teams very close to them. Even the slightest sound of a bullet can actually reveal their position away, so you don't want to initiate the fights very early into the game. I know that contesting on finishes is an important part of the game, but the better loot you have, the better chance you have to win the fight. वेल फिनिश पॉइंट्स जैसे कि आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गेम में. इट्स इनफैक्ट इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम. बट लाइक यू मेंशन, इनिशियली कोई भी टीम जो है फाइट अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द फर्स्ट सर्कल कि ये फर्स्ट सर्कल कद्धर की तरफ शिफ्ट हुआ है, बिकॉज वहीं से जो है रोटेशंस डिसाइड हो जाते हैं कि कौन सा पाथ रोटेशन के लिए ऑप्ट करेगी टीम. गॉडल की टीम की अगर जैसे बात करें, मिलिट्री बेस में आए हैं, नो कटेस्टेशन, दैट मीन्स दे कैन इजिली लोट अराउंड द एरिया. एक अच्छा लूट उनको ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है. लेवल 3 के आर्मर्स उनको मिल चुके हैं. रिबेल की जैसे कि हम बात कर रहे थे, मेरी नजरें जरूर इन पे रहेंगी बिकॉज शी इज टू गुड. इनफैक्ट एवरी गर्ल इज टू गुड इन दिस लॉबी, बट रिबेल इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर, तो वो एक एस्पेक्ट जो है देखने के लिए रहेगा. बट इन्हीं के साथ अगर देखिए बाकी प्लेयर्स भी, क्लची इज ऑल्सो देयर, बट वी हैव अनदर टीम ऑल्सो समवेयर, यास्निया. गॉडल के मेल लाइनअप की बात अगर करें तो वो यास्निया आना पसंद करते हैं, बट फीमेल लाइनअप कंप्लीटली डिफरेंट. मिलिट्री बेस में उनका जाते हुए दिखाई दे रहा है, बट कंपेटिटर्स यास्निया में जरूर है. I definitely do agree with you. Although ये काफी actually different हो पे, all the way from Yasnava to Southern Ireland काफी rotate करना पड़ेगा in case the circle forms somewhere like not comfortable taking entire favorable position into the north side. अगर ऐसे circle बना तो काफी सारे teams को rotate करने पड़ेंगे, because I think more than 7 teams गटका पुचिंकी के side drop लिया उन्होंने, गटका पुचिंकी और रोजो को follow करते हुए. And very few teams I've seen in Yasnama, and I think there is only one team near shooting range, not to in shooting range, but nearby shooting range. But hopefully ये players rotate कर लेंगे before the circle starts to close in and the zone starts to close. वेल डेफिनेटली यास्निया की जैसे कि आपने बात किया, यास्निया भी एक बहुत अच्छा ड्रॉप लोकेशन है. रैंगल का रोटेशन कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाते हैं, मल्टीपल टीम्स के लिए लूट जो है वो प्लेस ऑफर करती है. तो यास्निया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू ड्रॉप इन रैंगल, तो टीम को एडवांटेज रहेगा. बट जैसे कि हम सब वेट करें फर्स्ट सर्कल का, आई थिंक नॉर्दर्न साइड कहीं पे ये सर्कल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गॉडल की टीम अगर देखें ऑलमोस्ट 2000 मीटर जो है सर्कल से दूर है. जल्दी रोटेशन लेना पड़ेगा इनको नॉर्दर्न साइड. आई थिंक सिवर्टी की तरफ शायद सर्कल दिखाई दे सकता है हमें, based on the fact on the distance 2000 meters. I think somewhere northern side ही सर्कल जो है completely form हुआ है. That means यास्निया से तो बहुत easy rotation रहेगा. That team is having an advantage. But the question is, कोई टीम ब्रिज कैंप के लिए आएगी या नहीं?
फिलहाल के लिए मुझे लगता नहीं, बिकॉज काफी कम टीम्स ब्रिज के वो साइड पर ड्रॉप लिया है. देर आर वेरी लेस टीम्स जो क्वारी गए हुए, तो मोस्ट ऑफ देम गटका की तरह चले जा चुके हैं रोटेशन लेके. तो गेट कीपिंग इन ब्रिज माइट नॉट बी 100% श्योर थिंग, बट शायद कोई टीम हो सकती है, कोई और क्यों, गॉडल ही शायद वहां पे ब्रिज कैम्प कर सकती है अगर कोई टीम रोटेट करना चाहती है. व्हाट इफ द सर्कल is in the southern side. But on the other hand, we can already see that Winsop has already taken a knock. In the confirmation, I think it will be coming in soon. A very good start. काफी अच्छा नॉक किया इन्होंने. टीम नंबर 17 एंड उनके टीममेट्स भी बैकअप के लिए आ रहे हैं. आई थिंक शी गॉट 2 players if I'm not wrong. जी हाँ, बिल्कुल. लेवलएक्स विंटर बहुत ही अच्छा स्टार्ट इनका जो है होते हुए दिखाई दे रहा है. 2 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए. दैट मीन्स अ वेरी गुड स्टार्ट. कुछ पोजीशन पॉइंट्स एंड दे आर गुड टू गो. फर्स्ट मैच से ही एक अच्छा स्टार्ट इस टीम के लिए होते हुए दिखाई दे रहा है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने शायद यास्निया में ड्रॉप इन किया था. दैट मीन्स उनके रोटेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं. बट ऑन द अदर हैंड ओपोनेंट टीम की अगर बात किया जाए, उनके लिए आई वोंट से एक अच्छा स्टार्ट है. 2 प्लेयर्स ऑलरेडी लूज कर चुके हैं. दैट मीन्स थोड़ा सा सेफ गेम प्ले उनको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. थोड़ा सा सेफली गेम को अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज एक 2v4 का फाइट आई डोंट थिंक कोई भी टीम जो है वो लेना चाहेगी, बिकॉज चांसेस ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर. एक पोजिशनिंग अगर अच्छा है, डेफिनेटली एक 2v4 आप फाइट निकाल सकते हैं. बट अगर पोजिशनिंग खराब है तो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है. बट वहीं अगर बात करा जाए तो लेवलएक्स विंटर की टीम थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड रोटेशन करते हुए दिखाई दे रहा है. आई थिंक दे आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स समवेयर सिवर्नी और द नॉट शूटिंग रेंज कामेश की साइड से रोटेशन शायद लेना चाहेंगे. मे बी शायद स्टेलबर को जो हिल है अपने लिए एक्वायर करना चाहेंगे. एक हाइट एडवांटेज जरूर उनको मिलेगा. बट वहीं अगर बात किया जाए दूसरी टीम की, ऑलरेडी सिवर्नी के पास एक कंपाउंड अपने लिए ग्रैब कर लिया है. दैट मींस सर्कल कंप्लीटली सिवर्नी साइड है एलिका. Yes, and फिलहाल के लिए I believe that a lot of teams are trying to actually play very passive. Apart from Godlike की टीम, अभी तक रेबल काफ़ी एग्रेसिव जा रही थी. एंड एक जो दूसरी टीम जिन्होंने 2 किल लिए थे, 2 फिनिशेस लिए थे एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द मैच में. So no clash drops coming in. I think these women are playing it very safe and passive because placement positions काफी matter करते हैं. And eventually at the end of the day, your finishes are just the bonus to the placement points you have. So the job gets easier. I think we are about to begin the first circle as well in some time. And before that, I definitely want to have a look at where the circle is formed. And what, Shadow, is it true that you can actually predict the circle out in BGMI? Especially, I see a lot of professional players doing that while playing. They already know where the circle might end up and they just go camp over there for the rest of the game. They just wait for the teams to rotate, catch them rotating off guard. I won't say it's easy to predict the circle. There are possibilities because the meta completely changes after some certain time. Right now we are seeing the meta of northern circles, but it keeps on shifting also. But the players are pretty much, I think, well aware where the next shift might go. It's a possibility game. Sometimes it's a 80-20. 80% you can predict the circle, 20% the circle will predict itself and circle will play against you. So we can't be very 100% sure that exactly here the circle is going to go. But yeah, but the main task is not predicting the circle. The main task is moving inside the circle because you don't know where your opponent teams are. The favorite compound, the compound you want to hold on to, maybe there is a opponent team already present over there, so it becomes a challenge. You have to opt for a rotation that you are very sure कि वहां पे आपका रोटेशन कट ऑफ नहीं होगा. सो वो एक बड़ा चैलेंज जो है बन जाता है. वहीं अगर हम बात करें B4M की टीम की, अभी अपने लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग यास्ना के पास का ये एरिया उन्होंने होल्ड किया हुआ है. नो नॉट यास्ना, सिवर्नी, आई एम सॉरी, सिवर्नी के पास का एरिया ये उन्होंने होल्ड किया हुआ है. सेकेंडरी लूट के लिए ये टीम जो है जाते हुए दिखाई दे रही है. बट थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज सामने एक और टीम है कंपाउंड में. दैट इज गोइंग टू बी टीम NP. Yes, and ND, I don't think they will start a fight. And there we go. Finally, we get a look at the circle
It is completely shifted towards the northern side. We've got shooting grade 70, Stalber, Rozok, and School into the play, and a little part of Pochinki, northern side of Pochinki. Although Godal की team all the way from military base, उन्होंने rotate कर लिया, ruins पहुंच चुके हैं, वहां से उनको बस आराम से जॉर्ज पुल की तरफ का ब्रिज यूज करके शूटिंग रेंज तक पहुंच जाएंगे, तो वो एक सेफ रोटेशन बनेगा. बट इफ दे इंस्टेड चूज रोजोक या स्कूल टू मेक द फाइट, देन इट्स गोना बी टफ. आई थिंक हमको यहाँ पहले फाइट नोटिस करने आ रहा है. दैट इज टीम ब्ली ट्राइंग टू टेक दी B4M down. Cookie is already down, and I think she'll be getting confirmed knocked at the same time. The rescue is coming in. Only one player, three players already going down on knees. Kuhu, on the other hand, is also knocked down, but I think she'll be back on her feet before she even realizes that. Well, she has been knocked down. Let's see revive यहाँ पे मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि ब्लीड की अगर बात करें, आशी एक रोटेशन के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड दे हैव एन एडवांटेज, ऑल्सो हाइट एडवांटेज है. सो इजीली ओपोनेंट टीम्स के रोटेशंस या फ्लैंक एंगल्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इट्स ऑल ऑन आदित्य वाइटी कि वो यहाँ पे क्या कर पाती हैं. एक 1v4 का सिचुएशन, दो प्लेयर्स ऑलरेडी नॉकड आउट है एंड जिस तरीके से टीम लेवल एक्स दो प्लेयर्स रोटेट कर रहे हैं, आदित्य इज ट्राइंग टू टेक डाउन प्लेयर. बहुत ही प्यारा शॉट, जारा को मूविंग व्हीकल से टेक डाउन किया, बट शी ऑल्सो बिट्स बाय बाय, क्योंकि ओपोनेंट टीम के दूसरे प्लेयर उनको फिनिश करते हुए दिखाई देंगे. एंड सोबिल की अगर बात करें, काफी अच्छी शुरुआत उनकी होते हुए दिखाई दे रही है. 3 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं. सोबिल की अगर बात करें, पहले भी एक 1v2 की सिचुएशन में 2 फिनिश पॉइंट्स उन्होंने लिए, अब 3rd फिनिश पॉइंट आते हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 से ज्यादा फिनिश पॉइंट्स उस टीम के पास आ चुके हैं. बट गॉडल की टीम भी थोड़ा सा दिक्कत में आ चुकी है, बिकॉज अल्फा दीदी यहाँ पे जो है नॉक है. Yeah, but unfortunately, team NP के team में से Pancake has already been put out of the server, which means they only have a 3-man squad right now. Although, to initiate fights with a 3-man squad can be quite tricky. पता नहीं if they can actually finish the fight. But keeping that aside, Godel a good start for them. One finish coming into the hands. Alpha Didi is back on her feet. 4-man squad back. Alpha Didi, I think she has to take the medikit and heal herself before anybody else knocks her out. And look at that. One of them was actually trying to go outside, but I think they've been spotted out. And Sanya is in big trouble right now. There's only one player left from Sanya's team, that is Elita, who can probably help her get back. But I guess the beautiful nade coming in through Clutchy won't let her survive for a long time, and that is it for Sanya. The team will be getting wiped away with Godel picking out 4 finishes in their hands. जी हाँ, गॉडल की टीम की एक अच्छी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है. आई थिंक 2 टीम्स के नाम जरूर यहाँ पे लेना चाहूंगी. विंटर लेवल एक्स की टीम एंड गॉडल, एक अच्छा स्टार्ट. एंड पोजीशनिंग की अगर बात करें, गॉडल की टीम अभी फिलहाल रूइंस का एरिया होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है. एक बहुत ही प्राइम लोकेशन ये है बन जाता है जब नॉर्दर्न सर्कल्स होते हैं. दैट मीन्स दे आर इन अ वेरी गुड स्पॉट. अगर सर्कल थोड़ा सा सदर्न साइड भी शिफ्ट होते हैं, दे आर इन अ गुड स्पॉट. अगर नॉर्दर्न शिफ्ट होते हैं, दे कैन ऑल्सो रोटेट. बट एनपी की टीम यहाँ पे रोटेशन के टाइम कुछ टीम्स को स्पॉट करते हुए दिखाई दी, शॉट्स लेने के ट्राई कर रही हैं. आई थिंक ब्लीड के प्लेयर्स यहाँ पे जरूर दिखाई देंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ब्लीड के प्लेयर्स, बीएल की टीम सेफली मूव कर गए हैं अपने लोकेशन की तरफ. बट एनपी के नजदीकी इलाका एक और टीम हमें दिखाई दे रही है, दैट इज टीम नॉक्स. एंड आई थिंक डेलिना इज अवेयर, डेलिना हैज एन आइडिया कि एक नजदीकी टीम जरूर यहाँ पे मौजूद है, तो थोड़ा सा केयरफुल उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीएल एंड दूसरा ओपोनेंट टीम भी, दोनों टीम्स अगर शॉट लेते हैं तो एनपी की टीम थोड़ा सा दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि नंबर्स एडवांटेज नहीं है. ऑलरेडी पैनकेक को वो लोग यूज कर चुके हैं. Yes, I think man disadvantage काफी important role play करता है, especially BGMI में, when there is a squad that you have to take a fight against. Although एक स्ट्रैटेजी है जो काफी सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं, एंड एक वाइज मैन ने बोला गया है, बट आई डोंट नो हु दैट वाइज मैन इज. He said is that isolate the player and then go for the kill. And this is what I've been noticing in a lot of esports tournaments, and I hope that these girls also put stats out. Even if you have a man disadvantage, you can put that to your advantage. Try to use some different strategies. Try to isolate the enemy's player and then maybe go for the kill. It's also gonna increase the number of finishes you have in your hands. On the other hand, Winsobi, who had the first blood in this game, currently have 3 finishes to their hands.
And out of 16 teams, 2 teams are already eliminated, leaving with 14 teams and 52 players. And we're barely like 5 minutes into the game. On the other side, we can see Team NP. I think they're currently gatekeeping for Nox, if I'm not wrong. The moment Nox, starts walking out of that compound, they're gonna receive a lot of damage. Well, they are just holding on to the position. वो next circle का I think यहाँ पे wait करते हुए दिखाई दे रहे हैं, because जब तक circle favor कर रहा है, आप एक safe position पे, there is no need to rotate. सो आई थिंक वो उसी चीज का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, जैसे कि आप सर्कल प्रिडिक्शन की बात करी थी एलिका, लेवल एक्स विंटर का अगर हम देखें जो कंपाउंड इन्होंने होल्ड किया हुआ है नॉर्दर्न साइड पे, नॉर्दर्न आइलैंड पे, बहुत ही अच्छा एंड मल्टीपल फाइट्स लेने के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन फिलहाल के लिए. गॉडल की टीम की अगर बात करें, जॉर्जोपुल साइड से वो फिलहाल रोटेट करते हुए दिखाई दे रहा है. आई थिंक दे विल हेड टुवर्ड शूटिंग रेंज समवेयर, बट देखते हैं टाइम के साथ कौन सा रोटेशन का पाथ वो लोग ऑप्ट करते हैं. बट लुक एट रोजोक. रोजोक के अगर ब्रिज से या वाटर के एरिया से टीम रोटेट करने का ट्राई करेगी तो उनको 2 टीम्स के सामना करना पड़ेगा. सेल्सियस की टीम ऑलरेडी वहां पे पोजीशन है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम ब्लीड और टीम बीएल, आई थिंक बीएल इज ब्लीड, आई थिंक इट्स ब्लीड की टीम ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है. तो थोड़ा सा केयरफुली रोजोक से रोटेशन जो है टीम को लेना पड़ेगा. बट मोस्ट ऑफ द क्राउड एलिका हमारा सिवर्नी के आसपास है. दैट मीन्स अगर सर्कल शूटिंग रेंज जाता है या कहीं सिवर्नी से कंप्लीटली अपोजिट जाता है, उन टीम्स को बहुत दिक्कत होगा. अगर सर्कल थोड़ा और नॉर्थ चले जाके 50% पानी 50% लैंड होता तो क्या ही मजा आ जाता. बट दिस टाइम इट इज टेकन एंटायर शिफ्ट, अ कंप्लीट शिफ्ट टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ शूटिंग रेंज. रोजोक को थोड़ा सा नॉर्थन पार्ट बचा है, एंड वी ऑल्सो डू हैव द रिवर इन बिटवीन. उसको क्रॉस करते हुए काफी मुश्किल होने वाली है. अ लॉट ऑफ टीम्स आर गोना गेट अ लॉट ऑफ डैमेज. If they want to choose it the bridge way, they have to be very careful, since the only bridge that connects us directly to the shooting range is Yasnava. And Yasnava pe already काफी सारे players है, so I'm not expecting that teams would like to take that kind of risk, although pretty much most of them are trying to concentrate in getting into the circle. They're not concentrating more on taking fight shadow. They want to play for the position points. They are rotating, they are playing in the edges of the circle. They are completing their number one responsibility, that is surviving within the circle. उसका रीजन है क्योंकि अभी भी लॉबी में 14 टीम्स है. इस पोजीशन पे अगर आप एलिमिनेट होते हो, दैट मींस यू आर गेटिंग नथिंग, नाड़ा, 0 पॉइंट्स. एंड वो चीज कोई भी टीम नहीं चाहेगी. वो टॉप 5 में किसी भी तरह आना चाहेंगे, इफ नॉट टॉप 5 एटलीस्ट इन टॉप 8 पोजीशन, ताकि आपके पास एटलीस्ट प्लेसमेंट पॉइंट्स हो बैकअप के लिए. इस पॉइंट पे एलिमिनेशन बहुत भारी पड़ता है यूजुअली टीम्स के लिए, तो थोड़ा अवॉइड वो करेंगे. बट गॉडल की टीम की अगर बात करें, एक और फाइट इरप्ट होते हुए दिखाई दे रही है. एक सोलो प्लेयर यहाँ पे शॉट्स लेते हुए दिखाई दे रहे थे ब्लीड की टीम पे, बट फिलहाल के लिए कंपाउंड की तरफ ब्लीड के इशिका मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेट्स सी बेकी, जो कि उनकी प्लेयर नॉकड आउट हो चुकी हैं, उनको रिवाइव मिल पाता है या नहीं, क्योंकि गॉडल एक अच्छा फॉर्मेशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं हिल के पास में. लो ग्राउंड पे बीएलडी के प्लेयर्स फिलहाल के लिए हैं. ऐश की अगर बात करें, she heard the sound, she knows Rebel is somewhere nearby. थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा. इशिका ये Rebel पे शॉट्स लेते हुए दिखाई दे रही है, but इशिका also goes down. Rebel बहुत प्यारा स्प्रे यहाँ पे जो है आते हुए. It's a not a even fight, Elika. Not at all a even fight, I'll say. Yeah. Well, छोटे छोटे फाइट से शुरू होते हैं, बड़े finishes and बड़े points, and I think the push is definitely not gonna be stopping anytime soon, coming in from Team Godel. A beautiful finish coming on towards the team, and they have 7 finishes in total with their hands. The only player that they have to take down in the last is BLD's Nora. Nora is currently taking a cover below the ground, I think near a very not a very good cover, I should say. I mean, eventually if she walks up or if her position is revealed, all 4 of us are gonna hunt her down. She's hiding. I think Godel is already trying to hunt them down. She is hiding. She is going for the position points. Yes. और I think वो थोड़ा सा सरप्राइज देना चाहेंगी गॉडल के प्लेयर्स को, because गॉडल has no idea where Nora is. Nora जिस तरीके से हाइड कर रही है खुद को, अगर चारों प्लेयर्स गाड़ी में बैठते हैं in one single spray, she can pull at least 3 players down. तो गॉडल को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, because according to them, I don't think they have any idea कि नोरा आसपास है. दूसरी ओपोनेंट टीम उन पे शॉट्स ले रही है.
Nora, you can change the game. You can change the game. You can get few finish points. Yes. वो बस एक perfect opportunity का wait कर रही है, and let's see वो opportunity उनको कब मिलता है. I mean, a 1v4 is also a possible situation if she's gonna be the one to be in the third party. But despite that, we see Gordon trying to take a fight against BleedESports. And I believe that currently BleedESports is gonna be in a little trouble because once a circle starts to close in, or once another circle forms, that's the fourth circle, they will be out of the area. And I guess Gordon has decided to walk away from the fight. BleedESports still inside that zone. They are to be the ones who have to currently walk away from this position, from this compound. They have to get out. Just another 2 minutes and the circle will start to close and they'll be out of the zone, which is not a very good start, I should say. Most of the time the team start losing members is because when they are not inside the circle. But in this case, I think everybody is more focused on staying within the circle. As I told you, the only bridge that connects, and that bridge is currently the main point over here. We've got, there can be bridge campus coming in through if I'm not wrong, but since the area that bridge is there is very less inside the circle, I mean it has a very less area inside the circle, so mostly teams circle की center पे रहना prefer करेंगे. but अगर हर team से center जाएगी circle की तो fights काफी आराम से शुरू हो जाएंगे. वहीं अगर ब्लीड की टीम का बात करा जाए तो आईजीएल यहाँ पे जो है फिनिश हो चुकी है एंड गॉडल टीम लीडिंग हेवीली विद 8 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी. एक अच्छा पोजीशन उनका अभी भी दिखाई दे रहा है. दूसरी टीम जो अच्छे स्पॉट पे बट जोन में नहीं है, दैट इज लेवलएक्स विंटर, एंड उन्होंने स्पॉट कर लिया है गॉडल की टीम को. दो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स अभी इस मैप की, दे आर गोइंग अप अगेंस्ट ईच अदर. बट दूसरी साइड अगर बात किया जाए, सेल्सियस के प्लेयर्स भी थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेट्स सी इफ दे कैन गेट बैक ऑन देयर फीट्स. सर्कल में हमने देखा पानी की टीम बहुत अच्छे स्पॉट पे सेल्समैन फिनिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इविल की अगर बात की जाए, एक अच्छा पीक की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है, बट क्या प्लेयर को नॉक कर पाएंगे या नहीं. विंटर एक्स को अगर बात करें सर्कल में एंटर करना है एंड दो टीम्स की नजरें उन पर हैं फिलहाल. बहुत ज्यादा अटेंशन वो ग्रैब कर चुकी हैं, जो कि आगे जाके उनको जरूर दिक्कत देगा. I think as long as they are fighting, they are revealing their positions away, they will always have that risk in their hands. And Godel currently is in a very vulnerable position, and so is Windows team. Godel Rebel trying to put her spray down. He's doing a lot of damage, although one knock shouldn't be that hard for Rebel. Finally puts Kuhu to the grave. We've got Bleed's team moving forward with aggressive pushes. But think at the long term, eventually when the circle starts to close in or the team starts to rotate inside the circle, Gordon is going to be the team in a huge trouble, because they are the ones who are currently the patty in the burger. They are the one in the center. They are the center of attraction for every team. So every team might try to get a piece of Gordon right now, a player from Gordon, if they are out in the opening, and if they are out in the open and they're not taking proper cover. वेल कवर की अगर बात करें, गॉडल के पास आई थिंक एक अच्छा कवर है. द वे दे आर स्प्रेड आउट इन अ 2v2 स्प्लिट, दे आर चेकिंग ऑल द 4 एंगल्स. एक अच्छा पोजीशन है नो डाउट. बट वहीं अगर लेवलएक्स विंटर की बात करा जाए, वो भी सर्कल में तो एंटर कर पाए. आई हैव टू सी उनका पोजीशन, बट द सर्कल शिफ्ट, ये वाला जो शिफ्ट है गॉडल लेवलएक्स विंटर एंड बाकी सारी उस तरफ की टीम्स को बहुत दिक्कत देने वाला है. उनको मूव कर रहे हैं सर्कल के अंदर. ईएसजी के पोजीशनिंग की अगर बात करें, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज बीएमके रेवन ने उनको जरूर स्पॉट कर लिया है. उनका व्हीकल कंप्लीटली डैमेज हो चुका है. दैट मींस सर्कल में एंट्री के लिए जो व्हीकल उनको चाहिए था वो भी अब वो गवा चुके हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज ऑन फुट सर्कल में एंटर करना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क ऑलमोस्ट. वहीं अगर तनीषा की बात करा जाए, तनीषा अभी तक स्पॉट नहीं हुई है. दैट मींस अगर उनके पास एक व्हीकल है तो ईजी की दिक्कतें थोड़ी सी आसान हो सकती है. बट वहीं ब्लीड ईएसपी की बात करा जाए तो नोरा अकेली प्लेयर जो बची थी उनको एलिमिनेट कर दिया गया है. तो बात है आई थिंक 13th पोजीशन पे फिलहाल वो टीम भी बाय बाय बोलते हुए. बट पैनिक G2 की अगर बात करें, अकेली प्लेयर है गॉडल के अगेंस्ट. Yes, but she's still not losing her hopes. She's trying to take that fight. Not only Godel, but we do have Rebel and Clutchy, the deadly duo coming into the play. They're putting a lot of nades, and so is Spanny G.
Paniji, the only person left, she puts out a smoke. She's covering herself, and Rebel or Klachiko, they'll soon run out of patience, and the backup has arrived. It's very less time until Paniji gets spotted out. Godly will is tagged down to very low HP. The circle's getting closed very smoothly. Paniji की टीम दूसरे कंपाउंड पे बैठी है, बट nobody has a clue that पैनी जी इनकी ही कंपाउंड में, गॉडल की कंपाउंड में स्टेयर केस पे बैठी है. If Pani ji pushes, she will get more frags. Yep. यूजुअली विजिट टावर के साथ टीम्स एक्सपेक्ट करती हैं कि अंदर प्लेयर होगा. दैट्स व्हाई गॉडल इतने ग्रेनेड्स वहां पे थ्रो कर रही है. बट लुक एट द आईक्यू ऑफ पैनिक G2. शी वाज नॉट एट ऑल इनसाइड देयर, बट फाइनली उनको यहाँ पे नॉक कर दिया गया है. बट नॉक होने से पहले उन्होंने रिबेल को जरूर नॉक किया था. एक कंप्लीट 1v4 सिचुएशन था, ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी. बट आई हैव टू से एक अच्छा पोजीशन उन्होंने ढूंढ लिया था विजिट टावर में. Yeah. But she could have done it a little different, you know. Her team was nearby. Her team was in the next compound. Maybe uska team उनको backup करने देने आ जाती Pani ji ko, then maybe it would have been a different story. But anyway, coming back to the game, we've got Winsobi, who just dropped out of the car and is nearby rocks. But she has to face off against Team Gracie. They are currently in the water, and Celcius के एक player भी पानी के अंदर है. तो काफी catchy, eye-catchy game होने वाला है. And AG Kira gets spotted out. Godal Alpha Didi trying to take a knock, and God Alpha is going all hail. 12 finishes, not even a single body drop from Godal. Well, 12 finish points and I think casters का सासा हुआ है क्योंकि एक प्लेयर वहाँ पे गॉडल के नॉक हुए हैं. क्लची, लेट्स सी रिवाइव उनको मिलता है या नहीं. आई थिंक रिवाइव मिल जाना चाहिए. बट सेल्सियस की अगर बात करें, एक अकेले प्लेयर, शी इज हाइडिंग समवेयर. बट कर्टसी टू दैट स्मोक, गॉडल की टीम को भनक लग गई है कि पास में एक टीम है. जहर खुद को एक्सपोज करते हुए एंड अल्फा दीदी इज रेडी टू टेक शॉट. वहीं अगर पानी की टीम की बात करें, प्लेयर नॉक होते हैं. इवन एक सी भी यहाँ पे जो है नॉक होते हुए, आई मीन फिनिश होते हुए बू के हाथों. बट पानी के कंपाउंड पे यहाँ पे रश आता है बीएल के स्क्वाड का. एंड बेबी इज द लास्ट प्लेयर रिमेनिंग. 1v3 सिचुएशन यहाँ पे जो है खड़ा होते हुए. कैन शी क्लच आउट? क्या वो क्लच कर पाती है या नहीं? अगर बात करें, जहर यहाँ पे एग्रेसिवली पुश करना चाहते हैं. चारों तरफ से ग्रेनेड आते हैं. बेबी नॉक्स डाउन जहर. क्या फिनिश करेंगे? फिनिश करा, बट यहाँ पे बीएल की टीम विक्ट्री लेते हुए. Currently, the center of attraction ये की bridge. Actually, मेरा prediction अच्छा आया and I'm very surprised about it because initially I told the only bridge connecting and this bridge has a higher advantage, and eventually when the zone ends up in circle or the lake side, the job just gets tougher. Few of the teams have to be surviving inside the water, and since there's not much cover and only few compounds left to take cover, it's gonna be tough. Few teams have to get eliminated. But ladies and gentlemen, we are down to the last 6 teams in the first map for the day, and the aggressiveness is not stopping. Team Nox with 4 finishes, and we just got another team eliminated. They're trying to make their way inside the circle. Circle काफी छोटा हो चुका है. I still don't understand how 5 teams are surviving without initiating any fights, and Team Nox is playing some 100 IQ game over here. They're putting smokes all over the place so their position is not revealed away, or at least the opponent is distracted for now. एक्चुअली अगर गॉडल की बात करें, वो उस कंपाउंड को शायद लेना चाहते हैं जो बीएल के पास है, बिकॉज वो दैट इज द ओनली कंपाउंड जो अभी फिलहाल सर्कल में है. एंड आई थिंक एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग बिकॉज जहर को यहाँ पे रिबेल नॉक कर चुकी हैं. अगर बात करें, फेलिका की स्मोक करके रिवाइव जरूर यहाँ पे देना चाहेंगी. बट दिस इज द मोमेंट जब गॉडल की टीम डायरेक्ट रश उन पे जो है कर सकते हैं. स्मोक से कंप्लीट विजन जो है डिनाई कर दिया गया है बीएल के स्क्वाड को. दैट मींस दे कैन इजीली मूव अहेड एंड दे आर ऑलरेडी मूविंग अहेड. ग्रेनेड्स, मोलोटोव्स यहाँ पे आते हुए जहर को रिवाइव जो है डिनाई किया जा रहा है गॉडल की टीम की तरफ से. एंड फेलिका बेटर बी केयरफुल बिकॉज अगर डायरेक्ट एक ग्रेनेड आता है, यू कांट मूव एनीवेयर. बट दूसरी साइड अगर बात करें, नॉक्स बू यहाँ पे जो है नॉक होते हुए दिखाई दे रही है. चिक्की भी यहाँ पे एक नॉक निकालेंगी, बट बू को रिवाइव यहाँ पे मिलेगा या नहीं, वो एक मेन पॉइंट है. एंड क्लची एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे रेवन की तरफ जाता है, बट अच्छा स्प्रे रिटेलिएशन में रेवन की तरफ से आता है. क्लची नीड्स टू हील वेरी फास्ट. Yes, and I really love the way how Godel is trying to take that compound away from Team BL, but BL के पास man advantage नहीं है. It's gonna be a 4v3 situation since Nain is stacked down to very low HP,
Felicia is already down on her knees. Raven भी जा चुकी है, अभी एक player बाकी है, team BLP, that is team YT. It's a 3v1 situation for her and I don't think she'll be able to do much. But टीम गॉडल की वास्ते जब हम बात करते हैं, ओनली 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं, बट बाकी 2 प्लेयर्स दे आई थिंक दे विल गेट रिवाइव्ड anytime soon. Right now, Godl Clutchy will be back on her feet. Evil is already back on her feet with very low HP. Rebel अभी भी है, पूरा HP में fight कर रही है. And it's so surprising that Godel is the only team with a full squad alive. And speaking about teams like AG, Nox, they only have 1 player. And look at Godel Rebel's positioning. She's way far. She's gatekeeping for her teammates. And there you go. Beautiful finish coming in from Godel Rebel. And here we are. The chicken dinner goes to Team Godlike. Well, Team Godlike military base से aggression इन्होंने start किया था and सिवर्नी के पास जाके खत्म किया and एक winner chicken dinner अपने पास लेके आए. But that is okay, win chicken dinner. But I want to see कितने finish points थे because last I saw 18 finish points थे एलिका उनके पास. Yes, मेरे को लगता है कि उन्होंने 20 मार्क हिट कर दिया होगा because जब उन्होंने push किए थे BL के against, they already had pretty good number of kills in their hands. Around some 3rd, 4th circle में they had 12 finish points. So eventually over the course of time they should have gone 20 finishes to their hands. But Rebel's positioning was one of the best ideas that they could have done. They wanted to conquer BL's compound. They definitely did. And they were also waiting for the rest of the teams. जो कि team बचे थे, 2 teams बचे थे, NOX and AG, but both of them were left with only 1 player. So I told you, at the end of the day, team, having a man advantage is one of the biggest plus points that you can have. And I don't know how Team Godel managed to, swipe the entire map starting at military base all the way to the northern part without losing 1 player. They almost lost Clutchy, but, these players know when to push, when to, come back, when to regroup with teammates, when to ask for backup. And their communication seems to be very good. Well, I think positioning, अगर आप नोटिस करें हर एक इंडिविजुअल फाइट में गॉडल के प्लेयर्स का जो पोजीशनिंग था चारों प्लेयर्स का वो बिल्कुल ऑन पॉइंट था. दे वर गिविंग कवर फायर टू ईच अदर. अगर कोई प्लेयर नॉक भी हो रहा था इंस्टेंट रिवाइव भी यहाँ पे आ रहा था. कम्युनिकेशन सिनर्जी एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू गेट सो मेनी फिनिश पॉइंट्स इन देयर फेवर. बट एक और टीम जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी दैट वाज लेवलएक्स विंटर. I think they also had a very good start, but end में circle में enter करते हुए उनको थोड़ा सा problem हुआ था final circles में. Otherwise, I think they also had a very good start. Yes, they definitely did. I've seen two teams, Levelx and Team Godl, playing so aggressively, and by the time we reach the second match, I also want other teams to go aggressive. And बाकी जो teams थे, BleedESports official, they also did put a lot of efforts. But ये okay इनकी circle ने खेल गया था. The circle was so congested that either the teams had to congest in the water, in the water area, which gave everybody a free opportunity. Go ahead and take the fight. Go ahead, take individual kills. But anyway, ladies and gentlemen, before we move to the map of 2, that is going to be map of Miramar, me and Shadow are going to take a short break and we'll meet you right back here.
Ladies and gentlemen, welcome to Femstars 2022, brought to you by Immortals India, along with Playtoniaesports as a broadcast partner, House of Esports as an associate partner, and SportsKeeda as a media partner. And I'm your caster for today, Shadow, and alongside me is my co-caster, Elika. Elika, फर्स्ट गेम बहुत ही धमाकेदार शुरुआत, ऑलमोस्ट 20 फिनिश पॉइंट्स यहाँ पे गॉडल की टीम निकालते हुए. Yes, I guess even normal BGMI tournaments में मैंने इतने finishes नहीं देखेंगे जितना Godlike ने निकाला है all by themselves without dropping a body. I mean, how much can they do? They also got the chicken dinner, but they also the highest number of finishes currently in the server, which means उन्होंने I think उन्होंने minimum तो 40 points तो मारे ही होंगे ये मैप. 40 points because 15 placement points हो गए और 20 और ऐड कर लो that the finishes, or maybe they could have done much better than 20 or like 19 18, but जितना भी ऐड कर लो safely, even if you add 15 points, a mark point of 30 points has been hit by Godlike already. Although I'm very much excited for the scorecard to be displayed because this tells us how the day has begun for all these players. Although it's usually considered that first map is usually the warm-up map, but without any delay, let's have a look at the scorecard. And I believe that we do have Godlike on the top. Yep, we do, with 35 points. The 30 mark point has been hit. On the second position, we have Team Nox All-Stars, 15 points. On third, we have Team Aronai Esports with 14 points. And I think the highest number of finishes definitely goes to Godlike with 20 finishes, Shadow. Well, I think एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया यहाँ पे गॉडल की टीम ने. आई थिंक इट्स रिकॉर्ड 20 फिनिश पॉइंट्स का रिकॉर्ड. लेट्स सी कोई और टीम आज यहाँ पे ब्रेक कर पाती है. आई बिलीव इन ऑल दीज गर्ल्स. आई थिंक दे कैन डू इट. कोई टीम यहाँ पे ब्रेक कर सकती है ये रिकॉर्ड. बट वहीं अगर बात करा जाए बॉटम पे, पैनिक ई स्पोर्ट्स की टीम की बात करेंगे. B4M एंड 16 पोजीशन पे Fineapple की टीम. पैनिक ई स्पोर्ट्स की टीम की अगर बात करें, आई थिंक 4th सर्कल तक एक अच्छा पोजीशनिंग उनके पास था. एंड जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि पैनिक G2 अकेली थी, वहां पे कोई बैकअप अगर आ जाता तो शायद एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल सकता था. बट बाद में ब्लीड की टीम पे ने उन पे रश किया. दे वर आउटनंबर्ड, जिसकी वजह से 14th पोजीशन पे विद जस्ट one single point, वो भी प्लेसमेंट पॉइंट. बट दिस इज जस्ट मैच नंबर 1. एलिका, जैसे कि आपने बोला, मैच नंबर 1 दे जस्ट टेस्ट द वाटर्स. अभी भी 4 गेम्स बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है. इट्स BGMI, एनीथिंग कैन हैपन. यू जस्ट नीड वन सिंगल गेम टू कम अप ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड. तो लेट्स सी वो कौन सा गेम रहेगा. बट लेवलएक्स विंटर की बात करें तो अच्छा खेल रहे थे. 6th पोजीशन पे विला 6 टोटल पॉइंट्स के साथ. Yes, Levelx Winter, उनका काफी aggression था in the beginning of the map, but eventually when the circle started to close in
And due to the area of the circle, also a lot of teams couldn't survive. The fights were way too hectic for them to take. Example like Aronai Esports and BL officials got attacked by two different teams. We had Godlike trying to take them, and we also had Aronai who was having a AG who was taking a direct fight against BL. But despite of that, they managed to secure the fourth position with 14 points. And there's not much difference between the second and third position. Team Nox and Aronai only has 1 point difference. So the next four maps are gonna tell us a story of which one of these teams will be walking away with 25,000 rupees home. That is the first position for the day, and a total of 50,000 prize pool. But I can't wait to get to the next map of the day. That is going to be map of Miramar. Well, the map of sand and dunes, and a very huge map to begin with. वेल मीरामार की अगर बात करें, ये एक मैप है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा एलिका अबाउट द टेरेन्स, बिकॉज देर आर सो मेनी टेरेन्स. आपको कैमोफ्लेज के लिए कोई फॉलिएज यहाँ पे जो है नहीं मिलता है. यू हैव अवेयर चारों तरफ अपने प्लेयर्स को इस तरीके से प्लेस करना पड़ता है. यू हैव अ व्यू ऑफ एम्प्टी फील्ड्स. कंपाउंड्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं. दिस इज अ मैप जो आपके स्किल्स को बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है. Yes, not only skills but also sniping skills plays a huge role in this map, I believe. And मैंने देखा है कि काफी सारे लड़कियां ये जो गेम ने मैंने देखा है ना एरेंगल मैप में, a lot of them were using snipers. So hopefully it's just gonna be a feast watching them play Miramar. And few of my important places for drop locations will be Graveyard and San Martin. These places are good for loot and good for camping as well, because not many of them try to rotate from those points, those areas, since they are very very dangerous and hotspots. Well, they are certainly, but जैसे कि आपने सेंट मार्टिन मेंशन किया, मेरी नजर रहेगी हेसियांदा पे. कौन सी टीम हेसियांदा जाती है एंड वो गोल्डन मिराडो अपने लिए ऑप्ट करती है, बिकॉज वी नो यूजुअली कौन सी टीम्स वहाँ पे जाना पसंद करती है. बट दिस इज अ कंप्लीट फीमेल पूरा का पूरा इवेंट है, तो मैं देखना चाहूंगी कौन सी टीम वो गोल्डन मिराडो के लिए जाना चाहेगी. एंड दूसरी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट का एस्पेक्ट होता है इस मैप का, इज अ सर्कल. अगर बहुत ही एक्सट्रीम सर्कल मीरामार में बनता है, बिकॉज बहुत बड़ा मैप है, रोटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको. अगर कंप्लीट नॉर्दर्न सर्कल है, आप लॉस लियोनस में ड्रॉप इन कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको बहुत जल्दी रोटेशन लेना पड़ेगा. एंड व्हीकल्स भी इस मैप में एक चीज मैं जरूर यहाँ पे देखना चाहूंगी, कॉल मी अ सैडिस्ट और एनीथिंग, बट all the 4 players in a single vehicle and boom, the vehicle explodes. इस मैप में अगर आपने वो गलती किया, चारों प्लेयर्स एक सिंगल व्हीकल में, व्हीकल का हेल्थ कंप्लीटली यहाँ नहीं होता है. फ्यू बुलेट्स एंड आपका व्हीकल एक्सप्लोड हो सकता है, तो टीम्स को थोड़ा उस चीज के लिए भी केयरफुल रहना पड़ेगा. Yes, they have to be very careful. And as you said, Los Leones में अगर आप ड्रॉप लोगे, you have to take an immediate rotation to nearest places. Picado is a good place, but it's quite small for more than one team. If 2-3 teams अगर क्लास ड्रॉप कर भी लिए, इट्स वेरी अनलाइकली कि वो पेकाडो में क्लास ड्रॉप करेंगे. बट रोटेशन काफ़ी मुश्किल होगा, बिकॉज पेकाडो का नेक्स्ट क्लोजेस्ट कॉम्पाउंड होगा पावर ग्रिड और या ग्रेवयार्ड, विच ऑल्सो सीम अ लिटिल फर्दर अवे. And I feel Picado is this isolated, deserted place, which is far from places, and also cover मिलना काफ़ी मुश्किल है मिरामर मैप में. Yes, we do have a lot of compounds, but also a lot of crash drops coming in through, because most of the teams prefer only the southern side of Miramar. I haven't seen teams playing much of northern side. Even the circle also takes a toll only over towards southern side. But let's see if there's going to be any change in today's game, in today's map, in today's circle. Hopefully the circle comes around somewhere on the northern side. I haven't seen Cresteville being that much of a hotspot, so hopefully my dream will come true of watching the northern circle in Miramar. जी हाँ, अगर रीसेंट मेटा की बात करें, सदर्न सर्कल्स या सेंट्रिक सर्कल्स मीरामार में हमें देखने को मिल रहे हैं. एंड जैसे कि आपने बोला कि टीम्स बहुत ही एक्सट्रीम ड्रॉप लोकेशंस प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ से रोटेशन में थोड़ा सा दिक्कत आता है. तो आई थिंक सेंट्रिश एरिया में कंप्लीट लाइक रूइंस में या कैंपो मिलिटार की तरफ पूरा एक्सट्रीम ड्रॉप्स की तरफ शायद यहाँ पे नहीं जाएंगी, तो एमूदा की तरफ टीम्स ऑप्ट नहीं करेंगी. बट
आई वांट अ लिटिल वियर्ड सर्कल कंप्लीटली। अगर आप जैसे कि बात करें सदर्न सर्कल को लेके जाते हैं वाले डिमार की तरफ, पूरा कंप्लीटली सदर्न सर्कल, ब्रिजेस हैं वहां पे। एंड थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। लास्ट आपने बोला था कि ब्रिज की तरफ से एक हॉट पॉइंट ब्रिज बन सकता है, इस बार भी अगर वाले डिमार की तरफ सर्कल जाता है, वहां पे एक ब्रिज है एलिका, वो ब्रिज बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट बन सकता है। बट अगर बात करें, Yes. ओके सर्कल की बहुत बात कर ली हमने, वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्कल अ लॉट। आपके अगर फेवरेट वेपन की अगर बात किया जाए तो कौन सा है? My favorite weapon. Don't say M416 because everyone is loving the snipers. Not the sniper, the spray gun. Yes, Is it actually, if you M416? ask me, no. It's actually AWM. I'm more of a sniper girl when it comes to the game. And I prefer snipers काफी. And अगर हम बात करें कि normal rifles में अगर बात करें, I believe Mini 14, because Mini 14 is more like, it's not it doesn't have much recoil to control also. Very calm and pressure. Damage भी काफी ज़्यादा पड़ता है Mini 14. So yeah, I think my favorite is Mini 14. And what is your favorite in snipers and both rifles? I am so bad at sniping. I never touch any bolt action. My teammates love me because if there is an AWM or an M24, I just say come and pick it up. But if there is an M416, I'll kill them to take that. I want my M4 to be with me. So I think मेरी तो M416 जरूर रहेगी। बट वहीं अगर बात करें एलिका, आज विमेंस डे है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग एन इमॉर्टल ई स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद प्लेटोनिया एंड हाउस ऑफ ई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कीड़ा। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं फॉर ऑल द फीमेल टीम्स ऑफ BGMI। अगर आपकी बात करें, आपका ई स्पोर्ट्स में कैसे इंटरेस्ट आया था? बिकॉज यू आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। आपका ई स्पोर्ट्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा है, नॉट जस्ट इन BGMI, इन सो मेनी डिफरेंट गेम्स। सो and if I'm not wrong, you are studying as well. आपका कॉलेज भी होता है, तो किस तरीके से आपका Actually, मेरा पहला साल है कॉलेज का. It's my first year in college. I just finished my 12th last year. And I actually feels मैंने भी मेरा gaming actually mobile games से ही चालू किया था. I started playing PUBG Mobile. Then later I switched to PC games. But then PC games के बाद I started casting and I had a lot of interest in battle royale games. We had PUBG PC back then. But since India made our own Atmanirbhar game, that is BGMI, after launching, I've been waiting to try BGMI. I've been waiting to cast and play BGMI. मैं तो काफी खेल चुकी हूँ BGMI, इतना ज़्यादा भी नहीं. I played it for like good 4-5 times. Then I switched into casting and here I am, my happiest place. I love talking about games. I love, telling people, my perspective of how the game is going on, how different that, every player can think about. Since I am also an esports enthusiast, esports player enthusiast, so I also want to become a professional player. Currently, I'm playing professionally for PC games. So I hope कि मैं भी देखूँ कि जितने भी लड़कियाँ आज यहाँ पे खेल रही टूर्नामेंट, hopefully they also pursue their career in esports. And also, coming back, मैं actually जब हम थोड़ा पहले जाएंगे, that you asked what is my favorite gun, pistols में my favorite gun is flare, जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप आता है. Although pistol काफी less use करते हैं although in BGMI. So my favorite is flare gun because I am very very selfish about drops. Everyone is. Trust me, everyone is very selfish about their drops. अगर आपका 4 प्लेयर्स का स्क्वाड है, एक प्लेयर अगर आपसे कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, that means उसके हाथ में एक फ्लेयर गन है, वो शूट करेगा and he will take his drop. फेवरेट गन उठा लेंगे. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एटलीस्ट क्लासिक मैचेस, नॉट इन द कम्पिटिटिव सिनेरियो, क्लासिक मैचेस में हमें बहुत ज़्यादा फन क्रिएट देखने को मिलता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है BGMI को. योर फ्रेंडशिप ग्रोज, एवरीथिंग ग्रोज. तो वो एक चीज़ यहाँ तो हमें नहीं देखने को मिलेगी बिकॉज टूर्नामेंट्स में फ्लेयर गन अलाउड नहीं होता यूज़ करना. तो वो काश अलाउड होता, लेकिन इट वुड बी फन ना. 4 प्लेयर्स का स्क्वाड है, एक प्लेयर जो है बहुत दूर जा रहा है अपने प्लेयर से जस्ट टू यूज दैट फ्लेयर गन. Yes, I mean you have to be very careful because once you put that flare gun, everything falls apart. Every team has an interest in you and your drop. But without any delay, let's jump into the second map of the day. That's the map of Miramar, the land of sand, I should say, and snipers. I believe
a lot of snipers were born on this land and continue to rise as one of the best snipers. So production चालू कर दीजिए the map of Miramar. Although I'm waiting. यस, बहुत ही जल्दी हमारे स्क्रीन पे मैप आने वाला है मीरा मार का, एंड एलिका टेक अस थ्रू द प्लेन पाथ की प्लेन पाथ कहाँ से जा रहा है. Oh, this time, luckily, the plane path has begun in the northern side, taking us all the way down to somewhere over towards Impala, as the lost island of Impala. Although मेरे को लगता है कि इस बार southern side पे teams को rotate होना या southern side पे spread होके drop लेना might not be possible for them, so they have to spread themselves over towards Christewell. We have water treatment, Elazar, and San Martin. San Martin can be a very good investment if you're taking a drop over there, including Power Grid and Graveyard. But most of these teams seems to be going over towards Creative Fields and El Pozo, which is not definitely an ideal place. मेरे को लगता है कि हाँ crash drop होने वाला है, because according to it, BL and BRZ दोनों ने या northern side पे drop लिया हुआ है. And I want to know where Godel is going forward. There's only one team who is moving forward to water treatment, not actually water treatment. They're going to Ahumada, way too on the northeastern side of the map. It's like the right corner of the map. That is Levelx Winter, actually. We don't have much teams moving forward to Montenubo or Los Leons. I think there's one team going forward for Los Leons. And Baki sab, they've been spread out to Graveyard and San Martin. An interesting plane path, I should say. It let most of the teams take very close drops, which might lead to crash landings and very early fights. जी हाँ, अर्ली फाइट्स ज़रूर हो सकती हैं, स्पेशली जैसे कि आपने सेंट मार्टिन मेंशन किया, वहाँ पे काफ़ी सारी टीम्स है. रोटेशन के टाइम पे अगर पिक ऑफ होते हैं, एक प्लेयर को अगर गन मिलता है, 30 बुलेट्स आर इनफ आपके पूरे व्हीकल को ब्लास्ट कर देने के लिए. बट अभी अगर गॉडल की बात करें तो ग्रेवयार्ड के पास में एक स्प्लिट ड्रॉप इन्होंने लिया है, छोटे कंपाउंड्स को टारगेट करेंगे, एंड आई थिंक दे आर इन अ गुड स्पॉट. बट जैसे कि आपने मेंशन किया था कि टोरे एमूदा के पास भी एक स्क्वाड है, अगर सदर्न सर्कल बनता है तो उनको रोटेशन बहुत ही जल्दी लेना पड़ेगा. एंड मीरामार का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपके 4 प्लेयर्स के पास चारों व्हीकल्स होने चाहिए. अनलाइक रैंगल आप एक सिंगल व्हीकल में नहीं जा सकते, जैसे कि अभी फिलहाल ब्लीड ई स्पोर्ट्स की टीम हमें दिखाई दे रही है. बट इज द इनिशियल सर्कल अभी जस्ट ड्रॉप इन किया है, यू कांट फाइंड सो मेनी व्हीकल्स, तो अभी के लिए तो चल जाएगा थोड़ी देर के लिए. बट आगे फर्दर गेम्स स्टेजेस में सेकेंड सर्कल के बाद अगर ये मिस्टेक किया तो आपके चारों प्लेयर्स एक साथ खत्म हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ मैप जहाँ पे ये गलती नहीं कर सकते. रैंगल में आप कर सकते हैं, एक सिंगल व्हीकल लेके मूव कर रहे हैं, बट मीरामार में आपको बहुत ही जल्दी अपने मेकर्स को मिलना पड़ सकता है अगर ये गलती किया. तो ब्लीड ई स्पोर्ट्स अभी के लिए तो लूट फिलहाल के लिए करते हुए दिखाई दे रहे, काफी बड़ा अर्बन लूट यहाँ पे कर रहे हैं. दैट मींस एक अच्छा लूट इनको मिल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. एंड फर्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस गेम पे. Yes, it is definitely going to play a major role. But बाकी जब हम देखते हैं फिलहाल के लिए तो circle is going to be playing a huge role, because since the plane path went diagonally towards Impala, it did not give much area, it did not give much opportunity for them to conquer other compounds of the map, or on the southern western side उनको इतना opportunity दिया नहीं गया है. Even a lot of places like Waldemar and the southwestern island is also left unoccupied. If the circle eventually forms there, तब तो मजा आने ही वाला है, because all the teams who took a drop on the northern side have to rotate all the way down to the south. And beach mein they have to also go through San Martin, where most of the teams are currently contesting and camping over there. But coming back, AJ's team, I think they are going pretty much out in the open. They're trying to collect the loot as much as they can, and I feel like Emin is away from her team. I think she's going back to regroup with her team. जी हाँ, अगर बात करें लैंड्रिला के पास ये स्प्लिट लूट कर रहे हैं इनिशियल सर्कल्स में, यू कैन अफोर्ड. मीरामार एक बड़ा मैप है, अगर आपका ड्रॉप लोकेशन कंटेस्ट नहीं हुआ है आप एक स्प्लिट लूट के लिए बहुत इजीली जा सकते हैं, एंड वही चीज हमें उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है. बट वहीं अगर बात करा जाए ESG स्क्वाड का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिकाडो में इन्होंने ड्रॉप इन किया है, एक अच्छा लूट हमें
उम्मीद है मिलेगा। अभी तो लेवल 1 के गियर्स इनके पास दिखाई दे रहे, कुछ ज्यादा फर्स्ट एड्स नहीं है, एक फर्स्ट एड है, बट दे कैन गो फॉर द सेकेंडरी लूट लेटर ऑन। अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं गेम में, दैट मीन्स काफी ज्यादा टाइम है, ज्यादा दिक्कत उनको नहीं आएगा। डिपेंडिंग ऑन द सर्कल ऑल्सो हम लोग देखना चाहेंगे सर्कल किधर की तरफ फॉर्म हुआ है। आई थिंक दे आर प्रीटी मच इन द सर्कल। टीममेट्स की अगर बात करें, कंप्लीट पिकाडो का कंट्रोल इनके पास है, कोई ओपोनेंट टीम नहीं है, चिल कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं until the circle forces them कि भाई अब यहाँ से निकलना है तुम्हें, you have to go and take the fights because last गेम में ESG का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। इस गेम में उनको दोनों चीजें चाहिए कि एली का प्लेसमेंट पॉइंट्स एंड द फिनिश पॉइंट्स, एंड बहुत बार ग्रेविटी को भी अगेंस्ट हमने देखा है, प्लेयर्स यहाँ पे जाते हैं, बहुत बड़े इवेंट्स में भी हमने देखा है, तो इस बार भी शायद ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से एजी ड्राइव कर रहे हैं, ग्रेविटी डजंट एग्जिस्ट इन मीरामार। आई थिंक ग्रेविटी यहाँ पे इस मैप में तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मुझे एजी के ड्राइविंग ऐसा लगता है कि मैं फार्मूला 1 जस्ट फीमेल वर्जन देख रही हूँ, बट हाँ यहाँ पे पिट स्टॉप भी हो चुका है, हमने टायर ही नहीं सीधा व्हीकल ही बदल दिया है एजी ने, तो देखते हैं आगे जाके किस तरह की परफॉर्मेंस लगाएगी एजी, बिकॉज करंटली दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, पूरा मैप वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। वी हैव गॉट टीम ESG and I think they are pretty happy in this compound. They've got the entire compound and area to themselves, so they have enough time to loot and not get worry about rotating because they've already got vehicles also. You know, another best part about BGMI is that you have vehicles everywhere around you, and especially in this map we have 317 vehicles. Is that the count for Miramar? जी हाँ एलिका, बिल्कुल सही काउंट है आपका। मीरामार ऑफर्स मैक्सिमम व्हीकल्स बिकॉज आई थिंक मेकर्स को भी पता है इस मैप में आपको बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चाहिए, एंड विदाउट व्हीकल्स यू कांट प्रीटी मच डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर मैप। तो आई थिंक मेकर्स ने वो पॉइंट को दिमाग में रख के ही इतने ज़्यादा व्हीकल्स इस मैप में स्पॉन किए हैं। Yes. Well, फिलहाल के लिए कुछ फाइट तो नहीं हो रहा है, एवरीथिंग सीम्स काम एंड क्लीन फॉर राइट नाउ। यू नो द इनिशियल सर्कल्स, एटलीस्ट जब तक हम तीसरी सर्कल ना पहुंचे तब तक तो आपको ना डायरेक्ट फाइट्स नहीं दिखेंगे, इट्स ऑलवेज द थर्ड पार्टी या बैकस्टैप वाली फाइट्स दिखेंगे, बिकॉज दिस वे ऑफ मेटा हैज ऑल्सो द न्यू ट्रेंड, यू नो, कि ओनली प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए खेलना, फिनिशेस तो आ ही जाएंगे, because at the end of the day when you come to the last circle you have to fight against the teams, fight तो लेनी ही होते हैं, इसीलिए काफ़ी सारे टीम्स काफ़ी सारे प्लेसमेंट पोजीशंस पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, which is a great initiative I should say. If everybody goes out for finishes, if everybody keeps playing for the finishes, then there's no point of the rotations and circle, right? जी हाँ बिल्कुल, आप इंस्टेंटली फिनिश पॉइंट्स के लिए नहीं फोकस करके गेम खेल सकते। there are two kind of fights, good fights and the bad fights एलिका। आप bad fights में अगर engage होंगे तो आपको कभी भी points result नहीं मिलेगा, but talking about the circle, what do you have to say एलिका? Yeah, circle ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था प्लेन पाथ तो नॉर्थन साइड गई, बट सर्कल तो साउथन साइड फॉर मी। आई वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टिंग द सर्कल टू बी हैपनिंग इन द साउथ साइड बिकॉज लॉस लियोन्स is one of the prime paths in this map, and I don't think circle will anyway miss out that area. And anyway luckily most of the teams are inside the circle, but only the थोड़े teams है जो दूर है, like B4M, BL and Evil की team, बस 3 teams है दूर। BLD भी आ चुकी है almost, but they are gonna have a clash fight against one of the teams at Impala, so they have to be very careful. Godlike on the other hand, they are taking their sweet amount of time to rotate and finish the loot. And even I think Bleed is at this point they are doing fine, but as soon as they step out of the compound they're going to find a lot of dangerous neighbors. Well, they will certainly find so many dangerous neighbors because अभी भी 16 teams, 64 players lobby में हैं. That means not even a single blood has shed. कोई प्लेयर यहाँ से एग्जिट नहीं लिया है, सारे प्लेयर्स अभी हैं. दैट इज अ क्लासिक मीरामा. इनिशियली फाइट्स नहीं होते हैं, बट अभी अगर बात करें एक प्लेयर को स्पॉट यहाँ पे जरूर किया जा रहा है. ऐश मिनी से शॉट लेने का ट्राई कर रहे थे एंड बीएलडी का स्क्वाड फिलहाल रोटेट कर रहा है. बिल्कुल ओपन में रोटेशन हो रहा है.
गड़बड़ हो सकती है, ज्यादा टेरेन्स भी यहाँ पे नहीं है कवर के लिए अगर बात करा जाए, एंड इसी का प्राइस यहाँ पे करते हुए इशिका यहाँ पे नॉक हो चुकी है। रिवाइव ऑलरेडी दिया जा रहा है, बट ऐश की अगर बात करें फ्लैंक एंगल की तरफ यहाँ पे मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, बट नैज डीसी लुक एट हर, एक सरप्राइज एंगल ले सकते हैं। बाकी के 3 प्लेयर्स की भी अगर पोजीशन देखा जाए, अगर वो रोटेट करते हैं बहुत इजीली कैपिटलाइज कर सकते हैं इस मोमेंट पे, बिकॉज नोरा बहुत दूर है, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, एंड टीम नंबर 8 कैन कैपिटलाइज ऑन दैट सिचुएशन, बट आई थिंक उनको कहीं ना कहीं पुश करने से रोका जाता रहे। नोरा बहुत दूर से शॉट लेके बैकअप बहुत अच्छा अपनी टीम को प्रोवाइड कर रही है। यस, बैकअप तो जरूर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो चुका है इन टीम का, बट क्या फायर पावर इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अकॉर्डिंग टू माय स्टैटिस्टिक्स करंटली दे टुक अ वेरी एग्रेसिव टोल। एक कंफर्मेशन, एक फिनिश उनको मिल चुका है, लीविंग द रेस्ट ऑफ द 3 प्लेयर्स टू रोटेट। ग्रेसी का टीम ऑलरेडी थोड़ा दूर में है, so they couldn't even come back for the backup, so BLD got a very good opportunity to initiate that kill and confirm it and finish it. But currently Gracie का team भी isolate हो चुका है, they are stuck inside the compound, all the 4 directions surrounded by the other team. But यहाँ पे देख सकते हो नॉक्स की टीम में एक player Chiki, that she's already been finished. We've only Goddess who barely is trying to survive, and she will be getting revived by Nemo very soon. Archie also has to come for the backup right now, and the moment these players set their foot outside, they'll be receiving a lot of damage. Toxie level on the other hand gets confirmed as well. Now team win, they only have 2 players left, Sobi Levelx and Zara. Sobi Levelx who also got the first kill in the last match. जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ब्लड इन्हीं को यहाँ पे मिला था लास्ट मैच में, बट इस टाइम एक बिल्कुल नेगेटिव स्टार्ट होते हुए 2 प्लेयर्स ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, बहुत ज्यादा सेपरेटेड थे, उसका प्राइस यहाँ पे करते हुए। बट ग्रेशिया के स्क्वाड पे ब्लीड का टीम यहाँ पे पुश कर चुका है, बट पिक्सू हैज बीन नॉक डाउन। इशिका यहाँ पे नोरा पे शॉट लेने का ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी नोरन को यहाँ पे नॉक कर पाते हैं या नहीं, बट सोबिल दूसरी साइड नॉक्स गॉडेस को यहाँ पे नॉक करते हुए किल फीड में दिखाई देंगे। आशी ऑल्सो गॉट डाउन, सोबिल नॉक हो चुके हैं, बट इशिका का बहुत प्यारा स्प्रे यहाँ पे आता है, एंड बहुत इजीली बीएलडी का स्क्वाड ग्रेशिया के स्क्वाड को यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए 4 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी गैदर कर चुके हैं। एक 2v4 का सिचुएशन लेवल एक्स विंटर के लिए यहाँ पे है, सोबिल नॉकड आउट है, ज़ारा अकेली बची है, लूट के लिए जा रही थी, दैट वाज नॉट अ गुड टाइम। आई थिंक उनके पास थोड़ा सा लूट का शॉर्टेज था, एंड उसी के वजह से थोड़ा सा उनको दिक्कत आया, एंड इनफैक्ट इट वाज अ 2v4 सिचुएशन, बट डैमेज यहाँ पे नॉक्स की टीम को भी हुआ है, एक प्लेयर गवाया है, बट 3 फिनिश पॉइंट्स आए हैं, विन विन सिचुएशन में है। बट एफए की अलिता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे नॉक हो चुकी है। यस, वेल फिलहाल के तो सिचुएशन थोड़ा बहुत प्रेशर में दिख रहा है टीम ब्लीड के लिए। आईजेल has also been knocked out. Charissa is currently on her knees, and I don't think she'll be getting revived anytime soon. Alita is out of the city. It's just Sania and Karma Queen all by themselves. But Team Nox has definitely made a comeback. But Archie is down to the earth. Now Nemo and Goddess, they have to make all the wonders in the world. But they also have to keep one thing in mind, Shadow. They are fighting against Godel. And Team Godlike, I don't think, with the amount of communication skills and the team synergy they have, it's just going to be very hard to beat them down. Or at least, get Archie back into the scene alive. Currently, Goddess and Nemo, they're trying to rotate and get few shots connected from the outside, but I don't think it's actually working for them. Rebel puts down a grenade, but I don't think it's gonna do any damage. But Archie will be tagged down to very little HP. And she's also back on her feet, I believe. जी हाँ, रिवाइव यहाँ पे मिल चुका है, आर्ची को जल्दी से हील करना पड़ेगा। नेमो की भी अगर बात करें, बैरली 1 HP पे यहाँ पे सरवाइव कर रही है। इविल की अगर बात करें, गॉडल की टीम से रिवाइव यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है। रिबेल की तरफ से कांस्टेंट ग्रेनेड्स डिप्लॉय हो रहे हैं डायरेक्ट पुश को डिनाई करने के लिए, बट नीमो की तरफ से भी अगर बात करें, ये ग्रेनेड अगर कनेक्ट होते हैं, रिबेल प्रॉब्लम में आ सकती है, बट आई डोंट थिंक ये कनेक्ट होगा बिकॉज नीमो डजंट नो एग्जैक्टली वेयर रिबेल इज। एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगाया गया था, बट गॉडेस एक अच्छे फ्लैंक एंगल की तरफ जा रही है। इविल को यहाँ पे नॉक किया था, बट रिवाइव मिल चुका है। शी इज अगेन बैक ऑन हर फीट। एक 3v4 सिचुएशन यहाँ पे गॉडेस कैन डू सो मच, बहुत ज्यादा इंटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है अपनी टीम को उस पोजीशन से। बट दूसरी साइड अगर बात करें, एजी वर्सेस ईएसजी का फाइट यहाँ पे आते हुए, एक ग्रेनेड
इरिस की तरफ से, एंड एजी के 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हो सकते हैं। एक शैक होल्ड किए हुए, नॉट अ गुड पोजीशन टू होल्ड ऑन टू एट ऑल, जिसकी वजह से यूनी को बाहर आना पड़ेगा। ग्रेनेड अच्छा नहीं था, बट यूएमपी बिल्कुल बेस्ट यहाँ पे रहेगी। एक नॉक यहाँ पे जो है इरिस निकाल चुकी है, एंड रिवाइव मिलना बहुत ही मुश्किल होगा इस सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पे रश करते हुए, एंड इसी के साथ बहुत इजीली एजी के स्क्वाड को यहाँ पे वाइप कर दिया गया है। एंड ईएसजी बहुत ही अच्छा स्टार्ट, 4 फिनिश पॉइंट्स यहाँ पे इनको मिल चुके हैं, बट टीम गॉडल एंड नॉक्स एक स्टेलमेट सिचुएशन यहाँ पे एली का आ चुका है। Yes, extreme situation with extreme measures have to be taken, and I guess Nemo की जो क्रॉसर है काफ़ी बढ़िया पोजीशन में सेट था, but I don't think the shot has been connected. And also surprisingly, even after they taking the fight against Gordel, they somehow managed to get Archie back alive. 3 man standing for Team Nox. They are fighting. You know, it's a straight 1v1 situation. You know, straight contenders for the champion are, Gordel and Nox. Nox is currently sitting down in the second position at the leaderboard, and Rebel is sitting at the first position with 35 points. फिलहाल के लिए कोई टीम नहीं है 35 पॉइंट्स तक पहुंचने वाला, बिकॉज द सेकेंड हाईएस्ट इज 15 पॉइंट्स, टीम नॉक्स. Hopefully, Team Nox challenges them. I mean, the fact that they even managed to escape alive from Gordel's fight was a big deal for me. थिंक सो गॉडेस का जो पोजीशन था वो अच्छा पोजीशन था, एंड जिस तरीके से एक स्टेलमेट सिचुएशन यहाँ पे है, आई थिंक दे कैन डू सो मच. यस, गॉडल इज अ वेरी एग्रेसिव टीम, बट नॉक्स की भी अंडर एस्टिमेट मैं बिल्कुल नहीं करूंगी. ऑलरेडी 5 फिनिश पॉइंट्स अपने लिए निकाल चुके हैं, एंड अगर इस पॉइंट पे गॉडल एलिमिनेट हो जाती है, दैट मीन्स दे आर वॉकिंग अवे विद नथिंग. बट लुक एट द फ्लैंक यहाँ पे एली का, जो रिबेल की तरफ से बहुत ही प्यारा फ्लैंक यहाँ पे निकल के आया है. That can be the game changer, because अब नॉक्स की टीम पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इंटेल भी उनके ऊपर ली जा सकती है, जो कि बाकी 2 प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी. लेट्स सी क्या होता है सिचुएशन, बिकॉज अगर हम बात करें, हमें मिनी मैप पे नजदीकी पैनिक का स्क्वाड भी जरूर दिखाई देगा, तो थर्ड पार्टी भी जरूर यहाँ पे हो सकती है. ग्रेनेड आता है, बट वो कनेक्ट फिलहाल के लिए तो नहीं हो पाएगा. Yes. Well, we did see, 1 minute of intense action back to back, but now I think the game is back to slow paced, and teams काफी careful है. They do not want to give up the positions, and I'm very happy that Nox had a very good start. They already have 5 finishes to their name, and Godel hasn't even started to they haven't even started to get a single knock into the favor. So, yup, Gordon's having a rough time in this map. Maybe Miramar is not one of their best maps, but Nox feels very comfortable over here. जहाँ से हम देख सकते हैं ऋतिक के टीम को Bleed Esports is trying to gatekeep over here, which is actually a very good initiative. But since Riddi's team already has the high ground advantage, they have to be very careful. Well, certainly they have to be very careful. जिस तरीके से स्प्रेड आउट है, ब्लीड की टीम के पास एक कंपाउंड है. मीरामार में अगर आपके पास एक अच्छा कंपाउंड है, बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए जरूर होता है. वहीं अगर बात करें रिजेस की, रिजेस का कंट्रोल फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 7 टीम एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स के पास है. लास्ट गेम अच्छा नहीं गया था, बेटर बी पिकिंग अ गुड फाइट. दूसरी तरफ सेल्सियस की टीम में यहाँ पे क्लची शॉट्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. मीरामार, क्लासिक मीरामार, vehicle explosion and a player bid bye bye to his teammate, and Celcius की टीम इस बार वो चीज फेस करते हुए दिखाई दे रही है. They have been down to 3 men squad, not men, 3 women squad. And वहीं अगर exception की बात करें, अभी भी they are peppering few bullets onto the team bleed. Yes, but the fight I think is not gonna be the end for them. I think the rotation will be coming in through. मुझे लगता है कि they are gonna walk away from the fight, which we previously were seeing, and Team Ricky has no idea from where BleedESports is trying to get them. But lucky that everybody is inside the circle, so there's nothing to worry about. I think around 10 minutes into the game, and we still have 12 teams and 43 players alive. काफ़ी आराम से खेल रहे टीम. I really appreciate the fact that every team is taking their time to rotate and get their teams back up even before they take a decision. Even if
even before they initiate a fight, they're being very brief about it. वेल एलिका, अगर मिनी मैप पे अगर हम नजर डालें, जिस तरीके से एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स स्प्लिट है, वो चारों तरफ से ब्लीड की टीम पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, बट नजदीकी बीएल का स्क्वाड भी है, बुलेट्स का साउंड उनको जरूर आ रहा होगा। अगर वो थर्ड पार्टी करना चाहते हैं, आई थिंक टीम एक्सेप्शन बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि कोई खास ज्यादा कवर उनके पास नहीं है। बट बीएलडी की नौरा, माय गॉड, शी इज फिनोमिनल इन एवरी गेम। फिलहाल के एक बार करें, सेल्सियस की बिंक यहाँ पे नॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएलडी की डेकी बहुत ज्यादा ओपन में आती है, ऐश को कंफर्मेशन के लिए ट्राई किया जा रहा है। ब्लिक एक अच्छा स्क्रीन यहाँ पे आता है, टीम थोड़ा सा दिक्कत में, सैंडविच सिचुएशन यहाँ पे जो है बीएलडी के क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेकी इस सर्वाइविंग, किसी तरीके से वो शॉट सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीएलडी की इशिका एनपी के प्लेयर्स को भी कंफर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्सियस 3 women up against BLD 3v4 का सिचुएशन है एलिका। यस, आई मीन मैन एडवांटेज जहाँ पे हो वहाँ पे थोड़ा स्लाइटली सी गेम ज़्यादा बेटर हो सकता है, बट समटाइम्स आई टोल्ड यू एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज़ करते हैं, आइसोलेट कर दो और फाइट ले लेना। बट अगर टीम बीएलडी अगर ये करना चाहती है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एक प्लेयर है। बट टीम सेल्सियस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यूमिको इज ऑलरेडी कीपिंग एन आई आउट टू एवरी प्लेयर ओवर देयर, एंड गॉडल्स टीम इज अप्रोचिंग द ड्रॉप। एंड क्या मिला है इनको ड्रॉप में? कुछ ज़्यादा खास तो नहीं दिख रहा है। So I guess they'll be going back to the compounds, and we'll be shortly entering into the 4th circle. And अभी भी 11 टीम में चल रही है। And team Snipey, that is Exception Esports, if I'm not wrong, they are currently rooting against Godlike. And what happened? Who knocked Snipey down? Don't tell me it was one of the players from Godlike. Yeah, it was Evil with that car 98 प्रॉपर हेडशॉट यहाँ पे जो है इविल की तरफ से कार 98 से आते हुए। वेल, I told you sniper lovers will pick the snipers, and looks like Evil भी आपकी तरह इलेका एक bolt action fan है, and she is very precise on her shots as well। एक और राउंड पीक एक्सेप्शन की टीम से Evil बिल्कुल रेडी है यहाँ पे हेड पॉप ऑफ करने के लिए, तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे एक्सेप्शन को होना पड़ेगा। ऑल्दो एज ऑफ द सर्कल पे अभी है, बैक साइड से थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा जब तक ब्लू जोन टच नहीं करता है उनको, बिकॉज बैक्स आर नॉट ऑलवेज सेफ। टीम्स बहुत बार मीरामार में लेट रोटेशन भी प्रेफर करते हैं, तो अगर पीछे से बैक स्टैब हुआ एक्सेप्शन की टीम, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिलहाल तो इविल पे यहाँ पे शॉट्स आ रहे हैं, शी सेफ बट शी नीड्स टू हील अप रियली फास्ट। अगर मैप में देखें नजदीकी B4M का स्क्वाड भी रोटेशन लेते हुए दिखाई दे रहा था। Yes, फिलहाल के लिए Godlike is in a little bit trouble, but I think team Exception Esports, the way they fell back and they got her teammate up was very clean enough. But अभी Godlike को काफ़ी संभाल के खेलना होगा। 45 seconds until the next circle starts to close in. Both team Exception Esports and Godlike have to move out from that position, Shadow, which means either they have to eliminate each other or they have to find a way to rotate by ignoring the fight or putting an end to the fight. And on the other hand, we've got Celcius, Yumiko watching over towards team BLD Esports, but I don't think BLD is gonna give that opportunity away. अगर ऐसे ही वो कैंप करते हुए गई, maybe after some time BLD won't notice her, and when they're trying to rotate, Yumiko might get a knock. But confirmation मिलना बहुत मुश्किल है since team BLD Esports has good backup currently. Well, they have a good backup, उस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, बट Godlike भी बहुत ज़्यादा, दोनों टीम्स का अगर बात करें, पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे। एलिका पेशेंस यहाँ पे लूज नहीं कर रहे हैं, एंड बैटल रॉयल्स आर मोस्टली अबाउट द पेशेंस, बिकॉज जिस मोमेंट आपका पेशेंस खत्म हुआ उसी मोमेंट एक मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है, एक ब्लाइंड रश हो सकता है, वो दोनों टीम्स की तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहा। वहीं अगर बात करें जाए ब्लीड और ESG की भी फाइट होते हुए, कुछ और व्हीकल एक्सप्लोजन में यहाँ पे फिनिश फील्ड में हमें देखने को मिले। ESG की बात करें, एक रिज इन्होंने होल्ड किया हुआ है, कंपाउंड नहीं है अभी के लिए उनके पास, तो अपना पोजीशन थोड़ा सा केयरफुली उनको होल्ड करना पड़ेगा। सेल्सियस की अगर बात करें, वापस से एक फाइट यहाँ पे BLD के साथ, काफी लंबा फाइट उनका चल रहा है, बट फिलहाल के लिए दोनों टीम्स ने डिसाइड किया है एक पीस फॉर सम टाइम दे आर गोइंग फॉर अ पीस ट्रीटी, बट
थोड़ी ही देर में जैसे ही सर्कल शिफ्ट होगा वापस से उनका फाइट यहाँ पे इरप्ट होते हुए हमें दिखाई देगा. सेम गोज फॉर द टीम एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स, बिकॉज वो भी शायद सर्कल शिफ्ट होने का वेट कर रहे हैं एंड सर्कल उनके फेवर में. एंड आई थिंक दैट इज टीम गॉडल जो मिनी मैप पे दिखाई दे रहा है. नो, दैट इज टीम फाइन एप्पल जो बहुत नजदीक है एंड सर्कल उनको फेवर कर रहा है. दैट मींस एक अच्छा पोजीशन पॉइंट्स भी ले सकते हैं. फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी 4 फिनिश पॉइंट्स उनके पास आ सकते हैं. दिस मैप कैन बी अ कमबैक मैप फॉर टीम फाइन एप्पल. यस, टीम फाइन एप्पल काफ़ी वेट कर लिए थे उन्होंने. अभी it's a very good opportunity for them to strike forward, but will they is my question. Although on the other hand, XC की टीम काफ़ी बिजी है गॉर्डन को कंटेंट करते हुए, but not for long until you have a backstab coming in from Fineapple's team. We've got Saya moving forward. One of the players is already knocked from Team Rithi, that is Exception Esports. And look at the irony. It is FA from behind and Gordon from the above, and they are the patty in the burger. They don't have any chance to run away but to take the fight right now. The last resort they are left with is taking the fight against Fineapples. It looks like their firepower is falling on short. A lot of grenades through their heads. Levelx putting out a beautiful grenade, but will that do any damage is my question. Nope. Unfortunately, it was not a grenade. It's a smoke coming in through actually, and they're trying to rotate. काफी क्लोज फाइट था Fineapples और एक्सेप्शन esports के बीच में, बट आई गेस एक्सेप्शन esports अभी रोटेट करने जा रही है. वेल सर्टेनली अगर बात किया जाए टीम एक्सेप्शन के पास साइड एडवांटेज, बट कर्मा क्वीन की तरफ से एक अच्छा रोटेशन, एक अच्छा एंगल यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है एंड दैट कैन बी द गेम चेंजर. लेट्स सी ग्रेनेड्स का यूज यहाँ पे आते हुए चढ़ी सकी. अगर बात करें रिद्धिमा के पास, रिद्धि के पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. यूएमपी से मल्टीपल फ्रंट्स पे यहाँ पे फाइट ले रहे हैं, बहुत मल्टीपल एंगल्स पे टीम एक्सेप्शन esports एंड फाइनएप्पल ऑल्सो. वहीं अगर बात करें कर्मा क्वीन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, सानिया यहाँ पे नॉक होती है, सेल्सियस के ब्लिंक यहाँ पे जो है नॉक होती हुई दिखाई दे रही है. एक्सेप्शन esports इस फाइट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड फाइनएप्पल की लास्ट प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे बची थी एंड इसी के साथ यहाँ पे शायद पूरा स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है. जी हाँ, पूरा स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है. थर्ड पार्टी का शिकार में यहाँ पे शायद हुए थे एक्सेप्शन esports. फिलहाल एक अच्छी सिचुएशन में है, 2 फिनिश पॉइंट्स, एक अच्छा पोजीशन है. सेल्सियस की अगर बात करें तो रेवना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इज इट रावना अकेली यहाँ पे जो है बची है सेल्सियस की टीम से. गॉडल की अगर बात करें जल्दी सर्कल में एंटर करना होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्लची को बिकॉज ऑलरेडी रिबेल सर्कल का होल्ड ले चुके हैं. बट दिस शिफ्ट, एक और शिफ्ट यहाँ पे आता है एंड दिस शिफ्ट इज फेवरिंग टीम एक्सेप्शन. क्या एक्सेप्शन यहाँ पे चिकन डिनर ले पाएगी? आई मीन चिकन डिनर तो जरूर उन पे चांसेस है, बट सेल्सियस रेवना अकेली है. 1v3 सिचुएशन है. सेल्सियस की टीम भी काफी लो है. वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन नॉक्ड आउट, बट आगे तो गॉडल की टीम है. And that is it. That is the end for Ravena going out way too early in the 7th position. But we've still got Godel up and running. I think one of the players is a bit down to very low HP. But Godel is still gonna keep fighting. B4M on the other hand was trying to attack on Godel. But by the time Godel, sets back, gets the medikits, heals themselves and, goes into a proper position, the other teams will try to engage in other fights. We've got Exception Esports who are still 4 up and running with 2 finishes in their hands, currently moving forward against BleedESP. अभी तुमने एक बार notice करो Shadow, all the teams are fighting against each other but Godel is isolated. Look at Godel's position. They're not nowhere near the area and the only team to be in circle is Exception Esports with a great advantage. जी हाँ, एडवांटेज है बट एक्सेप्शन esports जिस तरीके से बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, दे आर विनिंग द फाइट. जब तक जीत रहे हैं सिचुएशन इज इन देयर फेवर एंड इसी के साथ एक और स्क्वाड वाई ब्लीड की टीम को एलिमिनेट करके 5 फिनिश पॉइंट्स अपने लिए गैदर कर चुके हैं. मल्टीपल फाइट्स निकाल रहे हैं. कीवी की अगर बात करें, एक और नॉक यहाँ पे नोरा पे लेते हैं. नोरा इज अ वेरी गुड प्लेयर, जितना हमने 2 गेम्स में देखा है. अभी नॉक हो चुके हैं बट एक्सेप्शन भी यहाँ पे नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ईएसजी की टीम यहाँ पे बैक स्टेप करने के लिए ट्राई कर रहे थे. 2 प्लेयर्स नॉक हुए, इजीली रिवाइव मिल जाएगा एंड एक्सेप्शन, माय गॉड, एग्रेशन इनका यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज फिनोमिनल. गॉडल was silent because उनको सर्कल में एंटर करना था बट आई डोंट थिंक अब यहाँ पे गॉडल साइलेंट रहेगी एंड
दूसरी साइड एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स है जो कि बहुत अच्छे फिनिश पॉइंट्स अपने लिए गैदर कर चुके हैं. Yes, too much of intel for them, and also a lot of firepower coming in their hands. And all you can see is snipers over here. I mean, जितने भी मैंने देखा है, एक normal close combat fight तो काफी मुश्किल लग रहा है मुझे. And look at the hills, look at the proportion of the land. It also it also requires you to use a sniper just in case if you miss out on any shots. Team BLD on the other hand, they have 12 finishes in their hands. Okay, this is interesting to watch, but there are only 2 players left. Even from the team of Godlike, there are only 2 players, Clutchy and Evil. And Rebel, we've got Rebel also, but I think Rebel is a bit far from her team, and by the time she makes it, hopefully she's alive. Rebels getting spotted out. We've got Exception Esports, Team BLD, and Godel. It's a 3v2 situation against BLD, but BLD has the highest number of finishes. Godel has the man advantage, and Exception Esports has the man advantage, and Godel has the position advantage. वेल इस टाइम पे अगर बीएलडी की बात करें, टी नीड टू बी वेरी साइलेंट, बिकॉज अगर दोनों टीम्स के बीच में उन्होंने शॉट्स लेने का ट्राई किया, एक साइड से नहीं 2 साइड से शॉट्स आएंगे. एंड इविल बहुत प्यारा स्प्रे यहाँ पे आता है, रिविल की तरफ से कवर फायर आता है, स्नाइपी को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है. इविल बहुत जल्दी व्हीकल को ब्लास्ट करके कवर अपने लिए बनाना पड़ेगा. रिविल का पोजीशन यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल है, बट दूसरी तरफ वृद्धि का पोजीशन पे अगर देखें हाइट एडवांटेज है. अगर वो शॉट लेंगे, रिविल को स्पॉट करेंगे, बहुत इजीली नॉक कर पाएंगे, बट रिविल यहाँ पे यूएमपी से Levelx को भी यहाँ पे नॉक करेंगे. एंड रिद्धि को भी स्पॉट किया गया स्मोक में. एंड रिबेल, शी इज नॉट स्टॉपिंग फॉर एनीवन. 3 नॉक इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स. लास्ट प्लेयर यहाँ पे बची है टीवी नूब एक्सेप्शन ई-स्पोर्ट्स से. एंड रिबेल इज गोइंग वेरी इम्प्रेसिव. जीटीए टीम से बात करें, व्हाट जस्ट हैपेंड? ऐश वाज राइट बिसाइड हर एंड उनको स्पॉट नहीं किया गया. एक्सेप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया. ब्लीड की अगर बात करें, बीएलडी के 2 प्लेयर्स यहाँ पे, एंड ऐश बिल्कुल रिबेल के सामने यहाँ पे है. रिबेल यहाँ पे नॉक होते हुए दिखाई दे रही है. क्लची एंड एविल अकेले प्लेयर्स यहाँ पे बचे हैं. एंड इलिका, व्हाट्स गोना हैपन? कौन सी टीम चिकन डिनर लेगी? क्विक प्रेडिक्शन. I think Godel. Nice. Godel for sure, because Godel already has the aggressive advantage, and Clutchy gets the knock. A two deadly duo performance coming in through, and there you go. The prediction is definitely right. Godel फिर से दूसरे बार लेके जा चुके हैं winner chicken dinner, and I guess unka aggression will be continuing till the very last map if I'm not wrong. But what performance coming in from Godel. There was Exception Esports with a 4-man squad. We had Team BLD with 2 players left and also almost 12 finishes in their hands. But Godlike, they made the magic. They did some magic with the magic wand, and it happened, and they are currently the chicken dinner winners. Well, they certainly got back-to-back 2 chicken dinners, Elika. Nothing to take away from that. But BLD Ash, 10 finish points, a single girl. अकेले 10 finish points उन्होंने अपने लिए लिए हैं, and that is quite commendable. I think बहुत सारे records यहाँ पे set होने वाले हैं आज के event के लिए, because 20 finish points Godlike की पूरी lineup ने लिए थे. यहाँ पे Ash ने अकेले 10 finish points निकाले हैं. That is quite impressive, especially in a map like Miramar. दूसरी साइड अगर एक्सेप्शन की बात करें, जिस तरीके से मल्टीपल फ्रंट्स पे फाइट ले रहे थे, आई थिंक उनके भी बहुत अच्छे फिनिश पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे. दिस टाइम गॉडल गॉट द चिकन डिनर, बट फिनिश पॉइंट्स की बात अगर हम करें, दूसरी टीम्स यहाँ पे लीड करते हुए दिखाई देंगी. Especially BLD Esports, they already had 12 finishes by the time they even almost came to the last circle, and also a huge hands off to Exception Esports. They had Fineapple coming from behind. They had, they were taking shots from Godel in the opposite side, and I don't know how they managed to still have all the 4 men standing. This time Godel के पास पूरे 4 players नहीं थे, but they still managed to get the chicken dinner. The consistency is good enough. That's all matters.
Well, the consistency is definitely there. 15 points back to back आपको मिल रहे हैं. 30 points individually सिर्फ placement points से आपको मिल रहे हैं. And ऐसे नहीं कि Godlike के पास इस बार finish points नहीं थे. They had the finish points, but circle में उनको rotate करना था, and BLD was already present over there. तो उनको बहुत सारे finish points पे capitalize करने का chance मिल गया था. And I'm just waiting for the scoreboard because मुझे देखना है कि कौन सी टीम टॉप पोजीशन पे है, because एक टीम के पास प्लेसमेंट पॉइंट्स है, एक टीम के पास फिनिश पॉइंट्स हैं. So which one is going to be on the tippity top of the leaderboard? Yes. According to my calculations, I believe Team Godlike should have already passed the 50 mark point. 50 points का mark उन्होंने cross कर देने चाहिए थे, because the last time we looked at in the first game they had 35 points. Now they got the chicken dinner. Even अगर हम safe खेले and just add 15 points only for the placement in the total they had in the last game, I guess आराम से वो 50 plus points पहुंच जा चुके. And Team Nox, they had such an aggressive performance in the last game, but this game I think they lacked a little and they got eliminated way too early. Although, you know, they kept fighting till the very last minute until Godel showed up into their doors. But a very good game coming in from Godel. But more than Godel, BLD, I think they carried away my heart this game with more than 12 finishes in their hands. I think it was 18, but वो देखना पड़ेगा. Maybe I'm blind. Blind की team यहाँ पर नहीं है, but maybe I'm blind. But देखना पड़ेगा because I think I mixed up with some other team also. I'm not very sure of it, but देखना पड़ेगा. Yes, 12 points तो confirm उनके BLD के squad के हमारे पास हैं. उसके बाद देखना है कि प्लेसमेंट पॉइंट के मिला के आई थिंक दे गॉट 12 प्लेसमेंट पॉइंट्स, आल्सो 24 पॉइंट्स. तो एटलीस्ट दे आर गेटिंग. let's not do the maths. वो प्रोडक्शन टीम के लिए छोड़ देते हैं. वो स्कोर कार्ड हमें रेडी करके दे देंगे because I'm not good at it. मेरा maths is like 2 + 2 = 5. So let's have a look at the scorecard. And Team Bleed is leading the chart with 27 total points. Alika. Well, a round of applause for Team Blade. They have 15 finish points. I mentioned around 12 plus, but I wasn't sure how much. But Team Blade, they're gonna be walking away with a total of 27 points in this map. Godel with 22 points, Exception Esports with 16 points, Team ESG with 13, and B4M followed by everybody else in the bottom 10 of the leaderboard. Although I should say that a great initiative coming in from Exception Esports, because in the first map I haven't seen them play at all, or like initiate the fights, but they definitely tried their level best to do as much as possible. And Godel, not a very exceptional game for them, but yeah, decent number of finish points and a chicken dinner, but they still are not in the top. Team Bleed took away the advantage. Team Bleed has, I think, 5 points more than Team Godlike. Also, everybody has a start. मतलब chicken dinner तो ले ही लिया. Godel ने 2 chicken dinners back to back, but जो points होते हैं, finish points होते हैं, काफी matter करते हैं. Now you know why position points is only the factor. Finish points plays a huge role, and सबूत तो आपके सामने खड़ा है. Team Bleed with 15 finish points and 15 position points. जी हाँ, बिल्कुल. अब देखना है कि ओवरऑल स्कोर कार्ड में एलिका कौन सी टीम टॉप पे है. चांसेस आर गॉडलाइक वहाँ पे हमें दिखाई देगी, बिकॉज यस, फर्स्ट गेम की वजह से 57 पॉइंट्स. आपने बिल्कुल ठीक कहा था, एटलीस्ट 50, बट ये ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बट ब्लीड की टीम भी ज्यादा पीछे नहीं है. प्लेसमेंट पॉइंट्स में दे आर लैकिंग. फिनिश पॉइंट्स उनके अच्छे हैं, 16 टोटल पॉइंट्स, 28 टोटल पॉइंट्स. एंड टीम नॉक्स बहुत कंसिस्टेंट दोनों गेम्स में हमें ये टीम देखने को मिली है, 22 टोटल पॉइंट्स. वहीं अगर एक्सेप्शन की बात करें, मीरामार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका हमें देखने को मिला, टोटल 22 पॉइंट्स. आई एम सॉरी, नॉक्स के 22 एक्सेप्शन. आई एम लिटरली ब्लाइंड. एक्सेप्शन के 19 पॉइंट्स है. आई नीड स्पेक्टिकल्स. Yes, but जितने भी मैंने देखा है, I'm personally very impressed by the overall scorecard right now. Compared to the first match, we see a lot of teams coming out in the open, getting out of their comfort zone and trying their level best to take away all the points. Although map भी change हो गया था. Erangel and Miramar काफी changes थे, especially Team Nox went all in, and so did Team Bleed and Exception.
Although मैं अगली बार expect करती हूँ कि team BLX and Aronai also perform very well. And before we jump into the third map of the day, the third map is going to be the map of Sanhok, if I'm not wrong. And Sanhok to sabko pata hi hai, it's one of my favorite maps as well, with beautiful areas and greenery filled all over the map. Metallica, we have time for Sanhok. Sanhok से पहले ladies and gentlemen हम जाएंगे एक छोटे से break पे, but आप कहीं मत जाइएगा. We will be back in a matter of a few seconds.
Welcome back once again, ladies and gentlemen, to Femstar 2022, brought to you by Mortals India with our broadcast partner Playtonia, along with our media partner SportsKeeda, and the association with, of course, the House of Esports. The name suggests it all. It's the house for the esports, all the events happening. Currently, this event is a female-based event. All the players currently playing these tournaments are female, and this is happening in the occasion of the International Women's Day. Firstly, happy International Women's Day to everybody out there, including my co-caster Shadow, who's been, killing on the rock with the last two maps, I believe. They've been a roller coaster ride, Shadow. I'm looking forward for the third map very much. Well, we certainly are, especially when the third map is I'm sorry, not Erangel. I'm still not over Erangel. I think it's Senok, because that is the most aggressive map. I think the teams, all the aggressive teams are going for the finish points in Senok. So, and right now, Elika, in Senok, we have a new meta, that is a heal battle. That means from the very start, the players go for the first stage. 20, 30 first stages will be in their bag, and one player will be sitting out in the blue, and they will be popping in first stage after first stage. So एक ये नया meta है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? I think that shouldn't happen. Battle Royale is about go and take the fights, but यहाँ पे first stage game यहाँ पे Senok में हो गया है अब. Yes. But I'm very excited about Sanok का map, and personally अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास इतना experience नहीं है Sanok के साथ, तो this is going to be a very good opportunity for me to learn from you and of course the players के Sanhok के map के बारे में what is the inside and outside of Sanhok and how comfortable is it for players. But since we have few minutes left for the game to go, let's talk about हमारे brands. Firstly, I want to thank to all our partners, Mortals India, House of Esports, SportsKeeda, and Playtonia for making this event possible for all the female gamers out there, and taking an initiative to do something in esports for women. I think it's gonna strengthen a lot of female minds, and क्या पता नए नए प्लेयर्स पे आ सकते हैं ये इवेंट को देख के शायद काफी सारे पेरेंट्स और प्लेयर्स इंस्पायर होके दे माइट वांट टू मेक देयर वे इनटू esports as well. Well, certainly, I would also like to thank all our partners कि females के लिए एक platform, एक opportunity वो लेके आए. In fact, recently we have been seeing बहुत ज़्यादा as a community, everyone is very supportive and accepting. But जिस time पे partners भी अगर बहुत ज़्यादा एक opportunity लेके आते हैं females के लिए, that obviously boosts their morale and बहुत सारे wider opportunities खुल जाती हैं. And opportunities की अगर बात करें, एलिका, you were talking about journey into esports, so उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे. Yeah, I mean my journey into esports is also quite surprising because जब मैं पहली आई थी, I was barely 14 when I was playing PC games, and बहुत ज़्यादा like पहले तो काफ़ी अजीब लगता था लोगों को कि कौन है लड़की खेल रही है. That too when they see a young girl, it was very difficult. But yeah, let's put that aside. Let's talk it post the game. But right now we are ready for map number 3. The map is gonna be Sanhok, and currently we'll be diving into the island of Sanhok. पहली बार प्रोडक्शन ने मेरा टाइमिंग मैच किया है. फाइनली मैं बहुत खुश हूँ आज. बट हाँ, Shadow walk us through the plane path. जी हाँ, प्लेन पाथ की अगर बात करें तो नॉर्दर्न साइड का फ्लाइट पाथ हमारा यहाँ पे है कैंप अल्फा से मोंगोय की तरफ पे. बट अगर सेनॉक की बात करें, छोटा मैप है, फ्लाइट पाथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेकर यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि आप इजीली ग्लाइड कर सकते हैं अपने फेवरेट ड्रॉप लोकेशंस की तरफ, जो कि हमें यहाँ देखने को भी मिलेगा. बट अगर हम बात करें, फिलहाल हातिन वाले आइलैंड पे काफ़ी सारी टीम्स ड्रॉप इन कर चुकी हैं. पैनिक का स्क्वाड शायद हातिन जाते हुए दिखाई देगा. वहीं अगर बात करें टीम सेल्सियस की, तो कैंप अल्फा पे उन्होंने ड्रॉप इन किया है. ब्लीड की टीम एक स्प्लिट ड्रॉप लेंगे, बट बूट कैंप इज द मेन हॉट ड्रॉप यहाँ पे जो है बूट कैंप रहता है. एंड वहां पे हमारी वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टीम गॉडल जाते हुए दिखाई दे रही है. एंड उसी के पास में अगर देखें दूसरी एग्रेसिव स्क्वाड, दैट मींस टीम नॉक्स, वो ड्रॉप इन करते हुए दिखाई दे रहा है. फाइनाल की तरफ हम देखें तो आई थिंक एक्सेप्शन की टीम यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है. दैट मींस विद इन अ मीटर ऑफ 1000 मीटर्स के डिस्टेंस में 3 टॉप टीम्स अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं, गॉडल, एक्सेप्शन एंड टीम नॉक्स. Yes, well, ड्रॉप लोकेशंस तो काफ़ी हॉट दिख रहे हैं मुझे. शैडो,
but I hopefully think that this map might give other teams to, mm, come back into the scorecard, make their way, build their team or build their firepower. हर टीम की एक बेस्ट मैप होती है और एक बहुत ही खराब मैप होती है. If you ask me, one of my bad, like one of my maps where my performance absolutely goes down is Sandhawk. Since for the greenery, I would not blame it. But coming back, I think विंजो की टीम ऑलरेडी अच्छी स्टार्ट हो चुके हैं. टीम लीड वन ऑफ द प्लेयर्स हैज बीन नॉक्ड आउट. कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं, बट द लूट इज इन वेरी ग्रेट इन द हैंड्स. करंटली दे आर कैरिंग यूएमपीज एंड barely any proper rifle into the hands. अभी भी looting phase चालू है. Shadow, I guess that's one of the reasons why they are not able to commit to the fight. जी हाँ, अगर सेना की बात करें, लूट यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है. यू विल गेट योर हैंड ऑन द वेपन्स ऑन द फर्स्ट स्टेज, बट थोड़ा सा शॉर्टेज अगर हम बोले तो यूटिलिटीज का यहाँ पे रहता है. ग्रेनेड्स एंड स्मोक्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं सेनॉक के मैप में, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे टीम्स को ध्यान रखना पड़ेगा. एंड लेवल एक्स की भी टीम की अगर बात करें, फर्स्ट मैप बहुत अच्छा गया था. इनिशियली स्टार्टिंग में सबसे पहला फर्स्ट ब्लड इन्हीं का आया था, एंड इस बार वापस से सोबिल की अगर बात करा जाए लेवल एक्स विंटर्स की तरफ से, फर्स्ट ब्लड इन्हीं की टीम से आते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, बट ब्लीड ESP इनका अच्छा शुरुआत तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ है. एंड ब्लीड की टीम फिलहाल तो सेफ्टी की तरफ मूव करते हुए हमें दिखाई देगी, बिकॉज दिस इज अ मैप, यहाँ पे कहीं से भी शॉट्स आ सकते हैं. ग्रास में कहीं भी स्नेक्स विल बी लर्किंग, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. एंड जिस तरीके से टॉक्सी लेवल एक्स बहुत प्यारा स्प्रे ले रही है ब्लीड की तरफ से, थोड़ा केयरफुली मूव करना पड़ेगा. एंड शॉट्स भी बहुत ही बखूबी कनेक्ट भी हो रहे हैं डॉली की तरफ. I think a clear view के लिए Toxi आगे push कर सकती है. And as I say that Toxi is definitely trying to move forward for a better view and a better spray. And look at Winsol level. देखो कैसे भाग रही है एक प्लेस से दूसरी जगह. उनका पोजीशन तो पक्की हो चुकी है. I don't know for what reason she did that. It was a very big risk, but she was confident. She was slightly distracted, and Fineapple is definitely not having a good time. Karma Queen has been spotted out. Charisse has already been taken down, and I think she's been confirmed as well. Fineapple, not a really great start for them, but Winsobi on the other hand, उनकी team काफी aggressively team Bleed के against बढ़ रही है. Since team Bleed is also currently in the top 5 of the leaderboard, taking them down would give them much more advantage to climb up the leaderboard. They can climb up, but Fineapple के लिए अभी climb करना थोड़ा मुश्किल हो गया, because कर्मा क्वीन को भी नॉक कर दिया गया है. and with that UMP45 NP के प्लेयर्स फिलहाल के लिए उनको एलिमिनेट भी कर देंगे. दैट मींस Fineapple 2 प्लेयर्स बचे हैं. 2 प्लेयर्स के साथ सेनॉक का मैप निकालना थोड़ा सा पेशेंस गेम यहाँ पे जरूर हो जाता है, बिकॉज आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने रोटेशंस में भी, एंड उसी के साथ बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा. कोई स्क्वाड एलिमिनेशन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, बट प्लेयर्स जरूर एलिमिनेट हो सकते हैं. लेवल एक्स जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, उनको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज सामने है कंपाउंड में ब्लीड का स्क्वाड, एंड जिस तरीके से वो चेक करते हुए, स्काउट करते हुए मूव कर रहे हैं, आई थिंक दे विल बी एबल टू स्पॉट डाउन द प्लेयर्स. बट इतना ओपन में सेनॉक में मूव करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. इट्स द फर्स्ट सर्कल, बट आफ्टर थर्ड सर्कल इतना इजीली नहीं मूव कर पाओगे आप ओपन में, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. बट ब्लीड की टीम, उनको कोई आइडिया नहीं है कि अभी पास में एक और एनिमी आ चुका है. Yes, well, जब तक कोई साउंड ना आ जाए तब तक ये लोग सेफ ही खेलेंगे, बट द सेकेंड they give the sound, I think they'll pretty much be clear about the fight and the conflict that's gonna initiate. But Team Bleed, on the other hand, they already have taken pretty amount of damage, and Team Nox, who are currently waiting for an opportunity. Shadow, after the last game, Nox is very disappointed with their gameplay, and they want to rush in, get those kills to themselves. And especially a surprising fact that Team Bleed ki most of the players are currently in only one compound, and it goes the same for Nox. So अगर थोड़ा सा स्प्लिट गेम प्ले कर सकते हैं तो मे बी उनके पास एडवांटेज हो सकता है. जैसे कि काफी not expected decision था that Bleed की one of the players will walk out in the open like that. He's been damaged to very low HP. That is IGL. He will be getting knocked as well, but the confirmation that is in the hands of Team Bleed currently.
Well, Team Bleed, they are looking quite strong right now in this particular fight. जैसे जिस तरीके से कुहू यहाँ पे शॉट्स ले रही है, गॉडेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुकी हैं एंड ब्लीड डू हैव द इंटेल ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम गॉडल आल्सो बिकॉज गॉडल दूसरी साइड पे प्लेस्ड हैं, प्लस वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं एंड दे कैन गेट एज मेनी फिनिश पॉइंट्स एज दे वांट। टीम नॉक्स की अगर बात करें, बहुत ही केयरफुली मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आई थिंक एक सरप्राइज एंगल निकालने की कोशिश फिलहाल के लिए करते हुए, कुहू की अगर बात करें, अगर फ्लैंक करेंगे थोड़ा केयरफुली फ्लैंक करना पड़ेगा बिकॉज गॉडल इज ऑलरेडी प्लेस्ड। रिबेल पे शॉट्स लेने का ट्राई कर रहे हैं पिक्सू ब्लीड की टीम से एंड दैट इज नॉट गोइंग टू फेयर ऑफ रियली वेल बिकॉज गॉडल वहां से थर्ड पार्टी अगर करेगी तो दोनों टीम्स के लिए दिक्कत का सिचुएशन हो जाएगा। Levelx विंटर की अगर बात करें, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं बट गॉडेस विल स्टार्ट थिंग्स ऑफ बाय नॉकिंग डाउन वन प्लेयर ऑफ टीम ब्लीड। ब्लीड का एक प्लेयर नॉक हो चुकी है एंड वहीं अगर बात करें, पोलो भी यहाँ पे नॉक हुए हैं। पोलो को रिवाइव करना इतना आसान नहीं होगा एलिका। यहाँ पे काफी क्लोज कॉम्बैट फाइट्स देख सकते हैं सैंड ऑफ गेम। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम ऑलवेज स्कैर्ड एंड फ्यूरियस अबाउट सैंड ऑफ। काफी छोटा सा मैप है एंड काफी ज्यादा ही क्लोज कॉम्बैट्स फाइट आ जाते हैं। मी बीइंग अ स्नाइपर रोल शैडो, प्लेइंग अ क्लोज रेंज फाइट वुड बी वेरी मच पैनिक फॉर मी। फिलहाल के लिए एनपी देलिना की टीममेट अनफॉर्चुनेटली गेटिंग आउट ऑफ द सर्वर, which means that she has to play it all by herself with the rest of the teammates she has. Team BleedESports is currently the center of attraction for Team Win and as well as NP. Delina is also knocked out. Pancake and her friend Nico has to go in for the revive, but I don't think they will be going in since their position has been kept by the opponents, that is Bleed. Roro is already out of the game, so it's just 2 players all by themselves for Team NP. But they already have good amount of kills though, good amount of finishes, 3 finishes to their hands. Well, certainly 3 finishes, but Team Panic this time they have the finish points. उनके पास भी 2 finish points हमें देखने को मिल रहे हैं। Team Nox की अगर बात की जाए, उनके पास aggressively यहाँ पे Panic की टीम मूव करते हुए दिखाई दे रही है। They better be careful because Team Panic 2 गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, but Team Godl again being the aggressive one, ESG की टीम पे इस बार शॉट्स ले रहे हैं। 2 प्लेयर्स को ऑलरेडी नॉक कर दिया गया है। कंफर्मेशन भी एविल यहाँ पे निकालना चाहेंगी एंड ESG की अकेली लास्ट प्लेयर इरिस बचती हैं एंड शी इज रनिंग फॉर सेफ्टी बिकॉज एक 1v4 फाइट यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगी वो, स्पेशली अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ टीम गॉडल। पोजीशन डिसएडवांटेज है, नंबर्स डिसएडवांटेज है, दिस इज नॉट द प्लेस टू पिक अप 1v4 फाइट। दूसरी तरफ नॉक्स की टीम जो है पनिश कर रही है पैनिक के प्लेयर्स को। काफी एग्रेसिव पुश आया था बट फिनिश स्पीड में हमें देखने को मिला है कि नॉक्स के प्लेयर्स बहुत इजीली वहां पे पैनिक के प्लेयर्स को फिनिश करते हुए दिखाई दे रहा है एंड इविल लुक एट दैट, शी इज नॉट स्टॉपिंग फॉर एनीवन। लास्ट प्लेयर एक और फिनिश पॉइंट के लिए वो हंट करते हुए दिखाई दे रही है बट शी नोज कि एक एक्सटेंट तक ही यू कैन पुश इट आउट इन द ओपन एरिया, आफ्टर दैट यू नीड टू मूव बैक टू द सेफ्टी एंड एग्जैक्टली वही यहाँ पे गॉडल की टीम करते हुए। Panic baby, you're left all alone. Better go for the placement points because एक 1v4 situation, I don't think it's a good idea. Yeah, although it's definitely not a good idea since it's not gonna be in their favor. And Panny, I think Panny ki baby, I think she has to fall back right now because Nox God has already found out her position and is gonna be pushing on to her. Baby with absolutely no HP left will be going down and getting confirmed. 6 finishes for Team Nox. A beautiful start after the last game. But Archie and Boo, both of them are already out of the server. Anyway, we are still 5 minutes only into the game. We can already see that a major amount of players are out of the site right now, and including 2 teams. We have total of 14 teams, 41 players alive right now. And Team Godel seems to be playing it very safe. They're playing a triangle based position over here. If you can see, we've got 2 players over towards the tower and the rest 2 on the opposite side. Well, certainly they are in a 2v1 versus 1 split and almost अगर बात करें सेनो के सेंटर पोजीशन में वो है एंड सर्कल शिफ्ट की अगर बात की जाए अभी भी सर्कल उनको फेवर करते हुए दिखाई दे रहा है। बट अगर बात किया जाए भान की तरफ, लखावी की तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ एलिका, तो काफी ज्यादा क्राउड हमें वहां पे देखने को मिल रहा है सर्कल में। Yes,
एंड बाय द टाइम आई गेस हम दूसरे सर्कल पे पहुंच जाएंगे, तब तक काफी सारे टीम्स, आई मीन मोस्ट ऑफ द टीम्स विल बी इनसाइड द सर्कल. थोड़े ही टीम्स की दिक्कत है, जैसे कि टीम नॉक्स अभी फिलहाल काफी दूर है सर्कल से. दे हैव टू टेक अ वेरी सेफ रोटेशन रूट to make their way inside the circle, and even eventually after going to the circle survival काफी मुश्किल हो जाता है. There are 14 teams and circle अभी भी छोटा है लगता है मेरे को 14 teams के लिए. देखो boot camp में Godel has spread their wings out, so if any team is trying to take control of boot camp, they should be very careful about the gatekeeping coming in from Godel. Well, that can certainly happen, but Team Bleed this time they have already lost 2 players. They got 2 finish points, and now they have spotted down the players of Team B4M also. So थोड़ा सा careful उनको यहाँ पे जरूर रहना पड़ेगा. And UMP, Elika, if you notice in Senok, everyone is going for the UMP because in close range में UMP को beat करना is almost impossible. It's one of the beast gun in the close range fight. तो हर किसी के हाथ में एक M4 है कि UMP आपको देखने को मिलेगी फॉर द मीडियम टू लॉन्ग स्प्रे. M4 का यूज यहाँ पे बखूबी करते हुए दिखाई देंगे. इनफैक्ट रिबेल के पास भी सेम कॉम्बो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, इनफैक्ट रिबेल के पास भी सेम कॉम्बो हमें देखने को मिल रहा है. प्लेयर्स को थोड़ा स्पॉट करने का ट्राई करते हुए प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं. नजदीकी अभी जो भी टीम्स है अपने पोजीशन होल्ड करके रखे हुए हैं. आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक. अपने पोजीशन होल्ड करेंगे एंड दे आर गोइंग टू वेट फॉर द थर्ड सर्कल. Well, yes, I definitely want to have a look at the map and this circle where it's currently heading towards. Although काफी सारे टीम्स के फिनिशेस ज्यादा ही है. हमने पिछले बार देखा था नॉक्स के हाथ पे 6 finishes थे. B4M with 4 finishes. I think Godel has 2 finishes if I'm not. No, Godel does not have any finishes, do they? I don't think they have. Yeah, I don't think they have taken any fights yet. They're playing it safe. They've already camped through a very good area that is outside of boot camp, and it definitely seems like to be the center of the circle now. And I don't know why Team BLD is playing over the edges of the circle. They can easily rotate off right now. There's nobody nearby them. So if they start rotating now, eventually by the time next circle starts to close, and they can make their way. But ये भी एक तरह के safe play है. I've seen this kind of meta in other battle royale games where they play only on the edge of the circle, to avoid getting gatekeeped by teams or to avoid getting third party. Well, certainly मेरी नजर अली का अभी फिलहाल सबके फर्स्ट स्टेट्स पे रहने वाली है बिकॉज थर्ड सर्कल बनना शुरू हो गया है. आई वांट टू सी किसके पास कितने फर्स्ट स्टेट्स हैं बिकॉज looks like these girls are not stopping. They are not relying on the heal battle meta. वो एक proper 4v4 fashion battle के लिए opt करेंगी. They are going for the finish points. They are going for the aggression, and that is exactly what battle royale are all about. तो काफी मजा आने वाला है इस मैप में बिकॉज हील बैटल आई डोंट लाइक. आई हेट इट. आई hate heal battles Senop में, and these girls are fulfilling my wishes. And I think the male lineups need to learn little bit कि battle royale है. Girls, they are not getting scared of the fights. They are putting a head on head fight with other lineups. तो आप लोग भी करिए. वहीं अगर बात करें सर्कल की, सर्कल फिर से शिट हो चुका है एंड गॉडल की टीम खुद को फिर से सर्कल के बीच में पाएगी. नॉट बीच में, साइड में, सॉरी. Yes. Well, meanwhile, guys, I just want to remind everybody that you're watching Femstars 2022, a BGMI tournament only happening for female players currently on the occasion of Women's Day. For more updates, and if you want to find out if your favorite team or favorite streamer is playing, you can go ahead and check us on our socials. That is Immortals India on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. And we are Houseofesport on Instagram. You can also check out our broadcast partners' socials. That is @Playtonia.India. And we also have our very famous media partner SportsKeeda, who write about esports news, esports articles, and hopefully they'll also be writing about Femstar 2022. So go ahead, check them out as well. And if you like our casting and if you want to give us any tips, you can follow me on Instagram. That is Tanvi Jasmine FTW. And you are Shadow.
रॉबिन शैडो 47 ऑन इंस्टाग्राम। अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन है आप लोग हमें जरूर दे सकते हैं। Yes. Well, thank you for doing that. But to everybody who's watching here, we really appreciate your time. Thanks for dropping by. And don't forget to like and share the stream, because it's not every day that women tournaments keep happening. If you have any friends or if you want to support the stream, you can go ahead, share it, and of course do subscribe to YouTube channel, because Immortal India is gonna come back with more and more events for female, and not only females, but we're gonna be having a general tournament coming in very soon. On the other hand, we've got BM4 ICE putting out a clean finish with 5 total finishes for team B4M, and we are still in the third circle, don't worry. Well, we are certainly in the third circle. B4M की टीम की अगर इस बार बात की जाए, they are pretty aggressive. They have got 5 finish points for themselves, heading to a very good start. 13 teams, 40 players, still alive in the third circle of Senok. That means Elika बहुत ज़्यादा aggression यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा. And जिस तरीके से ये सारी लड़कियां perform कर रही हैं, I think they can fight against any male lineup and can beat them down. I have no doubt. कोई डाउट मेरे मन में उस चीज को लेके नहीं है, बट अभी के लिए सानिया यहाँ पे जो है आईजीएल को नॉक करते हुए दिखाई देंगी. उनकी टीम में टीएन की अगर बात करें, शी इज रनिंग फॉर सेफ्टी, बिकॉज यहाँ पे रिवाइव देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. Yes, revive देना almost impossible था, and they couldn't do much better anyway. But BleedESports, a very rough start for them. 2 finishes in their hands, but 3 bodies already dropped, which means Yin is the last player currently standing for her team. You know, अक्सर ऐसे जो सोलो प्लेयर्स होते हैं ना, शैडो, दे मैनेज टू सर्वाइव टिल द वेरी एंड, बिकॉज ना ही वो फाइट लेंगे, ना ही वो अपने पोजीशन रिवील करेंगे. वो तो बहुत सेफ खेलने वाले हैं ना. सो देयर इज नो वे दैट देयर पोजीशन कैन बी रिवील्ड unless they are the ones who are initiating or calling for a fight. So it's easy for them to just watch 2 teams fighting against each other, and you know they'll be probably in top 3 top 5, but जब last circle आ जाता है, chicken dinner तो होगा नहीं, because most of the times squad की advantage होती है, man advantage आ जाती है अपने opponent पे. वेल मैन एडवांटेज जरूर रहता है, बट आईक्यू गेम सेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि हम लास्ट मैच में भी देखा था, मीरामार में स्मोक के अंदर द प्लेयर वाज लाइंग प्रॉन एंड ओपोनेंट के टीममेट आती है उनके साइड में ऑलमोस्ट है, एंड दे हैव नो आइडिया. शी डिडंट हियर द फुटस्टेप्स, कुछ फुटस्टेप्स नहीं है, मे बी शी वाज डिस्कनेक्टेड, समथिंग हैपेंड. बट फिलहाल के लिए सानिया इज इन अ ट्रबल एंड उनको यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा. एंड इसके बाद अगर बात करें, गॉडेस अकेली बचती हैं फाइनएप्पल की टीम से. B4M बहुत अच्छा गेम उनका यहाँ फिलहाल चलते हुए. बर्गर की अगर बात करें, किल कंफर्मेशन जरूर आएगा, आईसी विल हेल्प इन दैट. बट फाइनएप्पल अकेले प्लेयर अगेन पोजीशन पॉइंट्स के लिए जरूर जाना चाहेंगे. बट B4M सेनॉक में अगर आप फिनिश पॉइंट्स निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट्स भी आ जाते हैं, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन. आप बॉटम ऑफ द लीडर बोर्ड से बहुत अच्छा जंप ले सकते हैं. दैट्स वाई सेनॉक हमेशा किसी भी इवेंट में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, एंड आई थिंक दिस टाइम इट कैन बी द गेम चेंजर फॉर B4M. एक्सेप्शन की अगर बात करें, they are taking things slow. पाइनान में ड्रॉप इन उन्होंने किया था, पाइनान के पास में सर्कल है, यहाँ से ज्यादा उनको मूव करने की नीड पड़ी नहीं है अभी तक. तो इट्स अ गुड स्टार्ट. जस्ट होल्ड ऑन टू योर पोजीशन. सर्कल आपके फेवर में, आप कंपाउंड लीव करके जाएंगे फाइट लेने के लिए. मे बी जब आप वापस आएंगे तो वो कंपाउंड ऑक्यूपाई हो जाएगा. सो सेनॉक में एक अच्छा पोजीशन बाय टू गिव अवे टू योर ओपोनेंट्स. बट बेकी फिलहाल क्लोजिंग थोड़ा सा करने के ट्राई कर रहे हैं उसका बोल. Yes, but PLD की बेकी की पोजीशन स्पॉट हो चुकी है, एंड एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स पिछले बार उन्होंने चिकन डिनर काफ़ी क्लोज से मिस कर दिया था. आई डोंट थिंक शैडो की इस बार वो मिस करने देंगे, बट सिंस इट्स अ डिफरेंट मैप, स्ट्रैटेजीज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. शायद वो बहुत ही सही अच्छा स्ट्रैटेजीज हो सकता है, या खुद बैकफायर कर सकते हैं अपने टीम पे. बट ऑन द अदर हैंड, ग्रेशी का टीम ने सेल्सियस के अगेंस्ट अटैक कर चुके हैं, एंड सेल्सियस अटैक डाउन टू द HP. फिलहाल के लिए BLD team is not inside the circle, and ESG is giving them a hard time. Indra is down to low HP, and so are his teammates. They've only got 1 finish in their hands. All of them are trying to make
their way inside the circle, but just speed से HP कम हो रही है. With their feet, I don't think they can get inside the circle. Exception Esports Kiwi, on the other hand, gets spotted out, will be getting confirmed shortly, but her teammates are here for the backup, so she'll be back on her feet. And the lucky part, they're also inside the circle, so no zone damage. Well, no zone damage, but talking about Team Godl, they are on the bridge area of the Pineland somewhere, and they need to move inside the circle, but things will get little difficult if the players of Team Nox spots them down. But जो हमें शायद यहाँ होते हुए नहीं दिखाया देगा, because Goddess को यहाँ पे spot किया गया क्लची के द्वारा, and बहुत अच्छा retaliation fire Goddess की तरफ से यहाँ आता है. Instantly क्लची को नॉक किया गया. रिबेल रिटेलिएट करेंगी, नॉक करना चाहेंगी अपने सामने. लेट्स सी नॉक कर पाती है या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 एचपी में यहाँ पे रिबेल आ चुकी है. एलिका, बहुत अच्छा रिटेलिएशन गॉडेस की तरफ से हमें देखने को मिला. Yes, but Godel को देखो यहाँ पे, they are in a dangerous fight against Team Nox, but सबसे disadvantage है कि वो पानी के अंदर खेल रहे हैं, which is not advantage, and successfully Rebel has walked out 6 finishes for Godel with Clutchy down her feet. Evil already पहले ही eliminate हो चुके हैं. अगर क्लची को ये रस कर पाते तो Godel definitely has a chance. And Exception Esports is back with 3 players in their hands, but एक finish किया है उन्होंने. They need much better amount of finishers in order to compete with Godel and the other teams who are currently on top of the table. Exception Esports being on 3rd position, not bad for them, but they can do much better and acquire in the 2nd position if they keep playing this way. Well, certainly, and जिस तरीके से अभी फिलहाल एक्सेप्शन esports है, BLD को सर्कल में मूव करना है, they can gatekeep easily because blue का डैमेज यहाँ पे मिलेगा. 6 सर्कल है, you can't stay inside blue for a very long time. And नौरा की अगर बात करें, स्टार प्लेयर ऑफ BLD, उन पे शॉट्स यहाँ पे रिद्धि लिखते हुए दिखाई दे रही हैं. And Nora is already down on a very low HP. Instantly यहाँ पे रिद्धि उनको नॉक करेंगे, बट रिद्धि को पीछे से यहाँ पे B4M के प्लेयर्स एलिमिनेट करेंगे. इसी के साथ एक्सेप्शन esports कंप्लीटली एलिमिनेट होती हैं. गॉडल के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ चुकी है. रिबेल ऑलरेडी सर्कल में, बट अल्फा दीदी इज क्रॉलिंग इनसाइड द सेफ्टी सर्कल. लेट्स सी इफ शी कैन मेक इट, बिकॉज रिबेल ओपन में नहीं आ सकती है. अभी स्मोक का कवर उन्हें बनाना ही पड़ेगा. नौरा की अगर बात करा जाए, नौरा भी नॉकआउट हो गई थी, बट इंस्टेंट रिवाइव उनको यहाँ मिल जाएगा. बट सर्कल अभी भी उनके फेवर में नहीं है. उनको B4M के साथ फाइट यहाँ पे लेना ही पड़े. B4M अभी बिजी है दूसरी टीम के साथ, एंड अदिति वाइटी यहाँ पे नॉक हो चुकी है. नौरा एलिमिनेट होंगी. इसी के साथ BLD का स्क्वाड आई थिंक एलिमिनेट यहाँ हो चुका है. नो, नौरा इज स्टिल सर्वाइविंग ऑन 1 HP. कोई फर्स्ट एड नहीं है, सिर्फ बैंडेजेस उनके पास है, एंड स्टिल वो शॉट्स यहाँ पे ले रही है. Yes, make the impossible possible. That is our aim, and Becky almost did it. Unfortunately, Team BLD will be going out of the 7th position, but Raven is still alive, the only member for her team. Although Nain Whitey on the other hand, he's tagged down to low HP. Already knock हो चुके. I think finish भी हो जाएगी अभी. यहाँ पे 2 टीम के प्लेयर्स अकेले बैठे हैं. ब्लिंक बैठे हुए और दूसरे टीम से प्लेयर भी. ब्लिंक जोन के बाहर है, एंड जब तक वो सर्कल के अंदर पहुंच भी जाएंगे उनका एचपी काफी कम हो जाएगा. तो यहाँ पे बस ब्लिंक अपने सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए अपने मेडिकेट्स और वगैरह यूज कर रहे हैं. इंस्टेड दे कुड मेक हिज वे इनसाइड द सर्कल राइट नाउ, मे बी एज अ अपॉर्चुनिटी. बट जितना स्पीड से मैं ये एचपी को मतलब डैमेज देते देख रही हूँ ना जोन को, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू कम बैक. बट यहाँ पे देखेंगे रेवन अकेली बचे हुए अपनी टीम से. 2 फिनिशेस है. Any expectations, any predictions on what is gonna end up in the hands of Raven? Well, Raven के पास 4 फर्स्ट एड्स हैं. अगर किसी तरीके से उनको ज्यादा फर्स्ट एड्स मिल पाती हैं, आई थिंक वो हील बैटल यहाँ पे कर सकती हैं, जिस तरीके से सेल्सियस के लास्ट प्लेयर करती हुई दिखाई दे रहे हैं. रिबेल की अगर बात करें, रिबेल आई थिंक सेम स्ट्रैट के लिए ऑप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 10 फर्स्ट एड्स है उनके पास. ज्यादा साउंड यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज शी नोज कि ओपन है, कोई कवर नहीं है. शी कांट विन अ फाइट जब बहुत सारे एनिमीज की नजरें आप पर गड़ी हो. वहीं अगर बात करा जाए ग्रेशियस की टीम की, दे आर इन अ गुड स्पॉट. थोड़ा सा स्प्लिट है, एक अच्छा पोजीशन है, बट ब्लिंक की फर्स्ट एड्स यहाँ पे डिप्लीट होनी शुरू हो चुकी है. 10 फर्स्ट एड्स यहाँ पे बची हैं. कितने पोजीशन पॉइंट्स यहाँ पे
ले पाएंगे अपनी टीम के लिए, वो चीज यहाँ पे देखने पड़ेगी। 9 फर्स्ट स्टेज एंड आफ्टर दैट 8 फर्स्ट स्टेज यहाँ पे इनके पास है। ऑल तो सिर्फ 250 मीटर सर्कल में जाना है, बट शी कांट पुल इट ऑफ बिकॉज जिस तरीके से आपने बोला कि डैमेज मिल रहा है जोन का, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। B4M सर्कल है उनपे और 12 फिनिश पॉइंट से लिखा। Yes, 12 finish points in Team B4M. Nothing seems like stopping them right now. एंड जितना तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, जितना तेजी से वो किल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, I think nothing can probably stop them at this point. Gordon on the other hand, okay, to my surprise, Shadow, there's only one player alive and that is Rebel. Do you think Rebel definitely has the potential to pull off that chicken dinner? I do have a feeling, but for that she needs to first let the other teams finish their fights. It has to be a 1v1 situation for Rebel or a 1v2. That can also work into the favor. एक्चुअली रेबल के पास अगर हम बात करें 10 फर्स्ट एड से, शी इज गोइंग फॉर द हील बैटल। अगर ओपन में उनको कोई प्लेयर स्पॉट होगा, जरूर शॉट लेके चिकन डिनर के लिए जाना चाहेंगी, बट ब्लिंक की जर्नी यहाँ पे खत्म होगी। लास्ट फर्स्ट एड यहाँ पे पॉप होगा एंड उसके बाद आई थिंक ब्लिंक का जर्नी यहाँ पे खत्म होता हुए 4th पोजीशन पे। बट वेरी गुड, एक और प्लेसमेंट पॉइंट अपने लिए, अपनी टीम के लिए वो ले पाई हैं। एंड अगर बात करें टीम ग्रेशियस की, तो फिलहाल वो शॉट्स ले रहे हैं, चारों तरफ स्मोक्स ग्रेनेड्स डिप्लॉय करके एनिमी को स्पॉट करने का ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिबेल को जल्दी हील करना पड़ेगा बिकॉज आई कैन सी काफी कम एचपी है एंड शी इज गोइंग फॉर द हील बैटल। 10 फर्स्ट एड है उनके पास। टीम ग्रेशियस एंड व्हाट जस्ट हैपेंड, शी वाज पॉपिंग फर्स्ट एड, आई थिंक शी मिस्ड इट एंड उसी के साथ यहाँ पे टीम ग्रेशियस अपने लिए चिकन डिनर निकालते हुए दिखाई दी। आई थिंक रिबेल की या तो फर्स्ट एड खत्म हो गई थी या वो लास्ट फर्स्ट एड पॉप इन नहीं कर पाई। वो तो काफी अनएक्सपेक्टेड था। टीम डैडी चिल इट्स एक्चुअली जिन्होंने यहाँ पे चिकन डिनर लिया है। आई डिड नॉट इवन सी देम कमिंग anywhere near to the chicken dinner, but all of a sudden I think the last miracle, पता है ना कि हर चीज में एक मिराकिल हो जाती है जिंदगी में, and for them this chicken dinner is going to be a big miracle. Although congratulations to team Daddychill, they are the ones to break the momentum of Godlike. But I should say huge cheers to Godlike's performance also. Even Rebel being the only survivor, she also tried her level best. Well, she certainly did. 10 फर्स्ट एड से अकेली थी, स्पॉट नहीं हुई। स्पॉट ना होना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है एंड बहुत अच्छा आईक्यू कि इस मोमेंट पे वी शुड गो फॉर द हील बैटल इंस्टेड की फाइट लें। बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे था। बट B4M थोड़े से निराश होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वो थे। बहुत आई थिंक फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द गेम दे वर एग्रेसिव। लास्ट आई सॉ 12 फिनिश पॉइंट्स उनके पास थे एंड एक चिकन डिनर इतने नज़दीक आके मिस करना थोड़ी सी निराशा ज़रूर होती है। Yes, well, I think ट्राई तो अच्छा किया है। स्पेशली B4M के बारे में बात करना है मुझे। उन्होंने 12 से ज़्यादा ही फिनिश निकल लेते। ऐसा होता है कि हर गेम में कोई ना कोई टीम ज़्यादा फिनिशेस तो लेती ही लेती है। इधर इट बी गॉडलाइक और पिछले गेम में हमने कोई और टीम को देखा है और इस वाली गेम में हमने B4M को देखा है। सो आई गेस the amount of aggression that is coming in from female players, एक मैप के बाद एक मैप एक एक टीम कंफर्टेबल हो रही है। एक एक मैप में एक एक टीम को हम देख रहे हैं ज़्यादा नंबर ऑफ फिनिशेस लेते हुए। सो आई गेस ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। अभी भी 2 मैप बाकी है गाइस, 2 मैप अभी भी बाकी है। आई थिंक वीकेंडी और आखिरी मैप एरेंगल बाकी है। जी हाँ, 2 गेम्स अभी भी बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। लीडर बोर्ड बहुत ही वॉलेटाइल है, हमने देखा था मैच नंबर 2 के बाद भी। सेना के बाद यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं स्कोर बोर्ड में वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, बट वो चीज़ हमारी प्रोडक्शन टीम अभी कर रही है। आई एम वेरी श्योर एवरीवन इज एक्साइटेड कि उनकी फेवरेट टीम किस पोजिशन पे है लीडर बोर्ड में। बट इंडिविजुअली भी अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे फीमेल इंडिविजुअल प्लेयर्स भी आज इस प्लेटफॉर्म पे निकल के आ रही हैं जिनकी गेम की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी। नोरा इज देयर, गॉडेस इज देयर, ऐश इज देयर। तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इंडिविजुअल प्लेयर्स की तरफ से भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमॉर्टल ई स्पोर्ट्स, हाउस ऑफ ई स्पोर्ट्स ने सबने मिलकर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया है कि इंडिविजुअली भी अपने स्किल्स वो शोकेस कर सकते हैं। यस एंड ज़रूर एक और बार मैं सबको बताना चाहती हूँ, अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू एवरीबडी प्लेइंग आउट देयर। एंड शैडो, मुझे ये पूछना था कि
हाउ डिड यू फील पहले गेम से? अभी हम थर्ड गेम भी फिनिश कर चुके हैं. What are the few changes you saw from players one map to the other, and तुम्हारे expectations क्या थे before we started this tournament, and how do you feel right now? Because honestly speaking, I did not expect this kind of aggressiveness coming in from these female teams, getting more than 12 finishes, back to back fights ले रहे हैं, and कितना proper एकदम trait maintain करके रखा है उन्होंने. ना ही उनको पूरा kills पे खेलना है, ना ही उनको placement position पे पूरा खेलना है. They're balancing out both of the points. Well, starting में I didn't expect 20 finish points definitely, but I was expecting कि हाँ 10-12 finish points ज़रूर आएंगे. Teams will be aggressive. इस तरीके का performance expect किया था. But compared to the first game में teams they were just testing the waters, but अब वो comfortable हो चुकी हैं. Everyone is going for the aggression. Every single team is going for it. Yes. But before we jump into the next map, that is a map of Weekend, me and Shadow will take a short break and we'll meet you right back here. Esports has been considered as a boys' club for too long. But now the times are changing and women are taking their rightful place as players, leaders, team CEOs and more. This Women's Day, Immortals India is celebrating women in esports with Femstars 2022. We will have a candid conversation with 3 women pathbreakers in Indian esports who trailblazed their way in a male-dominated industry. This video is sponsored by Crafton, the associate partner Houseofesport, broadcasting partner Playtonia, and the media partner SportsKeedaesports. Be it any field, women are taking over. So let's join the conversation with these personalities from the field of esports.
is definitely growing in India. The way more developers and investors are jumping into this sector, it is growing capital wise, economy wise. The entire ecosystem is growing, no doubt about this. And finally, the government is also acknowledging esports. I think that's a major win for the esports industry as a whole. बट अगर कुछ लॉज या एक गवर्निंग बॉडी भी अगर इंट्रोड्यूस होता है, आई थिंक द वॉलेटाइल पार्ट ऑफ द ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री विल ऑल्सो गेट रिजॉल्व एंड एक स्टेबल इंडस्ट्री ग्रो करते हुए हमें शायद दिखाई देगी बहुत जल्दी. सो नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ ई स्पोर्ट्स इन इंडिया. आई वुड से कि 4 साल से ई स्पोर्ट्स में लोग ग्राइंड कर रहे हैं इन गेम्स लाइक डोटा, CS:GO, बट इतना सपोर्ट एंड एक्सपोजर नहीं मिलता था पहले जितना कि अब मिल रहा है. एंड अभी रिकग्निशन और सपोर्ट दोनों दिया जा रहा है ई स्पोर्ट्स को. एंड आई वुड से कि ई स्पोर्ट्स इन इंडिया इज़ वेरी लुक्रेटिव फॉर पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड. काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड ओवरऑल ग्रो करने के लिए. दो वी लैगिंग बिहाइंड द अदर कंट्रीज, बट सून विल पिक अप द पेस बिकॉज अभी काफ़ी लोग एंड गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करने लगी ई स्पोर्ट्स में. सो आई थिंक फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स इन इंडिया इज़ ब्राइट. So today we are going to talk about the state of esports in India. So basically, our industry is one of the fastest and growing industry in the country, and we represent our country in a national level. So yes, there are lots of things to do. Like right now, लड़कियों को इतना ज़्यादा opportunities अभी नहीं मिल रही है, but इसका मतलब ये नहीं कि in future नहीं मिलेगी, because हमारी इंडस्ट्री अभी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जहाँ पे एक टाइम आएगा जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. फीमेल ई स्पोर्ट्स सिनेरियो इन इंडिया की अगर हम बात करें तो फीमेल्स फ़िलहाल इंडिया में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हर एक सेक्टर में हमको इंक्लूड होते हुए दिखाई दे रही हैं. बी द प्रोडक्शन टीम, मैनेजमेंट टीम, लीग ऑफ्स, ब्रॉडकास्ट टैलेंट, प्लेयर्स, एवरीवेयर फीमेल्स आर हैविंग अ रोल in every single sector of the esports industry, and the way more organizations and TOs are also coming out and showing support to them. That's a good thing. एक equal platform जो है as जो मेल प्लेयर्स को, जो मेल रोस्टर्स को मिलता है, अगर वही फीमेल रोस्टर्स को और फीमेल प्लेयर्स को भी मिले, I think things will get much more better. So if we talk about the female esports scenario in India, there's many girls who are opting esports as a career option, but लड़कियों को इतनी opportunities और facilities नहीं provide की जाती हैं. For example, boys teams को coaches and analysts दिए जाते हैं for improving their performance, वैसा girls के साथ नहीं रहता है. But still, in the limited opportunities and facilities, लड़कियाँ अपना best देती हैं and perform करती हैं. So right now, if we can talk about the female esports scenario in India, so अभी इतनी सारी opportunities फीमेल्स के लिए नहीं है जितनी मेल्स को प्रोवाइड करी गई है, लाइक बूट कैम्प एंड अदर्स फैसिलिटीज़, जिस वजह से वो लोग और तेज़ी से ग्राइंड कर पा रहे हैं. बट बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी है जिन्होंने अपना करियर ई स्पोर्ट्स में चूज़ किया है. फॉर एग्जांपल मी, आई एम द मैनेजर ऑफ मार्कोस गेमिंग, एंड साथ साथ मैं बहुत सारे इवेंट्स भी मैनेज करी हूँ एंड कर रही हूँ. फीमेल कंट्रीब्यूशन इन ई स्पोर्ट्स, वेल अगर ग्लोबल स्केल पे हम बात करें तो एज अ ब्रॉडकास्ट टैलेंट शॉक्स इज़ देयर फॉर लीग ऑफ लेजेंड्स, पैंसी हैं, चूचू गेमिंग इज़ ऑल्सो देयर. तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से देखने को मिलता है. टीना परवेज हैं फर्स्ट फीमेल टू विन अ फोर्टनाइट लैन इवेंट. इंडियन स्केल पे भी अगर हम बात करें, इंडिया में भी मियाओ 16K इज़ देयर, रिबेल इज़ ऑल्सो देयर, इनकॉग्निटो है. कास्टर्स में अगर बात करें, दर्शिता इज़ ऑल्सो देयर. तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबली एंड इंडियन स्केल पे भी फीमेल्स की तरफ से हमें जो है देखने को मिल रहा है. So now if we talk about female contribution in the field of esports, I don't know if you know about this, but फ्रांस की एक गर्ल्स की टीम थी जो कि PMCO जीती थी, and that was quite motivating and inspiring for female players all over the globe. And girls ने उसके बाद से like esports को seriously लेना शुरू किया था. काफ़ी लड़कियां कंटेंट क्रिएशन में भी हैं, बट अब esports को भी सीरियसली ले रही है after that. So now if we can talk about the female contribution in this field, so there are lots of women जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है एंड बहुत आगे निकल गई है, एंड अपना करियर आप इसमें चूज़ कर सकते हो एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ गेमर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ प्लेयर मैनेजर, एज अ टीम मैनेजर, एज अ टीम मैनेजमेंट. तो ऐसा नहीं है कि बस आप एक ही काम करोगे और
आप यहाँ पे वेराइटीज ऑफ वर्क कर सकते हो, आप स्काउट कर सकते हो कि कहाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है काम करने में, एंड आप वो करके आप अपने मनपसंद की काम करके यहाँ पे आगे ग्रो कर सकते हो। फ्यूचर ऑफ फीमेल्स इन इंडियन ई स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, देयर इज़ नो डाउट। कम्युनिटी एज अ होल इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एक्सेप्टिंग टू द फीमेल्स, बट कहीं ना कहीं अगर बात करें जाए फीमेल प्लेयर्स की, तो वहाँ थोड़ा सा आई थिंक और सपोर्ट एंड एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म जो है वहाँ देने की आई थिंक नीड है। इनफैक्ट इफ अ फीमेल प्लेयर इज डिजर्विंग, I think she should get a chance in the male lineup as well to perform. So now if we talk about future of female esports in India, I would say कि future bright ही है, क्योंकि लड़कियों को finally जाके opportunities and recognition मिलनी शुरू हुई है, and now people all over the globe know कि लड़कियाँ compete कर सकती हैं boys के against in this field as well. And I would say कि अगर ऐसे ही opportunities मिलती रहे, लड़कियों को slots मिलते रहे tourneys and sprints में, तो लड़कियां अपना बेस्ट देंगी एंड आगे बढ़ेंगी। सो लास्टली इफ वी कैन टॉक अबाउट द फीमेल फ्यूचर इन दिस फील्ड, सो यस फ्यूचर तो है, एंड बहुत सारे ऐसे विमेंस एंड लड़कियां हैं जो कि बहुत बढ़िया काम करके बहुत आगे चली गई हैं, एंड अभी स्टार्टिंग में लड़कियों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हुआ है। लड़कियों के लिए अलग से टूर्नामेंट मैनेज किया जा रहा है, अब अरेंज किया जा रहा है, और विद अ बिग प्राइस पूल स्क्रिम्स अरेंज किया जा रहा है जहाँ पे लड़कियाँ अपना मतलब परफॉर्मेंस ग्राइंड कर सके एंड परफॉर्म कर सके। सो यस फ्यूचर तो ब्राइट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी विमेंस डे। Well, I should definitely say that was very sweet of everybody, sharing their expectations, sharing their experience in the field of esports, being a woman. And of course, Shadow was also there. She shed some light on how esports industry is going to be for women in future and how it has been so far. I believe that what they said, I 100% believe in that fact, Shadow, that women have a lot of wide variety of careers that they can choose in esports, as a professional player, streamer, content creator. You can also have different roles, work in production, backend, and you can also be casters like us, me and Shadow. Well, certainly you can be, and the fact एलिका की esports के बहुत सारे dimensions के बारे में लोगों को पता नहीं है। Back end also in the production team, top houses में भी females are there in the production team, in the league ops. बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये शो बहुत बड़े ऑफिशियल इवेंट्स भी सक्सेसफुल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम फीमेल्स। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उन पे ज़्यादा लाइट नहीं जाती है, बट जिस तरीके से इस बार इमॉर्टल ई स्पोर्ट्स, प्लेटोनिया, हाउस ऑफ ई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कीड़ा प्लेटफॉर्म लेके आए, अपॉर्चुनिटी लेके आए, बहुत सारे ऐसे और अपॉर्चुनिटीज अगर आए ना एलिका, तो आई थिंक देयर इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर एवरीवन। Yes, there definitely is. And coming back to the game, coming back to the action, the last map we saw, which was the map of Sanhok. Let's quickly see the scorecard of the map of Sanhok, where exactly teams have lost the chicken dinner. I believe B4M still standing strong, but only few points away from team Daddychill. Daddychill has better finish points and also position points. So only due to the difference of 3 points, Daddychill is currently on top of the table. B4M, kudos to them with 12 finish points and 10 position points. On the third, we have team Godlike, 7 finish points and a total of 19 points in the hands. Not bad, but team Nox has also managed to stay consistently in the top 5 with 8 points in their hands. So baki sare teams that are trying the level best. Team Levelx Winter, not the kind of performance I was actually expecting from them, Bhavna. They're over down towards 15th position. Well, they are on 15th position. No one expected that, especially जिस तरीके का performance उनका मैच नंबर 1 में था. No one expected कि Sanhok जैसे aggressive map में वो 15th position पे हमें देखने को मिलेंगी. But it's okay. You can have some bad games also. ये एक bad game था उनका. I'm very sure weekend ही हमारा next game आने वाला है, उसमें they will try to even things up. वहीं अगर बात करें
टीम गॉडलाइक की, जैसे कि आप बार बार बोल रहे हैं कि वो बहुत कंसिस्टेंट है। नॉक्स ऑल स्टार्स भी अगर बात करें, दो ये टीम्स है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हर गेम में इनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक लीडरबोर्ड में ओवरऑल दे स्टिल हैव अ टॉप 2 पोजीशंस, आई एम वेरी श्योर। Yes, I do also believe that कि एक एक अभी तो डैडी चिल ने थोड़ा है गॉड लाइक की मोमेंटम, बट आगे जाके आई वांट टीम्स लाइक नॉक्स, Celcius, Bleed, Aronai Esports to come up and pick that winner chicken dinner into their hands. So guys, this was the map of Sandhawk. I also want to see the overall scorecard if it's ready. I do believe it is ready, and still in the first position we have team Godlike with 76 points. Bleed, अभी तक उन्होंने एक चिकन डिनर नहीं निकाला, बट एक बार भी उनके हाथ में ज्यादा पोजीशन पॉइंट्स नहीं थे, बट स्टिल मैनेज टू बी ऑन टॉप विद 20 finish points, a total of 34 points. And guess what, Shadow, Bleed and Daddychill are currently are on tie in second and third position. 34 points to both of them. Team Nox at 33 points, and we've got Team B4M with 33 points and Nox with 30 points. काफी कम स्कोर पॉइंट डिफरेंस है यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं बात करना चाह रही थी तन्वी की, गॉडलाइक इतना ज्यादा मेजर पॉइंट डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं कि #1 को जो पोजीशन, टॉप पोजीशन, वो उनसे छीनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट पोजीशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दे आर स्टिल अप फॉर कंटेस्टेशन, बिकॉज जैसे कि आपने बोला पॉइंट डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। नॉक्स के बीच में एंड ब्लीड के बीच में सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है। एनीथिंग कैन हैपन, दे कैन टॉपल ओवर ईच अदर। तो वो जो स्लॉट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ का प्राइज मनी का, वो अभी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल है। वी कांट प्रेडिक्ट कि कौन सी टीम सेकंड पोजीशन पे आने वाली है, बट आई थिंक गॉडलाइक अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो आई थिंक उनका टॉप स्पॉट लेना बहुत ही मुश्किल है। यस, वेल अगर उनको थोड़ा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। वैसे ऑलरेडी 3 मैप्स हो चुके हैं एंड दे हैव more score points in their hands. I think around 30 points का difference है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में, रफली बता सकती हूँ मैं। So even if Godlike loses or gets eliminated way too early in one map, they still have a chance to be on top. And the only team which is close to beating Godlike is Team Bleed and Daddychill, but वो खुद टाइप है सेकंड और थर्ड पोजीशन में. So now it's going to be the fight for the top position. अभी होगा असली डील चालू, because we have the last 2 maps for the day and only 2 maps बचे हैं, Vikendi and coming back to the basic map Erangel. No, although I'm very excited for map of Vikendi, as I told you, Sandhawk और Vikendi 2 मैप थे जो में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तो Sandhawk का एक अच्छा हैंग आ चुका है मेरे को कि कहाँ ज़्यादा ड्रॉप लोकेशंस होते हैं और what is the probability of the circle ending up in the southern side. But आगे जाके Vikendi के बारे में any stats you would like to tell us about Vikendi? Anything special about Vikendi apart from it's an ice breaking map? वेल वीकेंडी की अगर बात करें तो काफी टाइम से कम्पिटिटिव सिनेरियो में वीकेंडी नहीं रहा है। उसके पहले जब हम वीकेंडी देखा करते थे, बहुत सारे वाटर सर्कल्स बनते थे। इनफैक्ट फर्स्ट सर्कल ही इतना एक्सट्रीम बनता था कि 50 या 40% ऑफ द एरिया जो है वाटर एरिया होता था फर्स्ट सर्कल का। तो देखना पड़ेगा अगर वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज दैट मेक्स थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑलमोस्ट सिर्फ 50% लैंड एरिया है आपके पास खेलने के लिए, उसी में 64 प्लेयर्स का आना एंड उसके बाद सर्कल का श्रिंक होना बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। बट लेट्स सी क्या इस बार वीकेंडी में भी हील बैटल का मेटा हमें देखने को मिलेगा। पता तो नहीं है, बट मैं वेट तो कर रही हूँ कि फिर वीकेंडी मैप में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा देखने के लिए मिले। अब मेरे लिए तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है, सो लेट्स सी कि कितना अच्छा इंप्रेशन, मतलब कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ये प्लेयर्स मुझे वीकेंडी के मैप के बारे में। Although I heard कि वीकेंडी is not very good for vehicles and garages, मैंने सुना कि काफ़ी कम vehicles होते हैं वीकेंडी में, at least few points that I've pointed out, and इतना ज़्यादा भी वाटर एरिया नहीं लग रहा है मुझे। इट्स अ वेरी पैक्ड मैप विथ ओनली फ्यू एरियाज विच हैव वाटर, सो इट शुडंट बी दैट हार्ड दिस मैप। ओनली place, especially places like
Goroka should be tensed for the heavy loot and Volnova. और यूजुअली शैडो जी यहाँ पे सर्कल कहाँ बनता है? मुझे इस मैप का सर्कल के बारे में इतना पता नहीं है. वही मैं बता रही थी लिखा कि यूजुअली वीकेंडी में क्या होता है, एजेस के अराउंड सर्कल बनता है. तो फर्स्ट सर्कल का मेजर पार्ट जो है वाटर रहता था पहले. अब क्या ट्रेंड है, कंपेटिटिव सिनेरियो से वीकेंडी कंप्लीटली आउट था. आई एम वेरी श्योर प्लेयर्स भी थोड़ा सा एक्शन वीकेंडी का मिस कर रहे हैं. दे आर नॉट यूज्ड टू वीकेंडी सो मच जितना वो सेनॉक, मीरामार एंड इरांगल के बारे में अवेयर है. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा. एंड वीकेंडिंग की एक स्पेशलिटी होती है कि एडजेसेंट कंपाउंड में आपकी एनिमी टीम होगी एंड दे आर नॉट पिकिंग अप फाइट्स. काफी देर तक हम देखते हैं कि उन्होंने अपने प्लेस होल्ड करे हुए हैं एडजेसेंट कंपाउंड्स में एंड दे आर नॉट पिकिंग अप फाइट्स एट ऑल. तो वो चीजें की बहुत ज्यादा वीकेंडिंग में आ जाती हैं क्योंकि बहुत लाइक व्हीकल ऑल्सो आपने बोला व्हीकल से रोटेशन लेना भी इतना ज्यादा आसान नहीं रहता है वीकेंडी में. वो भी एक फैक्टर आ जाता है. बट मेन स्पॉट हमेशा से कॉस्मोड्रोम चर्च का जो एरिया होता था वो रहते थे. तो देखते हैं किस तरीके से जाता है. पहले वीकेंड में बहुत ज्यादा हील बैटल्स देखने को मिलते थे बट वो मेटा कंप्लीटली सेनॉक में आ गया था. सो इस बार वापस से वीकेंड में देखने को मिलेगा या नहीं. एंड एग्रेशन की अगर बात करें, गॉडल व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो क्या करेंगे, एग्रेसिव या पैसिव? आई थिंक वो लोग अभी थोड़ा पैसिव खेलेंगे. 2 मैप उन्होंने एग्रेसिव खेल लिया था बट तीसरे मैप पे उनको एकदम से समथिंग unexpected happened and they couldn't retain as a team together. Rebel was left all by herself. So I think this map they should concentrate on retaining their first position and by not giving kills to the other teams. They should be very focused on अपने rotations. हम साथ साथ है तो अच्छे रहे. This is what I want to tell. Although I am not that great with Hindi के दो है या I watch a lot of Bollywood movies, so one of the reference that I dropped down. But I guess it's gonna take us a little longer than we expected for the Vikendi map to come in. So before we jump into the map of Vikendi, me and Shadow will take a short break and we'll come back with the lobby rating.
gentlemen, welcome to Femstars 2022, brought to you by Immortal Esports and Playtoniaesports as the associate partner, Houseofesport as an associate partner, and SportsKeeda as the media partner. My name is Shadow, and alongside me is lovely Elika. Not this side, this side. No, this side. Yeah, this side. Yes. Well, thank you for the warm welcome. Although we are already done with 3 matches for the day. Also, a quick recap. Let's do it for the audience. On the first match, we saw Godlike taking away the chicken dinner. On the second match, also we saw Godlike take away the chicken dinner, which made Daddychill get the chills in the hands, and they broke the momentum of Godlike in the third map of Sanok, and they took the chicken dinner away in hands. But despite of so many chicken dinners happening from Godlike, they are currently in the first position and they are retaining that position. On the second, we have team Bleed, if I'm not wrong, and continued by Nox and the rest of the teams. You also have B4M, who are currently on a rule about kills. 14 finishes they got in the last game. So I think pretty impressive number of finishes coming in through. And also, to everybody who's watching there, you're watching a female-based play tournament in the occasion of Women's Day, hosted by Immortals India and along with our other brand partners. And today, it's a best of 5 series. We've already finished 3 maps, and the next map is going to be map of Vikendi. And as we were discussing, it's a very risky map, to go around, take rotation with vehicles. But do you think it is suitable for snipers? Vikendi. I think you can. Obviously, if you are holding on to the compounds, you can go for the sniper. Sanok is a map where you can't go for the sniper action so much, but in Vikendi you can definitely go for it. But somewhere that has been missing. The sniper meta is missing from every single game. But we saw Evil take that beautiful Car 98 shot in Miramar, of course. So maybe we can see a bolt action this time in Vikendi. But let's see what Vikendi is going to hold on to, because like I said, it has been missing from the competitive scenario from a very long time. It's new for the players also, and for us also, that what new this time is coming up in Vikendi. Yes. Well, I'm although very much excited about Vikendi. And most of the times it is, as we were speaking about the circle as well, as you said, it is most likely to be seen in the centric. I mean, at least according to what I know, it's a little central based circle. I want to see something different in Vikendi, since I'm about to make my first impressions on Vikendi. Maybe shift towards complete northern side or complete southern side would definitely add more more masala into the game, that players have to take longer rotations and make more efforts in order. And Shadow, what is your overall experience on the map of Vikendi? And when I first, off the camera, when we were speaking about the maps we have, when we said Vikendi, your reaction was not so delightful. Like, why is that? I don't like Vikendi. I never go and play Vikendi because somehow I think it is missing. Sanok is fast-paced, Miramar is slow. Vikendi is like the circle. When I used to play, the circle used to play its own game. That's why I never liked Vikendi. But right now, Vikendi is live on our screens. The flight path is pretty much the same. Teams will be happy. It's going from Dino Park towards Peshkova. So let's see which team is going to be dropping in where, and Castle is the area. Prime area. Let's see which team is going towards the castle, because Ilika, I'll tell you, castle is a hot drop. It definitely looks like it is a small deserted island we have between 2 islands. Okay, let me check if there are any teams going over towards castle. I'm quite not sure about it, but a lot of players have taken drop over towards Dino Park Villa. And I don't see anybody moving over. We could see one team move, that is B4M, moving towards winery, and the plane path pretty much looks diagonal for me. Not much interesting drop locations coming in through. Although multiple teams are moving forward for Hot Spring, Cantra, and Castle actually. Is there any team? No team actually dropped at Castle. Okay, this is a surprise for me. Maybe due to the reason that it could be a crash
क्रैश लैंडिंग दे डिसाइडेड नॉट टू टेक इट, बट आई गेस मेरे को ऑलरेडी एक यहाँ क्रैश लैंडिंग दिख रहा है गॉडल की टीम के साथ साथ एक और टीम है जो क्रैश करने वाली है नियर बाय द टावर. देखते हैं अगर इफ इट्स गोइंग टू बी इन द फेवर ऑफ गॉडल और द अदर टीम. And speaking about B4M, they were about to go to Dino Park, but they switched it and they took a drop over towards Milner. Southern eastern side पे काफी crowd है. Shadow, at this point, within the next 1 minute, the first blood will arrive and the fight will begin soon. वेल डेफिनेटली एंड वीकेंडी की एक और स्पेशलिटी है एसएमजी का बहुत ज्यादा यूज हमें वीकेंडी में देखने को मिलता था पहले से ही. एंड अब तो यूएमपी 45 जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, इट्स गोइंग टू बी प्रीटी मच इंटरेस्टिंग. गॉडल की टीम यस ड्रॉप लोकेशन क्लैश हो रहा है वॉल्नोवा में, दूसरी टीम है, बट आर दे गोइंग टू पिक द फाइट बिकॉज वॉल्नोवा इज अ अर्बन सिटी. आप इजीली फाइट से बैक ऑफ कर सकते हैं, बट गॉडल जिस तरीके से हमें पता है एक एग्रेसिव टीम है, दे आर नॉट गोइंग टू शाई अवे फ्रॉम द फाइट्स, दे आर गोइंग फॉर द लूट. बेसिक से लूट लेने के बाद डेफिनेटली वो फाइट के लिए जाएंगे. बट ओपोनेंट टीम की अगर बात करें बीएल के स्क्वाड का, क्वेश्चन इज आर दे गोइंग टू गो फॉर द फाइट या यहाँ से इजीली फ्लैंक करके सेफ्टी की तरफ मूव कर जाएंगे, वो एक क्वेश्चन रहेगा. एंड एलिका जिस तरीके से हमने टीम्स को ड्रॉप करते देखा, सदर्न साइड पे बहुत सारी टीम्स ने ड्रॉप इन किया था, एंड अगर सर्कल उनको फेवर करता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज जरूर रहेगा उनके पास. यस, आई डोंट थिंक यहाँ पे टीम्स को जाके फाइट लेनी चाहिए. यहाँ पे बीएल की टीम तो काफी टाइट पोजीशन में है शैडो, बिकॉज इफ दे वांट टू वॉक आउट और टेक अ रोटेशन दे कैन नॉट विदाउट गेटिंग कॉट इन द आईज ऑफ टीम गॉडल. एंड गॉडलाइक तो पिछले गेम के बाद दे ऑलमोस्ट मिस द बूये, सो दे विल बी वेरी पिस्ड ऑफ ऑन दैट फैक्ट. They would love to initiate a fight, they would love to retain on those finish points. But let's see, Zahari also has a good view of where team Gordon is and their compound. But ये काफी close quarters लग रहा है Shadow. If the fight begins, then one team will get eliminated. It's very hard to dodge the fight and move in the opposite direction. I agree. इतना easy नहीं रहेगा कि you can dodge the fight and move towards safety. But stand still situation जरूर आ सकती है. But I can see on the mini map 350 मीटर करीब जोन है इनसे, तो इनको जल्दी यहाँ से मूव करना पड़ेगा. फर्स्ट सर्कल का एग्री आप डैमेज ले सकते हैं. सेकंड सर्कल के लिए आप चाहेंगे कि एक अच्छा स्पॉट, एक अच्छा कंपाउंड वीकेंडी में ऑलरेडी अपने लिए ले लें. दूसरी तरफ अगर बात करें ब्लीड की टीम यहाँ पे फिलहाल है, इन्होंने स्पॉट जरूर किया है विंटर की टीम को, लेवलएक्स विंटर की टीम को. फाइट अभी तक इरप्ट नहीं हुई है, कोई शॉट्स फायर नहीं किए गए हैं. दे आर जस्ट वेटिंग कि प्लेयर कोई ओपन में आए एंड तब शॉट ले, ताकि एक नॉक एंड कंफर्मेशन साथ में आ सके. एंड सोबिल इज एग्जैक्टली डूइंग दैट मिस्टेक. BleedESP डॉली शॉट लेने थे वहां पे, she didn't take the shot. Maybe she was not sure कि नॉक ले पाएंगी कंफर्मेशन, और maybe she was looking somewhere else, but she literally missed सोबिल over there. बट एक अच्छा पोजीशन अभी भी उनका है. अगर दोबारा से सोबिल ओपन में आती है, बहुत इजीली नॉक एंड फिनिश आ सकता है. डॉली की भी अगर बात करें, पोजीशन होल्ड किए हुए, बट आई थिंक अब तक शायद विंटर एक्स को कोई आइडिया नहीं है कि आसपास कोई एनिमी है वाटर स्प्रिंग्स में. I mean, I don't think she has an idea, because अभी तक होता तो या ही वो बैकअप को बुला लेती थी, नहीं तो वो रोटेट कर लेती. बट इफ शी इज स्टिल कॉन्फिडेंट इनफ टू गो अहेड एंड पिक अप अ फाइट, देन शी कैन गो अहेड. बट विंजो की टीम है यहाँ पे, दे आर वेरी क्लोज टू बी टेकिंग अ फाइट अगेंस्ट टीम ब्लीड. एंड टीम ब्लीड हु करेंटली आर इन अ वेरी गुड पोजीशन ओवर द लीडर बोर्ड, उनके अगेंस्ट फाइट पे विन को काफी एडवांटेज होने वाला है. दे कैन एक्चुअली क्लाइंब अप द लीडर बोर्ड effortlessly. They're also making team bleed not get any points and also secure some points for themselves in case if they take the fight and it goes into their favor. But they should not be playing split game like this. They should stick together and play. अभी जैसे कि आप देख सकते हो, विंजो लेवल और दूसरे टीममेट, only they both are pushing, the rest two are in the back end. But what if the entire 4 squad goes against the 2 players? Then I guess man advantage तो नहीं हो सकती है. So since keeping this in mind, they have to be very careful. And BleedESports, they're currently in a very small compound, so not
very long until they come back, come out and push on towards जी हाँ, अगर वहीं अगर बात किया जाए विंज़ो की, शॉट्स ज़रूर फायर हो रहे हैं, बहुत अच्छा फील्डिंग यहाँ पे जो है रोटेशन लेके विंज़ो की टीम ने लिया है, बहुत प्यारा नॉक यहाँ पे आईसी पे निकालते हुए विंज़ो लेवल एक्स। एक इनिशियल नॉक यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ग्रेनेड्स का यूज हमें जरूर देखने को मिलेगा, एक और अगर नॉक यहाँ पे आता है इस ग्रेनेड से, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चांस कि वो डायरेक्ट उनके कंपाउंड पे रश कर सके, बट आई थिंक दे आर गोइंग सुपर एग्रेसिवली, उसका प्राइस पे यहाँ पे करते ज़ारा बिना बैकअप के मूव कर रही थी, नॉक इंस्टेंट होती है, एक और प्लेयर टॉक्सी लेवल एक्स यहाँ पे नॉक होते हैं, थिंग्स आर टर्निंग अराउंड फॉर लेवल एक्स, एंड एक और ब्लाइंड रश, जोरी भी नॉक यहाँ पे जो है होते हुए दिखाई देंगी, सोबिल लास्ट प्लेयर रिमेनिंग अपनी टीम को बचा पाएंगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आईसी इज स्टिल डाउन, डॉली इज मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट प्लेयर ऑफ विंजो, एक क्लच यहाँ पे जरूर निकालना पड़ेगा इनको, एंड क्या कर पाएंगे, शॉट्स थोड़े से यहाँ पे मिस हुए थे डॉली पे, बट डॉली इज नॉट मेकिंग ए मिस्टेक, शी इज बाइंग सम टाइम ताकि उनके टीममेट को रिवाइव मिल पाए, बट इंस्टेड ऑफ द रिवाइव दोनों प्लेयर्स यहाँ पे डायरेक्टली सोबिल के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड डॉली विद दैट यूएमपी 45 रीलोड पे जाएंगे, एंड लेट्स सी नॉक यहाँ पे कर पाएंगे, फिनिश कर पाएंगे, एंड शी डज दैट, बहुत मिस्टेक्स यहाँ पे जो है विंजो लेवल एक्स की टीम से दिखाई दिए, सोलो रश, अकेले अकेले प्लेयर्स रश कर रहे थे, एंड टीम ब्लीड कैपिटलाइज्ड ऑन दैट. Yes, and they have optimized the situation, they turn it into their favor, and they played it out very well. Team Bleed making a very exceptional gameplay, 4 finishes in the hands, and Team Nox, पता नहीं कहाँ गलती हुआ और कहाँ पे they took a wrong step. It could have been their game, it could have been their finish, but Team Bleed, as aggressive as they are, happily we are taking out that 4 finishes in their hands. First team has been eliminated. We've got Team NP, NP Pancake and Flow currently going somewhere near to Team Bleed, but not for long until they rotate. Well, they are rotating, and इसी के साथ हमारा पहला स्क्वाड वाइप आते हुए विंटर लेवल एक्स. व्हाट इज हैपनिंग, मैच 1 में बहुत ही शानदार शुरुआत, एंड मैच 4 तक आते आते सबसे पहली टीम बन गए एलिमिनेट होने वाली, बट नेवरदलेस 15 टीम्स 59 प्लेयर्स आर स्टिल इन द लॉबी. ब्लीड की टीम की अगर बात करें, बीएनडी के स्क्वाड के पास आ चुके हैं, आज बहुत ओपन में थी, उसी का पनिशमेंट यहाँ पे भोगते हुए नॉक एंड फिनिश उनको यहाँ पे कर दिया गया. पिक्सो पे जरूर शॉट्स आए थे, डैमेज मिला है, बट शी कैन हील अप रियली फास्ट. कुहू इज बैकिंग अप हिज टीम, हर टीममेट्स, आई एम सॉरी, एंड एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे कुक होते हुए दिखाई दे रहा है. आशी की अगर पोजीशन देखें ना, इलिका बहुत अच्छा पोजीशन है, इशिका को यहाँ पे नॉक कर सकती है क्या, इशिका ने एक गलत पीक यहाँ पे लिया तो, एंड बीएलडी बहुत ज्यादा एरिया नहीं है खेलने के लिए, बट ब्लीड की टीम जिस तरीके से पोजीशन लगा रखी है अभी, बहुत अच्छी पोजीशनिंग है, दे कैन विन दिस फाइट, थिंग्स आर लुकिंग इन देयर फेवर कंप्लीटली. एंड दूसरी साइड से अगर बात करें, 2 प्लेयर्स रश कर रहे हैं, आशी यू बेटर नॉट गेट नॉक डाउन, अदरवाइज बीएलडी विल बी इन अ एडवांटेज पोजीशन. Yes, but I guess the fight will eventually proceed through. Bleed की टीममेट एक प्लेयर तो रुक ही नहीं रहा है, because it's a fight against BLD, Bleed versus BLD. इशिका राइट साइड की तरफ से इनिशिएट करने की कोशिश कर रही है, but Pixo has already spotted out one of the players, a beautiful shot, but does not get any damage through the grenade. Although Nora on the other hand is stuck down to very low HP, she gets spotted out in the open. बेकी के ऊपर नॉक चले जाते हैं और कंफर्मेशन भी थोड़ी ही दूर में है. ESG ये मजा ले रही है, उनकी थर्ड पार्टी की फाइट है ये, वो टीम ब्लीड esports और BLD के थर्ड पार्टी है. ESG have got a knock on to Becky, but right now team bleed, they are at a very low HP. Although Kuhu will be coming back on her feet, ESG they will be rotating off to a little safer angle so that they don't get spotted out by Bleed esports and BLD. But BLD, considering BLD's position, I think it's very weak right now. ESG, although they managed to get one finish in their hands in Team Bleed, Iris की position देखो, Iris is just standing behind Team Bleed. All he has to do is wait for the time. Team Celcius, they are trying to be very aggressive. Blink, although gets knocked out, we've still got 3 players, Woman, Yumiko and Inath. They have to give cover towards Blink. And yup, T-Woman comes down for the cover, and
पैनिक के टीम जो है वो थोड़े फॉल बैक हो चुके हैं. सो आई थिंक विदाउट एनी एफर्ट्स Celcius can come back on their feet. Well, Celcius can and Blink is almost back on our feet, but Panic की टीम जिस तरीके से उनके पास मूव करते हुए दिखाई दे रही है, यूमी को ग्रेनेड के द्वारा ट्राई कर रहे हैं उसको रोकने का, बट पैनिक G2 एक नॉक निकालेंगे. यूमी का ऑल्सो गोज डाउन एंड Celcius के 2 प्लेयर्स अभी फिलहाल बचे हैं. कैच वुमेन की अगर बात करें, ब्लिंक पे रिवाइव के लिए जाते हुए दिखाई दे रही है. रिवाइव ऑलमोस्ट हो चुका है. ओनली 1 प्लेयर इज डाउन, बट पैनिक इज बीइंग सुपर एग्रेसिव राइट नाउ. 2 फिनिश पॉइंट ऑलरेडी उनके हाथ में. स्पाइसी ओपी काफी एग्रेसिवली जाना चाहेंगे, ब्लिंक को नॉक करेंगे एंड इसी के साथ उनको इंस्टेंटली फिनिश भी करेंगे. एंड Celcius की टीम यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए 15वें पोजीशन पे. वेल, टीम पैनिक फाइनली गेटिंग अप, Elika, because I remember Panic was not having a good day at all. Now they have got 4 finish points in their hands. Maybe this could be the time वो leaderboard में थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेंगे. दूसरी साइड हमें फिनिश फीड में गॉडल का नाम भी दिखाई दिया था अभी. हाँ, मुझे तो दिखा था, बट एक टीम जिसके बारे में मुझे चिंता है वो है फिलहाल के लिए चेरिसा की टीम. That is Fineapples, who are currently in the damage zone. By the time they make it to the circle, I think they will have enough HP. I mean enough damage done to their HP already. Godlike की टीम अभी भी AG की टीम के बाजू में है, but Godlike definitely will have the advantage. Will have the firepower advantage at least, I should say. And as we speak about the devil, there comes Alpha Didi, already trying to spot out few of the players from AG. But AG is only left with 3 players. Okay, something that I did not expect. But God Alpha, they don't have much finishes to their name. Only 1 finishes. So, which means Godel will be concentrating more on finishes in this map. मुझे ऐसे क्यों लगता है कि Godel's best map नहीं है Vikendi, because their rotations seem very like questionable to me. Previously they never had to take the initiate fight. They were playing it very safe, but they are getting too aggressive now. Yeah, not questionable. वो एज से फिलहाल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक नॉक जरूर यहाँ पे यूनी पे निकाला है एंड एग्रेशन उनका अभी भी नहीं रुक रहा है. बट अल्फा दीदी यहाँ पे जो है नॉक हो चुकी है अलिका, एंड रिवाइव नहीं मिलेगा. काफी दूर यहाँ पे थी एंड वीकेंडी में इतना दूर अपने प्लेयर से अगर हो बैकअप नहीं मिलेगा, उसी का हुए. बट एजी की टीम भी बहुत अच्छे स्पॉट में नहीं है. 2 ही प्लेयर्स बचे हैं सिर्फ. जी, 2 ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, बट क्या वो कितना फाइट कर पाएंगे वो तो हमें पता नहीं है. डिलीना और निको दोनों बचे हुए हैं. दे आर ट्राइंग टू गेट देयर टीममेट्स बैक ऑन फीट, बट रोफ्लो has already been put back. Alpha Didi unfortunately confirm हो चुकी है, which puts only 3 players in hands of Godel. But they have 3 finishes. They got 2 more finishes, which is a brighter side. They only have 1 more player left in the team of AG. That is Emin. Currently they are pushing against Emin, and within no time Emin will also be getting confirmed. काफ़ी बढ़िया गेम प्ले किया है यहाँ Emin ने. पूरा स्मोक्स डाल के उन्होंने एक पाथवे ही क्रिएट कर लिया है Emin ने. But I think she will be getting spotted out. And there you go. Smoke पे से through fire खाया उन्होंने, and there comes the confirmation. A total of 4 finishes, 13 teams alive, and grenade kills coming in through on the other side of the map जहाँ पे fight हो रहा है. जी हाँ बिल्कुल. गॉडल ने एक प्लेयर यहाँ पे जरूर गवाए हैं, पर 4 फिनिश पॉइंट्स अपने लिए निकाल लिए हैं. एज ऑफ द सर्कल पे फिलहाल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. एनपी की टीम की भी अगर बात करें, एक प्लेयर गवाया बट 2 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी दे हैव अर्न्ड फॉर देमसेल्फ. Decent spot. But talking about the winning team of the previous game, team Daddychill, well, they have a compound for themselves. They are not being super noisy right now in this situation. They are just trying to spot down the nearby enemies. Nearby vicinity में कौन कौन है, क्या rotations हो रहे हैं, वो बस उस पे नजरें रखे हुए हैं, because they are in the circle. They don't want to miss out on the compound. दूसरी तरफ एक्सेप्शन esports की तरफ से कुछ अच्छे ग्रेनेड्स हमें फिनिश फील्ड में देखने को मिल रहे हैं एंड कनेक्ट भी होते हुए दिखाई दे रहा है. लेट्स सी एक्सेप्शन वापस से एग्रो मोड जो है, एग्रेशन उनका वो दिखाई दे रहा है. बट एक्सेप्शन की अगर बात करें, एक ग्रेनेड रिद्धि की तरफ से, एक ग्रेनेड चाहिए सिर्फ यहाँ पे प्लेयर को नॉक करने के लिए, फिनिश करने के लिए. एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे नॉक हो चुका है. पैनिक की टीम वापस से 2v2 स्प्लिट. इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम बिकॉज जिस तरीके से ग्रेनेड्स यहाँ पे रिद्धि की तरफ से आ रहे हैं,
यूएमपी शॉट्स यहाँ पे फायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैनिक की टीम बहुत बड़े ट्रबल मैन, बैकअप नहीं आ रहा है। एलिका वापस से सेम प्रॉब्लम, बैकअप यहाँ पे नहीं आ रहा है। नॉक प्लेयर को रिवाइव मिल चुका है, बट थिंग्स आर स्टिल फॉलिंग अपार्ट फॉर पैनिक। यस, बट होपफुली दे विल बी बैक ऑन द फील्ड। बट पैनिक ने बहुत ही अच्छा डैमेज किया हुआ यहाँ पे रिद्धि पे। थोड़ा और अगर एक्यूरेट से शॉट ले ले तो रिद्धि कैन गेट नॉक्ड within no time. Panic, a beautiful grenade coming into the play. Hopefully it does some damage, but nope, unfortunately it does not. Riddhi in turn gets the backup and she will be healing herself and getting away from this position. Panic baby on the other hand, उन्होंने already compound के अंदर push कर दिया है. Panic already has 4 finishes in their hands, so they don't have to worry about pushing for finishes. All they have to worry about is the placement positions. Shadow right here. And I don't think Panic is a team who would, go ahead and push for kills. Well, they won't because they are in a little questionable position. And रिद्धि के जो ग्रेनेड्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, बाकी के दोनों प्लेयर्स को रिवाइव मिल पाया। एंड उसी का एडवांटेज यहाँ पे फिलहाल पैनिक की टीम को मिल रहा है। बट ब्लीड आईजीएल ईएसजी के प्लेयर्स को व्हीकल एक्सप्लोजन से नॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आईजीएल हैज बीन नॉक डाउन। कंफर्मेशन भी जरूर यहाँ पे लेना चाहेंगे। एंड पैनिक की टीम बीइंग द स्मार्टर वन, इस फाइट से वो बैक ऑफ कर रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर अ बेटर कंपाउंड बिकॉज थर्ड पार्टी भी यहाँ एनपी का स्क्वाड करते हुए दिखाई दे रहा था। थर्ड पार्टी एनपी इज नेवर अ गुड आइडिया। एंड रिद्धि की अगर बात करें, शी बेटर नॉट बी बर्निंग बिकॉज एक मोलोटोव है एंड ट्राई कर रहे हैं यहाँ पुश करने का। ब्लीड के प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, काफी अच्छा मोलोटोव यहाँ पे था। आशी इज ऑलरेडी डाउन, उनका एलिमिनेट भी यहाँ पे कर दिया जाएगा। 3 फिनिश पॉइंट्स टीम एक्सेप्शन की तरफ से। Yes, Team Exception looks like they have just started the game, but Team Gracie on the other hand, Gracie का टीम तो अभी तक कुछ movements नहीं किए हुए। We've been 10 minutes into the game. Panic has been doing great. They've been trying to spot players out. 4 finishes to their hands as we already spoke before. नॉक्स की टीम वहाँ पे बैठी है थोड़ी दूर पे एक्सेप्शन ईस्पोर्ट्स के पीछे, बट रिद्धि की पोजीशन रिवील हो चुकी है। पैनिक की टीम छोड़ ही नहीं रही है एक्सेप्शन ईस्पोर्ट्स। आई मीन द फैक्ट दैट एक्सेप्शन ईस्पोर्ट्स इवन स्टार्टेड द फाइट अगेंस्ट पैनिक, दे आर गोना पे फॉर इट आई बिलीव। पैनिक ईस्पोर्ट्स गोइंग सुपर एग्रेसिव अगेंस्ट एक्सेप्शन ईस्पोर्ट्स। Currently Snipe is down to very low HP. Riddhi is here to give the backup. The smoke is the only thing which is helping them currently. Well, the smoke is helping but not for very long because grenades यहाँ पे जो पैनिक G2 की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रैंडम ग्रेनेड था, कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम थी, बट वेल द गोल्डन हैंड यहाँ पे बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ एंड एक नॉक यहाँ पे जरूर आता है एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर पे। बट रिटेलिएशन में प्रतु भी पैनिक की टीम से नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज नो चांस ऑफ ए रिवाइव। एंड स्पाइसी ओपी की अगर बात करें, फॉलो अप ग्रेनेड्स यहाँ पे जरूर लेके आ रहे हैं, बट बीएल की टीम यहाँ पे पैनिक पे थर्ड पार्टी कर रहे थे। आई थिंक शी वाज गोइंग फॉर द फ्लैंक और अ स्काउटिंग एंगल, जहाँ पे उनको थर्ड पार्टी की वजह से नॉक किया गया था। बट एक्सेप्शन अभी भी उसी कंपाउंड में प्रेशर उन पे बनता हुआ। यस, प्रेशर तो जरूर बना रखेगा, बट ये गेम रिलेटिवली काफी स्लो जा रही है पिछले 3 गेम से। Finally gets spotted out and is almost getting confirmed by Riddhi. A beautiful spray coming in from Riddhi. Moving forward, Nox Archie is still playing all by himself with few little backup left. Bleed on the other hand, they're putting all the firepower out in the action. Team Panic lost 2 of the players, Baby and Pratu, both of them. Only G2 and Spicy OP are left, and they haven't got a single finish, but they lost 2 players in the last 1 minute, Shadow. And now they either have to take the fight against Exception Esports. But if you ask me, Shadow, I think they should rotate back. I think they should take 1 step back and move towards the center of the circle instead of, supporting the fights. Well, they should. Exception Esports की अगर बात करें तो उनके पास अभी ऑप्शन नहीं है बैकअप करने का। पैनिक की टीम यहाँ पे कर सकती है, बट पैनिक बहुत अच्छे तरीके से लेवलेक्स को नॉक करेंगे। स्नाइपिंग आल्सो गोज डाउन। बहुत प्यारा ड्रॉप शॉट यहाँ पे स्पाइसी की तरफ से आया था, बट स्पाइसी को भी यहाँ पे कीवी नूब रिटेलिएशन में नॉक कर देंगे। लास्ट प्लेयर पैनिक की टीम से G2 बचे हैं। रिद्धि को यहाँ पे नॉक करेंगे। दूसरी साइड रिवाइव होते हुए प्लेयर्स दिखाई
दिखाई देंगे एंड टॉक अबाउट द साउंड सेंस यहाँ पे बहुत अच्छा था। G2 जिस तरीके से मूव करते हैं उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। ऑलमोस्ट पैनिक की टीम ने ये फाइट अपने फेवर में ले लिया था, बट एक्सेप्शन will come out as a winner and सारे प्लेयर्स उनके फिलहाल रिवाइव हो जाएंगे, they will be again back in the game। बट फिलहाल यहाँ पे डैडी चिल की टीम क्लोज इन करते हुए शायद दिखाई दे सकती है। हाँ, well, slow and steady wins the game. That is what currently they are focusing on. And looks like Gracie DC, they are playing in a little sneaky. They have surrounded Team N Pancake and NP Pancake's team, but they have to be very slow before they even take the push in. Zone bhi aa raha hai, circle ke andar bhi jana hai. They have two responsibilities, Shadow, to fill in. And they have to choose right now. They either have to take the fight or make it to the circle. Which one do you think is gonna most probably happen? Because I think Neko ki team ki HP hai nahi, so they will be taking the fight against Team Neko. Neko is down to very low HP already, and the rest of the team looks very strong. Well, they certainly look very strong and इस टाइम पे एनपी की टीम या फिर डीसी की टीम दोनों ही इस सिचुएशन से बैक ऑफ नहीं कर सकते। दे हैव टू पिक अप अ फाइट, बट पैनकेक का पोजीशनिंग अगर हम देखें बहुत ही क्रूशियल रहेगा इस पूरे फाइट में। एक बहुत अच्छा ग्रेनेड नोरा की तरफ से यहाँ पे, ऑल्दो कनेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ, फॉलो अप ग्रेनेड जरूर जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट एबल टू फाइंड अ कनेक्शन। एंड एनपी पैनकेक बहुत ज्यादा इंटेल प्रोवाइड कर सकती हैं अपनी टीम के लिए। नोरा नूब डीसी यूएमपी के साथ काफी एग्रेसिवली पुश करते हुए दिखाई दे रहे अकेले बिना बैकअप के। आई थिंक शी इज वेटिंग फॉर अ बैकअप, एक टीममेट के साथ पुश करना चाहेंगे, बट फिलहाल के लिए चारों प्लेयर्स यहाँ पे ग्रेनेड के थ्रू एक कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एनपी के प्लेयर काफी ओपन में आए, मोलोटोव यूज किया, फोर्सिंग द प्लेयर्स ऑफ डीसी टू मूव अवे, अपने पोजीशन से उनको मूव करने के फोर्स करते हुए। एंड नोरा ट्राई कर रहे हैं, काफी ज्यादा डैमेज जरूर यहाँ पे ओपोनेंट को दिया है, बट नॉक यहाँ पे नहीं निकाल पाई अभी तक। हाँ, there is a little time left for them, but I guess these are the top 10 teams, and we have Norangu's team actually take NP teams down as they came to conquer the area. They are trying their level best, but Gracie goes down unfortunately, leaving 3 of the players from Enact's team still live up and running. They are taking the revenge, and they successfully have taken the revenge. Team NP Neko's team will go out of the server, leaving the last 9 teams in the 6th circle. We are gonna approach 6th circle and we still have 9 teams shadow. मतलब समझ लो कि वीकेंडी कितना लंबा मैप है, मतलब it's taking more than enough time for them to take rotations and even finish the fights off. Cover लेने के लिए काफी ज़्यादा properties है यहाँ पे, so I know the reason why weekend is taking so long. Well, it's a fight of compounds. It's a battle of compounds when it comes down to weekendy, and exactly वही यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। सर्कल के साथ टीम्स हमेशा मूव करते हैं, एंड एज ऑफ द सर्कल पे हमें काफी टीम्स अभी भी दिखाई दे रही हैं। डीसी की टीम की अगर बात करें, 3 फिनिश पॉइंट्स इनके पास जरूर देखने को मिल रहे हैं। वेरी गुड स्टार्ट, 3 प्लेयर्स हैं लॉबी में, 8 टीम 24 प्लेयर, अ गुड पोजीशन फॉर ऑल द प्लेयर्स। B4M की टीम की अगर बात करें, एक गेम में बहुत अच्छा एग्रेसिव परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आया था, बट वहाँ अगर इस पर्टिकुलर गेम में बात करें थोड़ा सा साइलेंट अभी है। गॉडल की टीम भी काफी ज्यादा साइलेंट है। ब्लीड की टीम क्लोजिंग करने का ट्राई करे, बट थोड़ा सा उनको लास्ट प्लेयर जो फाइनएप्पल के बच्चे हैं उनसे केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज द वे शी इज हाइडिंग ब्रीड की टीम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। आईजीएल की अगर बात करें, उनका पूरा फोकस कंपाउंड में जो टीम है उन पर है। दे हैव नो आइडिया इफ FA प्लेयर इज हाइडिंग। वहीं अगर डीसी की टीम की बात करें, दे आर मूविंग टुवर्ड्स कंपाउंड। खूहू को काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे रिसीव हुआ है। ही नीड्स टू हील अप रियली फास्ट, बट FA के लास्ट प्लेयर को स्पॉट किया गया एंड खूहू यहाँ पे नॉक हो चुकी है। एक clutch situation, will she be able to clutch it out? 1v3 situation, and the answer is no, she can't clutch it out. इसी के साथ Fineapple के players यहाँ पे eliminate होते हुए। Yes, not a very expected start or unexpected journey for them in the map of Vikendi, but
we still have the top 6 teams. Anakin is knocked down, which means Naz, DC, and Noranoob are the only players left for their team. They have to make their way in. And look at Team Bleed, 9 finishes and yet standing the same like how they stood when the map began. 9 finishes in their hands. And this time, Exception Esports is also putting in a lot of efforts. Shadow, they have 7 finishes in their hands, so I don't think they are taking this any light. वेल दे आर नॉट एंड गॉडल की अगर बात करें अभी भी एज ऑफ द सर्कल पे खेल रहे पूरा वीकेंड ही उन्होंने एज ऑफ द सर्कल पे खेला है दैट वाज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन एंड अभी भी अगर बात करें एक अच्छे स्पॉट में है नियर बाय अगर देखा जाए तो बीएल की टीम यहाँ पे जरूर दिखाई देगी बट सेंटर में एक और टीम है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने का ट्राई कर रही है बट वहीं डीसी के स्क्वाड भी फाइट लेते हुए क्लची स्मोक उनका पोजीशन रिवील हो चुका है एंड एक्सेप्शन की टीम की रिद्धि इज ट्राइंग टू टेक शॉट्स ऑन क्लची एंड काफी प्यारा नॉक यहाँ पे जो है स्मोक में निकालते हुए रिद्धि क्लची को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है लेट्स सी इविल का यहाँ पे क्या डिसीजन रहते हैं क्या वो रिवाइव के लिए जाएंगी अगर जाएंगी रिद्धि हैज हर आईज सेट ऑन क्लची एंड शी वुड बी एंटिसिपेटिंग कि कोई प्लेयर रिवाइव के लिए आएगा तो बहुत ही केयरफुली रिवाइव के लिए जाना पड़ेगा रिद्धि की अगर बात करें उन पे M24 बोल्ट एक्शन के साथ यहाँ पे इविल अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं अगर इस बार रिद्धि ने पीक किया तो चांसेस आर शी विल गेट द डैमेज मे बी नॉक भी हो सकते हैं एंड इसी के साथ चांस यहाँ पे रिबेल को मिल गया है क्लची को रिवाइव देने के लिए दूसरी साइड एक्सेप्शन बिल्कुल सेंटर ऑफ डेड स्मैक सेंटर ऑफ द जोन बाकी टीम्स एज पे अभी भी खेलते हुए बट उनके कंपाउंड पे अब खतरा मंडरा रहा है एक टीम ऑलरेडी पुश कर चुकी है दैट इज BL Yes, and there's not gonna be any stop coming in for these pushes. Team Exceptional Esports is gonna come out, but on the other hand, कुछ और ही कहानी चल रहा है. Team B4M, they are getting spotted out by Team Bleed, and BL की team काफी close है. लास्ट सर्कल है ये इफ यू आर नोटिसिंग शैडो लास्ट सर्कल पे 6 टीम अभी भी बचे हुए शैडो इससे ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग क्या ही देखने वाले हो एक्सेप्शन esports की किवी गेट्स नॉक्ड डाउन दे ओनली हैव 2 players left that is Riddhi and Levelx currently unfortunately as Levelx also gets knocked down it's only Riddhi who has the power right now who is currently in the first floor gets spotted also spots one of the players from Team Bleed that is Kuhu although Kuhu पे already knock हो चुका है Not yet, but अभी हो गया है confirmation भी जल्दी आने वाला है Team still has the man advantage they have 3 players up and running it's only Kuhu who is down but it's a 1v3 situation for Team Exceptional Esports Riddhi and I don't think they'll be able to handle it and अभी भी जिंदा है Shadow Godlike is still alive up and running but only with 2 players and as soon as I say that Rebel goes down Evil being the last player Evil has all the responsibilities currently in her shoulders. With these once again back in action, she gets 1 knock but not the confirmation. We have a total of 5 finishes coming in from Team Godlike and Evil and Rebel, they both are back on feet. Well, they certainly are, but this time Bleed Ashi has her eyes onto the players of Team Godlike, but Ashi के पास अभी और दूसरा job है, that is Exception Esports से deal करना because Riddhi is still alive. Bleed की team 12 finish points यहाँ पे निकाल चुके हैं, बहुत ज़्यादा aggressive stance. Exception के लिए भी बोलना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी, 9 finish points अपने लिए ले चुके हैं, and जिस तरीके से multiple fights यहाँ पे Exception ने निकाले हैं, that is quite commendable. Bleed and Exception both are having a very good outing. बट अभी उनके आसपास बहुत सारे स्क्वाड्स प्रेजेंट हैं दैट मीन सबकी नजरें उसी कंपाउंड पे रहेंगी मल्टीपल साइड से ग्रेनेड्स आ सकते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे होना पड़ेगा इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट कंपाउंड एंड स्पेशली इफ गॉडल इज आल्सो क्लोजिंग बाय ही विल बहुत क्लोज इन करते हुए दिखाई दे रहा है एंड ब्लीड डज हैव एन आइडिया कर्टेसी टू दैट स्मोक दे नो कि गॉडल की टीम क्लोज इन करने का ट्राई कर रही है ब्लीड की नजरें अभी बीसी की टीम पे भी जरूर दिखाई देंगी बिकॉज डैडीचिल का स्क्वाड भी बहुत नियर बाय प्रेजेंट है B4M को स्पॉट किया इविल ने शॉट लेती उससे पहले उनको नॉक यहाँ पे कर दिया गया दैट मींस रिबेल इज द लास्ट गर्ल स्टैंडिंग फ्रॉम हर टीम एंड लुक एट दैट एलिका कोई फर्स्ट एड नहीं है रिबेल के पास यस रिबेल के पास इतना ज़्यादा बैकअप नहीं है बट फिलहाल 2 प्लेयर्स के साथ भी दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव दे आर ट्राइंग टू मेक द
Impossible, possible again. Okay, I think Evil has also been confirmed, which means Rebel's the only player, like how we saw in the last game. I'm getting a lot of deja vu feelings about this game. Last game, by the time Godlike even walked into the last circle, it was already down to like one person, that was Rebel all by himself. वेल रेबल अकेली बची हैं बट ब्लीड उनका एग्रेशन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले 12 फिनिश पॉइंट्स एंड आशी जिस तरीके से ग्रेनेड कुक करी है आई एम वेरी श्योर शी कैन फाइंड अ कनेक्शन बिकॉज उस वेयर हाउस में फिलहाल प्लेयर्स जरूर प्लेस्ड हैं फर्स्ट एड भी अगर हम देखें ब्लीड की टीम के पास काफी सारे फर्स्ट एड हैं आई एम सॉरी बीएल के स्क्वाड के पास एंड दे आर होल्डिंग ऑन टू दिस एरिया अपना जिस तरीके से क्रॉस फायर सेट किया हुआ बीएल के प्लेयर्स ने दैट इज क्वाइट अप्रिशिएबल वहां रश करना ब्लाइंडली इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रिद्धि यहाँ पे आशी को नॉक जरूर करेंगी कंफर्मेशन ले पाएंगी एंड यस कंफर्मेशन भी यहाँ पे आते हुए रिद्धि अकेली बची हैं बट शी इज नॉट स्टॉपिंग 10 फिनिश पॉइंट्स आ चुके हैं शी इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द फाइट्स वो बहुत इंप्रेसिव मुझे यहाँ पे लग रहा है एक्सेप्शन की टीम से आई थिंक रिद्धि इज वन ऑफ द स्टार प्लेयर आई हैव नो डाउट बट ब्लीड 2 प्लेयर्स बचे हैं कंपाउंड है ऊपर रिद्धि है थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा Yes, that is there definitely. थोड़ा केयरफुल से ज्यादा ही होना पड़ेगा हम 9th सर्कल पहुंच चुके हैं Shadow, this is the longest I've seen a BGMI game in my experience and abhi bhi 5 teams alive. How is this even possible, Shadow? 5 teams. There are 2 players from Bleed available and Godlike has been confirmed and eliminated. And there comes Nasty team DC say who managed to get 3 who managed to get actually 3 finishes to their team and Riddhi has more than 10 finishes to herself. Riddhi XC gets knocked down by the play zone. Unfortunately, Felicia gets taken down by Rebel. But will Rebel confirm is my question. Even if Ankin will get his father on feet, I'm sorry. What is the match has ended in a blink of an eye. Aggression. Yeah, there was so much aggression, Elika. It's not your fault. Everywhere fights were erupting, heal battles were going on. The last player of Daddychill was going for the heal battle and she definitely won that. But the winner, the chicken dinner team is BLX officials. And I have to say, Elika, that was quite aggressive gameplay. आज के दिन का सबसे most aggressive final circle I think weekendy के थे. Yes, not only the aggressive circle, but the circle which did not end. If it was not the game, I think the circle would have gone till 10th or 11th circle because we had 5 teams in the last circle, Shadow. That is the longest amount of time that I've seen a game go. And I guess that is the reason, BLX also took the advantage. They went ahead and they got their advantage. They didn't even take the fight in the last, I think, 1 second. They just waited for the opponent, the circle to start closing in. And eventually, Team BLX officials have won the chicken dinner of the 4th map for today. That is Vikendi. वेल फोर्थ मैप इस तरीके से अगर जाएगा तो लास्ट मैच किस तरीके से जाएगा फाइनल सर्कल्स में बिकॉज टीम्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आ गई थी फाइनल सर्कल्स में एंड जिस तरीके से फाइनल फाइट्स उस कंपाउंड के इर्द गिर्द ही हो रही थी बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस कंपाउंड में एंट्री लेना स्पेशली जब 3 टीम्स हैं and this time team bleed my god 12 finish points team exception also 10 finish points for them बहुत ज़्यादा aggression हमें बाकी टीम्स से भी देखने को मिल रहा है Yes, बाकी टीम्स ने भी खूब अच्छे से परफॉर्म किया है especially I want to talk about team Godlike even though with 1 player फिर से Rebel was the last player standing if I'm not wrong and I think their team had 10 finishes right Shadow 10 finishes and apart from that team even team Bleed had more number of finishes this time no not team Bleed Exception Esports I was talking about Riddhi who was the lone wolf over there but she managed to strike as many as she could I'm really surprised by all the teams matlab
Look at the series. We started off with Erangel, and then we had two maps of Godlike coming in, one map of Daddychills, one map of BLX. But what has changed is the gameplay. The standard has highly developed from one map to another map. In one map, we had 20 finishes only by Godlike, but in the next map, some other team is taking the initiative. Every map, the one or the other team is trying to get as many finishes as possible. This explains how women are adapting in esports, how much pressure can women take in esports, even though they know it's an event, it's a streaming event, everybody is watching you on the screen, but yet they kept their calm and finished the tournament. Even if there was one player standing at the end of the circle, they still were fighting till the last second. Well, Riddhi is certainly an example. Rebel is also an example. They were the single player of their team, and they were standing very strong even as a solo player. Also, Riddhi being the solo player even went for a finish point in the end before the circle closed in. I think that finish point was an Ashi of Team Bleed. Yes, she was not stopping, she was not shying away from any fight, and I'm very sure with this event, Riddhi's talent has been showcased. Goddess of Team Nox also. So many more players I came to know about that they are doing phenomenally well. They have the talent, they have the skills, and I'm very sure they are going to do much better in the upcoming events also. I just hopefully think that these players, whoever are currently playing, they do not give up until the very last map that we have, the map of Erangel. Although we have to wait before we actually jump into the map of Erangel. And any predictions and expectations that we are already done with the 4 maps for today? Just the aggression. It doesn't matter you win, you're in the hashtag 1 position or hashtag 10 or hashtag 15. It's the individual game. Make sure the match counts, the gameplay of the last game counts, and you have the best of the best performance. So exactly that what I'm hoping for. But Alika, let's have a look at the scorecard because I can't wait for it. Which team got how many points? Let's have a look. And Team Bleed officials are on the top with 18 points and 12 finish points. And look at the placement points. 6 placement points only for Bleed officials. Exception also only 8 placement points but 10 finish points. My god, that is a quite impressive performance. I think this was one of those maps where every team, most number of teams gave their best, and that is why we don't see a one-sided high amount of numbers coming into the scorecard, but we have it evenly distributed. 18. 3 teams tied in the first position: Bleed, Exception, and BLX officials. All the BLX officials got the chicken dinner. Everything else seemed to be in place. Godlike, irrespective of anything, they are currently in the 4th position. 7 finish points, 10 position points, and total of 17. Again, they are tied with Daddychill. Oh my god, the top 5 positions are completely tied with each other, which means this map brought the most potential of brought the potential of most of the teams. Just have a look at the level of competition. Top 3 teams, like you mentioned, tying on 18 points, and they are nowhere near to 3rd position. Also, Bleed 6 placement points, still having 12 finish points. Last I saw that kind of performance was from Team Nox. They got 1 placement point and 7 finish points. I think that was Senok. And this time Nox is not having best of the outing, but other teams, Bleed, Exception, a very good performance. Godlike was relying heavily on the placement points, considering the fact कि Rebel अकेली बची थी last में. Nothing to complain. 7 finish points तब भी उनके पास दिखाई दे रहे हैं. 17 points, सिर्फ 1 point का difference है. यहाँ पे पूरा game जो leader board का है जो change हुआ है because of the finish points. And overall standings मैं ज़रूर देखना चाहूँगी. I'm excited for the overall standings because पूरा लीडर बोर्ड हर गेम के बाद हमें चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. अलिका, यस, वो तो जरूर दिख रहे हैं. मैं तो ओवरऑल स्कोर कार्ड की इंतजार में हूँ अभी कि ये मैप के बाद कितने चेंजेस आए हुए हैं ओवरऑल स्कोर कार्ड में.
एंड ज़रूर काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए. टीम Godlike ऑलमोस्ट हिटिंग दैट 100 पॉइंट. आई गेस आखिरी मैप के बाद ज़रूर वो 100 पॉइंट हिट कर देंगे. Daddychill on the second position, BLX in third, Exception in fourth. Team Nox and Bleed have been pushed down to 7th and 8th position. Shadow, which means B4M Bleed को अभी भी chance है second और third position जाने पे. And Exception और B4M, both of them are, I guess, tied with 39 points in their hands. वेल उस सिचुएशन में फिनिश पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दैट मींस एक्सेप्शन और B4M थोड़ा सा लास्ट गेम में फिनिश पॉइंट्स पे जरूर फोकस करना चाहेंगे. यस, चिकन डिनर जरूर वो लेना चाहेंगे अगर टॉप 4 में आना चाहते हैं. एक्सेप्शन अभी है टॉप 4 में बिकॉज ऑफ द फिनिश पॉइंट्स, बट अगर B4M उनसे ज्यादा फिनिश पॉइंट्स निकाल लेते हैं तो शायद उनको टॉपल ओवर कर सकते हैं लीडर बोर्ड में. Godlike इज द ओनली टीम जिनका स्पॉट बिल्कुल कह सकते हैं कि सेफ है. दे आर ऑन द टॉप, ऑन द फर्स्ट प्लेस, बट बाकी टीम्स को अभी भी कंपटीशन बाकी है. यस, कंपटीशन तो ज़रूर बाकी है. आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस टॉप 5 पोजीशन के जो भी टीम्स है. व्हाट इज गोना हैपन आफ्टर द 5th मैप. एरांगिल के मैप काफ़ी चेंजेस होने वाला है स्कोर कार्ड में. ऑल्दो आई बिलीव दैट nothing will be changing from the side of Godlike. They will be standing in first position irrespective of what is going to happen in Erangel. At least that is what I hope for. And Daddychill, BLX exception, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन में देखने को मिलेगा शैडो. सो आई गेस एवरीबडी शुड पुट एन आई आउट देयर एंड एवरी टीम who is currently waiting for that last moment. All the best for you guys. Before we jump into the last map of Erangel, me and Shadow will be right back taking a short break.
Ladies and gentlemen, welcome to Femstars 2020 by Immortals India along with Playtoniaesports as a broadcast partner, House of Esports associate partner, and SportsKeeda as the media partner. My name is Shadow and alongside me is Elika. And Elika, we are down to the last final game of today evening that is going to decide the champion of the Femstars 2022. Yes, one more map to go to discovery the entire journey's outcome, and I pretty much do believe that one of the best is going to be Godlike for sure, since they're already consistency in the top position. But what happens after them? Is there anybody to question the challenges? Is my question. I think we have to find that answer in the upcoming map. That is the last map for the day, ladies and gentlemen. The map of Irangal. And firstly, I would like to thank all our sponsors, all the audience who are coming out, putting their great time out in our stream, and also thank you so much for all the female players who are showcasing their talent in this platform and giving us a way to grow. And before we jump into the map of Erangel, any quick predictions, Shadow? Any quick predictions apart from Godlike? Well, not prediction. I just want everyone to give their best as an individual player, as a team. Also, it doesn't matter if you're on the first place or the 10th place. It doesn't matter. Just showcase your skills and give an action-packed performance because it's your day. It's Women's Day. It's your day, and live it to the full. I think. Give your best. Yes, I think everyone should just give. Yeah. Yep, everybody should enjoy, get their level best. I think we've already got enough of 4 maps. Now, I want to see who is the actual winner, who is the actual champion. For that, we need to find out what's going to happen in the map of Erangel as we jump into the last map for today, ladies and gentlemen, in Femstar 2022 Battleground Mobile India's concept by Immortals India. And I guess, are you ready, Shadow? Because I'm definitely ready for the last map. I am certainly. And Elika, what's your prediction? I'll ask. Oh, for me, I think I don't have much predictions. Although I'm expecting Godel to obviously be on top. Apart from Godel, maybe BFW as we saw. I mean, they have a good chance. Team Bleed has a good chance. And if you ask me if there's anybody who can get the chicken dinner, it's Team Nox. Because they tried so hard, Shadow, from the first matches. But they couldn't get a single chicken dinner to their hands. And even Daddychill team is doing great along with XCEPTION. So maybe, I think at last I will say only one team name, XCEPTION and Team Nox. I'm rooting for them. Well, XCEPTION, even I'm rooting for them because the performance they had in the previous 2 games, they are definitely going to try their best and they deserve at least one chicken dinner because they have all the skills and the talent. And especially Riddhi, I'll say unki team se the star player is Riddhi from XCEPTION and Nox की teams की जैसे आपने बात की वहाँ पे Goddess ने बहुत ज़्यादा impress किया है अपने performance से consistently in every single game. So let's see how these girls are going to fight up against each other in the last game because that is the last chance they are getting in this event. आज के लिए last chance है उनके पास अगर comeback भी करना चाहते हैं या कुछ impressive भी दिखाना चाहते हैं, that's the last opportunity for them. Yes, one last opportunity and I hope everybody optimizes it well. But to all of the teams who are in the bottom of the leaderboard, don't worry, we'll have more and more tournaments coming in. To get more updates on the tournaments, you definitely have to go subscribe to Immortals India on their YouTube channel. This is the YouTube channel that is currently getting streamed. And not only that, guys, follow us on our socials. That is Immortals India, House of Esports, along with Playtonia and SportsKeeda as our media partner. And you can follow us on socials as well. She's Shadow47, if I'm not wrong. Robin Shadow 47. I forgot my own Robin Shadow 47 on Instagram, and I am Tanvi Jasmine FTW. You can follow both of us and tell us your valuable feedback. But one thing I would love to say to every player in the lobby right now is have fun. This is the last match. After all, even including the prize pool and tournaments, we meant this tournament to have fun and reunite all the female gamers in the country, especially BGMI, to make it a good end.
Well, huge shout out, like you mentioned, to all our media partners, all our partners. इवेंट जिसकी वजह से ये लड़कियां अपना टैलेंट दिखा पा रही हैं एंड आई रियली होप फ्यूचर में हमें और भी ऐसे इवेंट्स देखने को मिले पर्टेनिंग स्पेशली टू द वुमेन इन द ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ताकि और भी ज़्यादा लड़कियां कंसिडर करें कि ई स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. सो huge shout out to Immortals India, House of India Esports, Playtonia and SportsKeeda Esports also. Yes. Well, just few moments until we jump to the last map of Erangel. And as we already know, no introduction needed for the map of Erangel. A very beautiful map. We've got hills and low grounds as well. A very good map for close combat fights, and especially second largest map in the map pool of BGMI. And we've still got some time left. I just want to thank you everybody for giving me this opportunity to be hosting this show beside Shadow. It is actually a great honor to be here today. And I also thank our sponsors, of course, to making this happen. And I want all the audience to make sure that they spam their favorite team names in the chat, the favorite, streamer or content creator. Even हमारा नाम भी आप spam कर सकते हैं if you are your favorite casters for the day. Well, you certainly can, but everybody in the chat, I have a job for you guys. It doesn't matter who is your favorite streamer, content creator, competitive player in any game, not just BGM, in any game. Whoever is your favorite player, just hit her DM and wish her a happy Women's Day. And in this particular event also, it doesn't matter who is winning. Hit their DMs and motivate them that we are with you, you did your best, and just appreciate them for their I think बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है उनके मेहनत के लिए, at least appreciate them. So hit them in their DMs and spam their names in the chat, because जैसे कि एलिका ने बोला, बहुत ज़्यादा motivating factor होता है जब आप अच्छा परफॉर्म ना भी कर रहे हो, चैट आपको बहुत अच्छा मोरल बूस्ट करे. एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर 12 घंटे खेलना is not an easy task. Yes. And not only that, pretty much the girls have been tired as well. They've been playing since, I guess, 12 o'clock in the afternoon. And abhi 4 baj chuke, 4 hours back to back health away. Even they must be feeling tired. So just to, boost their morale, boost their energy for the last map, one of the very important maps, that is the map of Erangel. चलो थोड़ा analyze करते हैं कि एरांगल में कौन से जो ड्रॉप लोकेशन है जो काफी इग्नोर्ड है. शैडो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट ड्रॉप लोकेशंस जहाँ पे ज्यादा टीम्स जाते हैं या ज्यादा अच्छा लूट मिलता है. बट जस्ट फॉर चेंज, लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेस वेयर nobody usually takes a drop in the map of Erangel. मुझे तो लगता है कि पहले जॉर्ज पुल काफी पॉपुलर था, बट अभी में तो मैं देखती नहीं है जॉर्ज पुल में किसी को उतरते हुए. तो आई विल से हॉस्पिटल, समवेयर ओवर टुवर्ड्स हॉस्पिटल एंड Primos. These are the places. Ferry Pier. These are very ignored areas in map of Erangel, I believe. Well, in competitive scenario, I think Primos and Ferry Pier फिर भी हमें teams जाते हुए दिखाई दे जाती हैं. But the extreme locations of the map, और northern side पे जारकी है, जैसे कामेश की है, I think they are the most underrated drop locations. अगर आपका गेम अच्छा नहीं जा रहा है, if you want to re-strategize, I think teams बहुत बार try करते हैं कि they go towards कामिश की और जारकी, फिर वहाँ से अपना गेम को थोड़ा सा better करें. because कहीं ना कहीं आपको अगर एक event होता है एक particular game में आके you are like कि we are not having a good day, तब ऐसे लोकेशंस बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं कि वहां से आप बिल्कुल एक नया स्टार्ट करें और वहां से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें रेस्ट ऑफ द इवेंट के लिए. बट दिस टाइम लास्ट गेम में आई डोंट थिंक कोई भी टीम सेफ गेम प्ले के लिए जाएगी, बिकॉज उन लोगों ने लॉबी टेस्ट कर लिया है. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टांस यहाँ पे लेने वाले हैं. यस, बहुत एग्रेसिव स्टांस तो वो जरूर लेने वाले हैं. मुझे तो लगता है कि ये टीम्स जो है वो मैप के हिसाब से अपने पूरे स्ट्रैटेजीज बदलते हैं. बट इज इट ट्रू दैट अकॉर्डिंग टू मैप प्लेयर्स ऑल्सो चेंज देयर रोल्स, जैसे कि एंट्री, सपोर्ट, स्नाइपर एंड आईजीएल. आई सीन आईजीएल चेंज होता है एक मैप से एक मैप. मैंने वो तो कई बार नोटिस की हुई है.
in very few teams. Do you think any role else changes when it changes a map? जी हाँ, बिल्कुल लिखा। जैसे कि स्नाइपर का हम बात करें कि मेटा बहुत सारे मैप से गायब हो चुका है, बट मीरामार में अभी भी स्नाइपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका असॉल्टर है एक हु कैन गेट यू एन एंट्री इनटू द कंपाउंड, शायद सेनॉक में वो एज अ फर्स्ट असॉल्टर काम करते हुए दिखाई देंगे, बट मीरामार में वो स्नाइपर का रोल निभाते हैं। इन फ्यू मैच फिल्टर जो होता है टीम का, वो कहीं ना कहीं आईजीएल का रोल प्ले करता है, एंड आईजीएल बिकम्स द फिल्टर। तो रोल्स इंटरचेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल। सपोज आपकी टीम का जो फ्रंट असॉल्टर है वो एलिमिनेट हो गया है, देन उस सिचुएशन में कोई और रोल का जो प्लेयर है वो असॉल्टर का रोल निभाना शुरू कर देता है। तो यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल अकॉर्डिंग टू द मैप, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड दिस टेंड्स टू हैपन इन एवरी सिंगल गेम। Yes, with that coming through, I want to add a little, few points to women in esports. And I believe that, all the way from 2017 to till date 2022 February March, a lot has changed in women in esports. पहले तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम थे, बट नाउ आई थिंक वी हैव न्यूट्रलाइज्ड having women in esports, having streamers in esports. अभी तो ज़्यादा लड़के से ज़्यादा काफ़ी एक्टिव होते हैं लड़कियाँ स्ट्रीमिंग पे एंड कंटेंट क्रिएशन पे, रील्स बनाने पे इंस्टाग्राम में, if you've ever checked. And we also had enormous events made by Immortals India. If you remember, 2 साल पहले they've done a LAN in Mumbai, MESC, only for women mobile gamers and PC gamers. Hopefully, I couldn't be a part of the event. If I was in Mumbai, I would have definitely been there, but a great initiative by Immortals India. I hope they keep succeeding through their esports journey life. And also, जिस बात हम वेट कर रहे, जिस चीज़ के हम इंतज़ार कर रहे थे इतने देर से, that is the final map for today. The map of Erangel will be going live within 5 seconds. And yes, this is the time that every team has the opportunity, the one last final opportunity to prove themselves as we move into the final map, the map of Erangel. Once again, we are repeating its second time for the day. वेल सेकेंड टाइम रैंगल हमारी स्क्रीन पे आने ही वाला है एलिका कुछ ही सेकेंड्स में, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइव ऑन आवर स्क्रीन्स। फ्लाइट पाथ की अगर बात करें, नॉर्दर्न फ्लाइट पाथ यहाँ पे शूटिंग रेंज से मिल्टा पावर की तरफ का फ्लाइट पाथ है। दैट मीन्स गॉडल जो मिलिट्री बेस गई थी लास्ट टाइम, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ग्लाइड करना पड़ेगा। क्या ड्रॉप लोकेशन चेंज हमें देखने को मिलेगा या व्हीकल लेके वो मिलिट्री जाएंगे, वो एक क्वेश्चन रहेगा जो थोड़ी देर में आंसर हो जाएगा। जार्की की तरफ तो फिलहाल कोई ड्रॉप इन नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम सिवोनी सिंगल स्क्वाड गया था, वी हैड अ नॉर्दर्न सर्कल लास्ट टाइम। इस बार कौन सा सर्कल बनेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेंड मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है फ्लाइट पाथ के कंप्लीट अपोजिट सर्कल। आई थिंक बीजीएमआई गॉड्स भी थोड़ा सा टीम्स को ट्रबल देने में खुश हो जाते हैं। तो लेट्स सी विमेंस डे के अवसर पे क्या नॉर्दर्न सर्कल ही वापस से आएगा या एक्सट्रीम सदर्न सर्कल आएगा। टीम्स को अगर बात करें, नॉर्दर्न आइलैंड पे एक सिंगल टीम नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल टीम। Yes, I mean they pretty much understood the assignment की सर्कल तो नॉर्थ में बने या साउथ में, बट ड्रॉप तो वही लेंगे जहाँ हमको मज़ा आने वाला है। एंड डेफिनेटली यस ने यहाँ पे ड्रॉप मिला है, पैनिक की टीम में लिया है, as it is one of the very famous areas in the map of Erangel. I want to see if any team actually goes till military base. जब हमने पहली बार एरांगल देखा था तब गॉडल ने ड्रॉप लिया था वहाँ पे, बट अभी तो गॉडल यहाँ पे दिख नहीं रही है। Godel took a drop over towards Gatka and I think they are heading over towards Pochinki. इतना कम एरिया में इतने सारे क्रैश लैंडिंग्स हो चुके हैं। मिल्टा, शेल्टर, पावर एंड लिपोवका पे इतने सारे टीम्स के क्लस्टर बन चुके हैं। आई थिंक इनिशियल फाइट्स काफ़ी आराम से शुरू होने वाले हैं। एंड फाइनएप्पल्स की टीम, दे आर टेकिंग दैट स्ट्रैंड टू गो ऑल द वे टिल मिलिट्री बेस एंड द सर्कल हैज फॉर्म completely opposite to the plain path. It is the south western side covering military base. काश इस बार कोई मिलिट्री बेस में उतरता होता, उनकी ही एडवांटेज में सर्कल होता था।
जी हाँ बिल्कुल, बट कोई बात नहीं, रूइंस में उन्होंने ड्रॉप लिया है, बेसिक सा लूट तो यहाँ पे मिल जाएगा। व्हीकल्स उनके पास मुझे दिखाई दे रहे हैं, दैट मींस दे कैन रोटेट, बट फाइट बिल्कुल शुरू हो चुकी है। एंड इसी के साथ अगर देखिए लेवल एक्स विंटर्स वापस से एक नॉक यहाँ पे निकाल चुके हैं पैनकेक के ऊपर। ग्रेनेड्स यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोबिल को बहुत ही केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास डायरेक्ट रश यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। एनपी की टीम पैनकेक को रिवाइव यहाँ पे मिल पाता है या नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा क्योंकि बिकॉज रोजक में फाइट हो रहे हैं, रोड क्रॉस करके आपको जाना है रिवाइव देने के लिए, बट सोबिल अकेली है। 1v2 सिचुएशन, एक नॉक निकालेंगी बट दूसरे प्लेयर बहुत अच्छा ड्रॉप शॉट डिलीनी की तरफ से सोबिल को नॉक यहाँ पे किया जाएगा एंड इंस्टेंटली फिनिश यहाँ पे M16 के द्वारा करते हुए। नॉक हुए हैं प्लेयर, रिवाइव हो जाएंगे, बट विंटर लेवल एक्स विंटर की टीम की अगर बात करें, एक प्लेयर गंवा चुके हैं। 3 मेन स्क्वाड है, 3 women स्क्वाड एलिका। Yes, 3 women squad. One player is been down, but no problem. I think Team Winterex they can still make it to the top. All 0 finishes है फिलहाल। गेम तो अभी शुरू हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है ना शैडो। We still have the entire map. Maybe things will go into their favor. Maybe they will take every fight in such a manner that it eventually ends up into their crosses. ऑल्दो यहाँ पे टीम विंटरेक्स ऑलरेडी अपने क्रॉसर को एनपी के टीम पे लगा दिया हुआ है एंड टीम नॉक्स की आर्ची ऊपर वाली टावर पे जा रही है। शी माइट गेट अ गुड व्यू ऑन ज़ारा एंड इफ शी टेक्स ज़ारा डाउन दैट इट्स गोइंग टू बी अ very important asset getting going down from team विंटरेक्स। ऑलरेडी एक प्लेयर खो चुके हैं, एक और प्लेयर खोने की रिस्क तो नहीं ले सकते हैं, बट लुक एट टीम नॉक्स, they've pretty much already spotted out Zara and as I told you एक प्लेयर थी जो टावर पे गई थी एंड उसने स्पॉट कर लिया था एंड इट्स वेरी लकी दैट टीम विंटरेक्स somehow managed to go back inside the compound. वेल ट्राई कर रहे हैं, बट जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि नॉक्स का स्क्वाड भी यहाँ पे है एंड पैनकेक यहाँ पे शॉट ले रही थी, काफी अच्छा डैमेज जरूर दिया है। नॉक्स के पास एडवांटेज है कि हाइट का एडवांटेज उनके पास है एंड उस पर्टिकुलर हिल से रोजिक में शॉट्स लेना काफी इजी हो जाता है एंड देख भी पा रहे हैं पैनकेक पे काफी अच्छे शॉट्स यहाँ पे लिए जा रहे थे। आर्ची की अगर बात करें, टावर यहाँ पे होल्ड किया है, जो भी रोटेशन अब रोजुक में होंगे नॉक्स की टीम वो इजीली देख पाएगी, बहुत सारा इंटेल इनको यहाँ पे मिलेगा और दे जस्ट नीड टू बी लिटिल केयरफुल क्योंकि ओवर एग्रेशन कई बार थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। सो पेशेंस के साथ अगर फाइट निकालेंगे, नॉक्स के पास बहुत अच्छा एडवांटेज पोजीशन यहाँ पे है, दे कैन इवन गो फॉर द फ्लैंक एंगल्स एंड एक गलत पीक आर्ची यहाँ पे इजीली नॉक कर सकती थी। यस, देखते हैं कितना तक कहाँ तक जा सकती है, बट आर्ची ये जो काम कर रही है, जो पोजीशन उन्होंने लिया है शैडो, काफ़ी बढ़िया पोजीशन है ऊपर एंड आई गेस द रश हैज कम फॉर टीम नॉक्स। आर्ची कैन नॉट डू एनीथिंग सिंस शी इज ऑलरेडी टॉप ऑफ द टावर। एक नॉक तो हो चुका है, 2 नॉक हो चुके हैं, बस एक ही प्लेयर बचे हुए हैं, दैट इज आर्ची एंड चिकी, बट आर्ची तो ऊपर टावर में है। बाय द टाइम आर्ची कम्स डाउन टू रिवाइव हर टीममेट्स, आई थिंक चिकी विल ऑलरेडी बी डाउन। उनके 2 प्लेयर अभी भी है, ब्यूटीफुल ग्रेनेड आते हुए टॉक्सी लेवल के हाथ में से, शी स्टक डाउन टू वेरी लो एचपी, बट आर्ची इज डेफिनेटली कमिंग इन फॉर द रेस्क्यू। रोरो भी टैग है, रोरो कंफर्म हो चुके हैं एट दिस पॉइंट, आर्ची विल कम फॉर द रेस्क्यू। एक एंड ऐसी ही टीम नॉक्स काफी बढ़िया तरह से कम बैक कर चुके हैं। उन्होंने एक गलत फाइट इनिशिएट तो किया है, बट they sit back and they are back stronger more now, but 0 finishes है उनके हाथ में, they can try moving forward. Actually 2 finishes हैं उनके हाथ में। जी हाँ, 2 फिनिशेस हैं। एनपी के एक्चुअली काफी अच्छा इंटेल था, आर्ची ने वहां पीछे से इंटेल प्रोवाइड कर दिया था कि 2 ही प्लेयर्स यहाँ पे हैं। एक ब्लाइंड रश, वोंट से ब्लाइंड रश, एक रश यहाँ पे जरूर आया था, ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे लगा था नॉक्स की टीम एलिमिनेट हो जाएगी, बट इंस्टेंट बैकअप यहाँ पे मिला, काफी अच्छे 2 फिनिश पॉइंट्स निकाले एंड वापस से अगर बात करें आर्ची अपनी पोजीशन पे हिल के ऊपर आ चुकी हैं। बट दूसरी साइड फिनिश फीड की अगर बात करें, एजी के प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए हमें दिखाई देंगे। लेवल एक्स विंटर को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, दे हैव रेड द फिनिश फीड, उनको पता है एनपी के 2 ही प्लेयर्स बचे हैं रोजक सिटी के अंदर एंड ये इंफॉर्मेशन एनपी के लिए बिल्कुल भी एडवांटेज में नहीं है क्योंकि 2 स्क्वाड्स अब उन पे डायरेक्ट रश कर सकते हैं, दैट इज विंटर, लेवल एक्स एंड नॉक्स आल्सो। दूसरी साइड अगर बात करें,
निको ट्राई कर रही है प्लेयर्स को स्पॉट करने का, बट आर्ची अब स्पॉट कर चुकी है लेवल एक्स विंटर के प्लेयर्स को, शॉट देने का ट्राई कर रही है अपनी स्कारल से। डैमेज जारा को जरूर मिला है, आई थिंक थोड़ा हीलिंग्स का भी शॉर्टेज लेवल एक्स के पास मुझे दिखाई देगा। दूसरी तरफ ब्लीड ईएसपी की डॉली एलिमिनेट हो चुकी हैं, दैट मींस 15 प्लेयर्स एंड 15 टीम 53 players are still in the lobby. BleedESP के एक और प्लेयर नॉक होती हैं, बट IGL will retaliate and MN को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा। दैट मींस AG एंड ब्लीड काफी अच्छा फाइट इरप्ट हो रहा है उनके बीच में भी कहीं। यस वेल फाइट तो चालू ही रखने वाला है, बट आई वांट टू सी टीम एक्स विंटर टेक टीम एनपी डाउन, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी एक प्लेयर को खो चुके हैं। इफ दिस टाइम दे बी एग्रेसिव इंस्टेड ऑफ हाइडिंग, they might have a very good opportunity. एक ग्रेनेड उनके सिर से पॉप ऑफ होते हुए still they're not scared, they're aggressively pushing against team NP। पैनकेक को स्पॉट कर चुके हैं, पैनकेक will be getting confirmed। NP को काफी पोजीशन रिवील हो चुके हैं, NP को still trying to play it aggressively, she can't walk out of the room, the entire room is set to fire with the Molotov, although lucky that nobody is pushing on to her, but I guess Toxie level will take that opportunity very soon। She's on the other side of the room, so level पे अभी तक in there, but he gets spotted out। Neko will go down, and there you go, Toxie's team finally being able to pull off 2 finishes in their hands, and Team Nox उनके हाथ में भी 2 finishes हैं। वो अभी टीम विंटर एक्स के अगेंस्ट अटैक करने जा रहे हैं, एंड एक ब्यूटीफुल ग्रेनेड पॉप ऑफ होते हुए थोड़ा तो डैमेज हुआ है विंजो लेवल एक्स के ऊपर, बट नो नॉक्स whatsoever has been done। Team Nox trying to push against Team Level X Winter। ये काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है by the way, and there you go, काफी क्लोज फाइट था, काफी बढ़िया पुश आ रही है, काफी बढ़िया तरह से लेवल विंटर एक्स यहाँ पे फाइट ले रही है। आर्ची को टेक डाउन कर चुके हैं, they took down Boo and they only have one final player to take care of, and unfortunately Toxie goes down, but Winzo comes for the rescue, and there you go। शैडो हम बात कर रहे थे कि अगर टीम विंटर एक्स के हाथ से हो सकता है एक 3v4 सिचुएशन, एंड ये लोग करके दिखा दिया उन्होंने। Well, Elika, no doubt Winter Level X won that fight, but Chicky almost 10 HP पे थी जब उन्होंने ड्रॉप शॉट लेके वहां पे प्लेयर को नॉक किया। That was so impressive। आप खुद almost 10 HP पे हो, आपके सामने प्लेयर आता है, instantly नॉक वहां पे करते हो। Although Chicky went down बाद में, बट बहुत बढ़िया नॉक्स की टीम ने ये फाइट लिया लेवल एक्स विंटर के साथ। कमेंडेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द टीम्स, बट अभी के लिए तो लेवल एक्स विंटर हैज वन दैट फाइट। ब्लीड इशिका की अगर बात करें, BLD इशिका, तो ब्लीड की टीम को जरूर स्पॉट किया। पैनिक के प्लेयर्स यहाँ पे जरूर डीसी की टीम से नॉक होते हुए दिखाई देंगे। ग्रेशिया इज गेटिंग शॉट्स फ्रॉम समवेयर एल्स, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन है, एंड पैनिक की मिजरी यहाँ पे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत ज्यादा स्प्लिट सिचुएशन है जिसकी वजह से वो पनिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतु स्पाइसी ओपी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स बचे हैं, बेबी एंड G2। लोअर ग्राउंड से फाइट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब ESG के प्लेयर्स भी आसपास नजर आ रहे हैं। डीसी जरूर उनको स्पॉट कर चुकी है, एंड थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे तीनों ही टीम्स को होना पड़ेगा, क्योंकि ESG की बात करें तो मिक्सी अकेली दिखाई दे रही है। अगर नॉक होती है तो इतना आसानी से रिवाइव नहीं मिल पाएगा। yes, फिलहाल के लिए पोजीशनिंग तो ऐसे ही लगता है कि रिवाइव मुश्किल होने वाला है, बट ग्रेसी की टीम आई डोंट थिंक दे शुड बी गिविंग अप, दे शुड कीप फाइटिंग। And unfortunately, as I say that, Gracie gets confirmed with a grenade and ESG keeps moving forward। क्या ये grenade भी damage करेगा? Yup, Nasdc is down to very low HP, and guess what? Shadow पीछे की तरह से Panic की टीम भी shots ले रही है Nasdc की टीम पे। This is quite a tricky game। ESG is trying to push on towards the team, and Panic की टीम भी पीछे से approach कर रही है, बहुत ही suffocating situation में है। Anakin although manages to find cover in the small house, but क्या ये fight resist कर पाएंगे? It's still a 4v4 situation।
वेल पैनिक रूम शैक होल्ड करना कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है, स्पेशली जब 4 प्लेयर्स आपके पास रश कर रहे हो। दैट्स व्हाई शी हैज जंप डाउन। ऊपर से अगर बात करें ईएसजी के पास हाइट का एडवांटेज है, आयरस ऊपर से शॉट्स ले रहे हैं, नीचे 2 प्लेयर्स भी हैं। दैट मींस डीसी की टीम के लिए अभी काफी दिक्कत में सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। इससे कैसे बाहर आएंगे वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। स्मोक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिप्लॉय कर दिए गए हैं, पूरा विजन जो है एनिमी टीम से डिनाई कर दिया गया है। अनकिन डीसी की अगर बात करें, शैक होल्ड किया था, गलत डिसीजन था, बट शी इज अगेन गोइंग अपहिल। प्लेयर्स को स्पॉट करने के लिए, पीछे से शॉट लेने के लिए, किसी तरीके से इंटेल लेने के लिए बहुत बेहतरीन स्मोक्स का यूज डीसी की टीम से हमें देखने को मिल रहा है। बट मिक्सी अगर बात करें, मोलोटॉव का यूज यहाँ पे करते हुए दिखाई दिए, बट वो कनेक्शन फाइंड नहीं कर पाएगा। दैट मींस डीसी इज स्टिल हैविंग एन अपर हैंड इन दिस फाइट। एक फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं, बट 3 प्लेयर्स हैं एंड शैक में यहाँ पे स्पॉट करने का ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स को। आई थिंक शी हैज एन आइडिया कि आइरिस कहाँ पे, एंड यस वो शॉट्स जब लिए आइरिस ने, लेकिन डीसी को पता चल गया कि एग्जैक्टली प्लेयर कहाँ पे है। लेट्स सी नॉक निकाल पाती हैं ग्रेनेड से या फिर नहीं। Yes, but अभी looking at the position of team ESG, I think उनको वापस ऊपर हायर ग्राउंड में आने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाले हैं, and the Molotov lands at the right place, leaving Anakin to have the upper hand advantage. But she is definitely receiving a lot of damage. I think, team Anakin, they should now, move away from the fight or, finish the fight, because the positioning that ESG, both of them are in similar positions. They have 2 players in the downhill and 2 players over the hill, but it's all about how much resources you have, how many grenades, how many smokes you have. Since one of the players has already been knocked out from ESG, team Anakin DC is trying to push over to him, and I guess एक और knock आ चुका है उनकी टीम के लिए. Fifi goes down and the confirmations will be flowing in through currently. And that is how Team Anakin manages to completely eliminate a team with 4 finishes in their hands. A beautiful start for them into the game. और वो सर्कल के बाजू भी है, so they don't have to worry right now. जी हाँ, सर्कल में एंट्री के लिए तो ज़्यादा उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड सर्कल है, एक अच्छा लूट भी मिल चुका है, एक पूरा स्क्वाड वाइप यहाँ किया है डीसी की टीम ने। सर्कल की अगर बात करें, मेजर पार्ट अभी भी वाटर में है, ब्रिज पे वापस से फिनिश हो सकता है। लास्ट एंगल भी हमने देखा था, यासना के पास में कहीं पे ब्रिज के पास में फिनिश हुआ था। इस बार भी टीम्स को अगर हम देखें, ब्रिज के आसपास गॉडल की टीम ऑलरेडी ब्रिज पे है। दे आर एंटिसिपेटिंग कि सदर्न साइड से, मिलिट्री बेस से कोई टीम शायद रोटेट करके आएगी, बट थोड़ा सा केयरफुल वहां जरूर होना पड़ेगा। जो अकेली टीम सदर्न साइड पे है, मिलिट्री बेस आइलैंड, आई थिंक दे विल गो थ्रू वाटरवेज, बट ब्लीड आईजीएल यहाँ पे एक नॉक निकालते हुए दिखाई दिए। कैन शी फाइंड द कंफर्मेशन, वो अभी देखना पड़ेगा। एंड एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स की हम लोग बात कर रहे थे, एलिका एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो चुका है। यस, जरूर एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, बट शायद होप अभी भी बचा है। एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स की स्नाइपी माइट बी बैक ऑन हर फीट एंड शी डेफिनेटली विल बी, as Advi comes in for the rescue. Snipey has to quick back Healy and they need to rotate from this area. There is too much risk and too much vulnerability in this area. Although team Bleed को थोड़े shots देते हुए and they're gonna be falling back, they've got the vehicle as well. And slowly they'll be moving on to the other side of the compounds. ऐसे split game play नहीं खेलना चाहिए इन चारों को, because एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस हम पहले भी देख चुके हैं। शैडो, they are one of the best players we have in the server currently, but yet the only thing they lack is the team synergy. They don't play together. I mean, I do know for a fact कि हमको split से ज़्यादा information मिलता है, but I guess the backup needs to be on point. वेल बैकअप जरूर यहाँ पे हर फाइट में क्रूशियल रहता है, बट गॉडलाइक क्लची व्हीकल से यहाँ पे जो है नॉक निकालते हुए दिखाई दिए फिनिश फीड में, एंड दैट इज समथिंग वाज मिसिंग एंटायर डे। वो भी हमें यहाँ देखने को मिल गया। बट ब्लीड ईएसपी की अगर बात करें, फिलहाल अपहिल पे एडवांटेज उनके पास है। डीसी की टीम नाउ दे आर अप अगेंस्ट ब्लीड। एक नॉक यहाँ पे इंस्टेंटली निकालते हुए एंड नौरान एक और नॉक यहाँ पे निकालेंगी। बहुत ब्लाइंड रश यहाँ पे ब्लीड की टीम से आया था एंड उसी का प्राइस यहाँ पे जो है वो पे करते हुए 2 प्लेयर्स गवा चुके हैं।
एंड डीसी इज लुकिंग वेरी गुड, 6 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी इनके फेवर में आ चुके हैं। ग्रेशिया ऑल्दो एलिमिनेट हो गई है, एक चिकन डिनर डीसी की टीम ले चुकी है, क्या एक और चिकन डिनर आएगा? लुक्स लाइक दे आर हेडिंग फॉर इट। ब्लीड ईएसपी की अगर बात करें, आईजीएल अकेली बची है, डबल वेयर हाउस यहाँ पे फेरी पियर के पास होल्ड करना चाहेंगे, बट ये बहुत ही क्रूशल कंपाउंड्स है इस टाइप के सर्कल्स में। होल्ड करने का बहुत बार ट्राई किया जाता है एंड वो होल्ड करती, उससे पहले ही पानी की टीम ने उनको एलिमिनेट कर दिया है एंड ब्लीड की टीम यहाँ पे 11वें पोजीशन पे एलिमिनेट होते हुए। वेल अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है, हमको 10 टीम बचे शैडो, इतने सारे एलिमिनेशंस, 6 टीम, बट वी स्टिल हैव 33 प्लेयर्स अलाइव। बट एक और फन फैक्ट ये है कि जितने भी टीम्स अभी जिंदा है शैडो, दे आर ऑलमोस्ट फुल स्क्वाड। वी कैन सी वेरी लेस टीम्स विथ one player or 2 players alive. And Team BLD, they have to be very careful because they are currently standing nearby to Godlike's location, and the sweet revenge might just be back. Shadow, remember the last map where Godlike took down BLD? Now BLD might actually take the revenge against Godlike, and धीरे धीरे से वो compounds change करते हुए they are leading against each other. I mean, they are approaching, they might cross their paths in the journey very soon. वेल दे माइट, बिकॉज बीएलडी ने जो कंपाउंड होल्ड किया है, आई एम वेरी श्योर गॉडल के पास एक जरूर कोई स्ट्रैट होगा उस कंपाउंड को ब्रीच करने का। लेट्स सी इफ दे आर गोइंग टू डू दैट। वहीं अगर बात करा जाए बीएल की टीम के, थोड़ा सा सेफ गेम प्ले की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वाटर के थ्रू सर्कल में एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक दे आर समवेयर ऑन द सदर्न सर्कल, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि शोर लाइंस पे अगर कोई स्क्वाड प्रेजेंट होगा तो दिक्कत हो सकती है। गॉडल अगेन वेरी गुड स्ट्रैट, एक प्लेयर वहां पे पीछे की तरफ नजर बनाए हुए हैं अल्फा दीदी, बाकी 3 प्लेयर्स कंपाउंड की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अ गुड गेम प्ले, लेट्स सी रश करते हैं कंपाउंड पे या और बेटर पोजीशन की तरफ जाना चाहेंगे। आई थिंक दे आर हेडिंग फॉर अ मोर बेटर पोजीशनिंग इनसाइड द सर्कल, बट थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि सामने ब्लीड की टीम भी मौजूद है। यस, गॉडलाइक की टीम धीरे धीरे से रोटेट कर रही है, बट टीम ब्लीड भी बैठी है। टीम ब्लीड इज वेरी हंग्री फॉर किल्स एंड आई थिंक टीम ब्लीड ने स्पॉट कर लिया है टीम गॉडल को। इट विल ऑलरेडी टैग डाउन टू वेरी लो एचपी, दे आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कार, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए, एंड दे डेफिनेटली डिड। ओके, काफ़ी बढ़िया गेम प्ले, बट इविल का एचपी काफ़ी लो है। बाय द टाइम शी गेट्स बैक इन ट्रैक, आई मीन नो टाइम, शी इज बैक इन ट्रैक। टीम ब्लीड desperately looking out for team godlike members. Another grenade might be coming in through Ashi, but is that going to do any damage? Nope, doesn't look like it's going to do any damage. Evil's position has been revealed away, and I guess enormous shots are being taken against her. Kuku although goes down from team Bleedu. They need someone to revive. Godel Rebel comes for the rescue right now. अभी ये फाइट काफ़ी और इंटरेस्टिंग बनने वाली है। एक और नेड आते हुए पिक्स के हाथ से, अल्फा दीदी स्टैंडिंग वेरी क्लोज, विल इट डू एनी डैमेज? इट डेफिनेटली डज, बट नॉट इनफ दैट अल्फा दीदी विल गेट नॉक्ड ऑन। अल्फा दीदी अ ब्यूटीफुल स्प्रे, बट इन टर्न गेट्स नॉक्ड आउट, will get confirmed within short time. Clutchy also goes down, Clutchy also gets confirmed. Not the kind of game I expected for Godel. But koi na, team bleed is doing a great job. Team bleed is actually taking the initiative right now, Shadow. Well, they are taking the initiative and Neville अकेली बची है। स्मोक की वजह से उनका पोजीशन रिवील जरूर हो चुका है एंड शॉट्स उन पे आते हुए चारों प्लेयर्स काफी एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, बट बहुत प्यारा से एक प्लेयर को नॉक किया आईजीएल को, बट कूहू रिटेलिएट करेंगी एंड एविल को भी एलिमिनेट करेंगी। इसी के साथ गॉडल की टीम यहाँ पे 9वें पोजीशन पे एलिमिनेट होते हुए हमें दिखाई देगी। ब्लीड की टीम बहुत ही प्यारा शानदार गेम प्ले, 4 फिनिश पॉइंट्स अपने लिए ले चुकी हैं। दूसरी तरफ जो टीम बहुत स्टार्टिंग से अच्छा परफॉर्म कर रही है इस मैप में, दैट इज टीम डैडीचिल। 8 फिनिश पॉइंट्स है इनके पास अभी भी लेका, एंड दे कैन गो फॉर मोर फिनिश पॉइंट्स आल्सो, बट इनका पोजीशन पे मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा बिकॉज ओपन में है, शैक होल्ड किए हुए है, बट द गुड पार्ट इज दे हैव इनफ व्हीकल्स कि वो अपने लिए एक अच्छा कवर बना सकते हैं अगर ओपन सर्कल बनता है तो, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं इस सिचुएशन में। तो अभी के लिए दे आर साइलेंट, एज ऑफ द सर्कल पे है, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, बट अब सर्कल उनसे 213 मीटर दूर जा चुका है।
इस टाइम पे वो रोटेट जरूर करना चाहेंगे। एंड नजदीकी कंपाउंड में हमने देखा था BLD का स्क्वाड बैठा है, उनके साइड से क्रॉस करना है, थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। टीम एक्सेप्शन भी अपने रोटेशन की तरफ बढ़ते हुए फिलहाल दिखाई दे रही है। फोर्थ सर्कल है, ओपन एरिया है, व्हीकल्स बगी मैक्सिमम प्लेयर्स के पास हमें यही दिखाई दे रहा है। कवर बनाना पड़ेगा अपने लिए अच्छा। एंड फेरी पियर के पास में सर्कल है, दैट मीन्स कंपाउंड्स भी यहाँ पे होल्ड किए जा सकते हैं। जो टीम सबसे पहले इन कंपाउंड्स को अपना बना लेगी बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगा उनके पास। सही बोला आपने। द मोर कवर दे हैव, द मच कंट्रोल दे हैव ओवर द मैप, आई थिंक द मच दे कैन डू. But since we are down to the fourth circle, we have very few teams left. And look at Panic. They drew a trap and they made BLD walk away straight into it. But BB and Panic, they are the last two players. They don't have much advantage. The shutdown will come through from the team of BLD, leaving Panic. Finally, अकाउंट खुल गया है टीम BLD का, 2 फिनिशेस हैं उनके हाथ पे. Then there are 7 teams and 25 players left. The fifth circle will start to begin within the next 35 seconds. ये काफ़ी unexpected push था, although Panic should have rotated or done something about it because man advantage भी तो था BLD के पास. It's a 4v2 situation and there was nothing team Panic could do mostly. जी हाँ, पैनिक की टीम की अगर बात करें, बहुत बार उन्होंने फाइट्स ली हैं, कुछ अच्छी फाइट्स भी ली हैं, बट छोटी मिस्टेक्स की वजह से बहुत बार वो लूज कर रहे हैं फाइट्स। आई थिंक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम पैनिक की टीम में आता है कि वो एक दूसरे को कवर फायर नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जब जरूरत पड़ती है। अदरवाइज दे हैव द स्किल। बट BLD की टीम की अगर बात करें, 2 फिनिश पॉइंट्स लुकिंग वेरी गुड, कोई प्लेयर अभी तक गवाया नहीं है, थिंग्स आर लुकिंग इन देयर फेवर। एक्सेप्शन की टीम की अगर बात करें, दे आर बीइंग द स्मार्टर वंस। कंपाउंड की जगह शोर लाइंस को उन्होंने पकड़ा है, दैट मींस अगर वाटर के थ्रू कोई टीम रोटेट करती है, दे कैन स्पॉट देम डाउन वेरी इजीली। एंड बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है इफ यू होल्ड द शोर लाइंस, बिकॉज काफी टेरेंस है, रिजी एरिया है, यू कैन मूव अराउंड एंड हैव अ गुड गेम प्ले। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो मिनी मैप में मुझे एक और टीम दिखाई दे रही है जो फेरी पीर के पास में ही मूव कर रही है अभी। चलो धीरे धीरे से देखते हैं. यू रिमेंबर मैंने बताया था कि रैंगल मैप में द मोस्ट इग्नोर्ड एरियाज में फेरी पियर, BAK, प्रिम्स ऑक एंड आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल इन जॉर्जपुर. एंड फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने बताया था कि फेरी पियर के पास कोई टीम नहीं ड्रॉप लेते, इस बार तो मुझे टीम्स वहीं पे दिख रहे हैं, सर्कल भी इवेंचुअली वहीं पे दिख रहा है. तो अच्छी बात है कि जोन भी कभी कभी बदल जाता है, सर्कल्स भी कभी कभी अच्छे प्लेसेस में शिफ्ट हो जाते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द सर्कल. काफ़ी छोटा सा सर्कल है, इट्स ओवर टूवर्ड्स फेरी पियर्स राइट साइड एंड नॉट मेनी टीम्स हैव द एडवांटेज, बट ब्रिज कैंप करने का काफ़ी एडवांटेज होने वाला है. जो भी टीम इस रोड के अराउंड प्ले करेंगे उनको काफ़ी एडवांटेज मिल सकती है. एंड looks like BLD has just started a fight against Nesca team and they are aggressively pushing into the compound. But do you think they'll have the advantage? ये जो कंपाउंड है इसमें यूटिलिटीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है. ग्रेनेड्स, बहुत ओपन विंडोज हैं, ग्रेनेड्स का बहुत बखूबी यूज किया जा सकता है. एंड एग्जैक्टली वही डीसी की टीम करते हुए दिखाई दे रही है. दूसरी तरफ एक्सेप्शन के प्लेयर्स नॉक हो रहे हैं. BLD बहुत ज्यादा एक साथ रह के खेल रही है जिसकी वजह से नेट्स का शिकार हो रहे हैं. एक प्लेयर नॉक होता है, बहुत प्यारा क्राउच एंड शॉट यहाँ पे लास्ट डीसी रहते हैं, नॉक करते हैं एक और प्लेयर. एंड BLD इज फॉलिंग अपार्ट. लास्ट प्लेयर उनके बचे हैं, नोरा was their star player, but अभी उनको भी नॉक कर दिया जा चुका है. बेकी अकेली बची है and DC aggressively push कर रहे हैं स्मोक के अंदर. Let's see what Becky can do. Becky is running for the position point. Not a bad decision. Safety and good placement बहुत ज़्यादा important था. Otherwise एक 1v4 1v3 यहाँ पे pull off नहीं किया जा सकता था. But DC, look at them. Yes. 11 finish points. Well, हाँ, वो तो बढ़िया ही चीज़ है. They did not push shadow, they waited. They actually set a trap for BLD and BLD straight ahead walked into the trap, and there you see the results. Their team is having it all. 11 finishes in their hands, and I believe कि ऐसे ही अगर वो मेंटेन करते रहेंगे तो लास्ट सर्कल में तो 15 से ज़्यादा ही फिनिश उनके हाथ में आ जाएंगे. And speaking about exceptional esports, we've got one player, that is Snipe, who's trying to sneak into the circle.
and the team to have most advantage is team bleed, जो चारों चारों एक स्प्लिट गेम खेल रहे हैं और चारों के चारों सर्कल के अंदर है, एंड हाई ग्राउंड की एडवांटेज ले रखी है उन्होंने। कंट्रोल मैप का जो भी कंट्रोल है उनके हाथ में है। And Rose coming in from Fineapples. We've also got Rose of Fineapples team, all four alive, up and running, and we are down to the last 6 teams in the last map, Shadow. वेल 6 टीम्स 18 प्लेयर्स। इंसानिया की अगर बात करें, ग्रेनेड यहाँ पे कुक करते हुए दिखाई दे रही थी। लेट्स सी डीसी के प्लेयर को नॉक कर पाते हैं या नहीं। नौरा की अगर बात करें डीसी की टीम से, एक डिफरेंट पोजीशन पे, बट कहीं ना कहीं सानिया ने एंटिसिपेट कर लिया है। एक ट्रिकी स्पॉट है डीसी की टीम का, बहुत ज्यादा फिनिश पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत केयरफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि लुक एट द विंडोज, बहुत इजीली शॉट्स लिए जा सकते हैं। ब्लीड की टीम की अगर बात करें, शॉट्स लेने का ट्राई कर रहे थे, बट रोज फिलहाल नॉक हो चुकी है नौरा नूब डीसी के द्वारा, एंड इंस्टेंटली फिनिश भी उनको यहाँ पे कर दिया गया है। एंड दिस टीम इज नॉट स्टॉपिंग। डीसी 12 फिनिश पॉइंट्स निकाल चुके हैं निका। Yes, but I don't think it is enough for them. They want more. They're looking for more and more. Noranbu की team I think अभी रुकेगी नहीं. They still have BleedESports to take down, and they also have exceptional esports. जब तक आखिरी सर्कल में ये विक्ट्री ना ले ले तब तक we cannot straight away think that the most number of finishes only will be in their favor. क्या पता BleedESports भी कुछ अलग सी स्ट्रैटेजी डिस्प्ले करें, बट फिलहाल के तो एक्सेप्शनल esports getting spotted out, it's out in the open. They also have a full squad arriving through, and team bleed is busy fighting against them. This will be a good opportunity for other teams to invest and take the rotations in. Fineapples की टीम भी पीछे तरह से रोटेशन ले रही है। Fineapples की 3 players ऑलरेडी सर्किल के अंदर आ चुके हैं, एंड द टाइम इज ओवर। 7वां सर्किल अभी शुरू होने वाला है। There's absolutely no place left for anybody in this last circle. पूरे खुले में होंगे फाइट्स। एक एक कॉम्पाउंड है, वो कॉम्पाउंड ऑलरेडी टीम 8 ने कंट्रोल लेके रख चुकी है शैडो। कंपाउंड का कंट्रोल तो जरूर उनके पास है। एफए की टीम के लिए दिक्कतें आ रही हैं। जो स्प्लिट उन्होंने लिया था अब वो उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक प्लेयर नॉक हो चुकी है, रिवाइव उनको नहीं मिल पाएगा। बट सर्कल, लुक एट द सर्कल शिफ्ट यहाँ हो चुका है। एवरी टीम इज लुकिंग फॉर द कवर, जो सिर्फ अभी डीसी की टीम के पास है। नंबर्स भी हैं उनके पास, एंड जिस तरीके से नौरा मूव करेंगे एफए की टीम का बिल्कुल एलिमिनेट वो कर सकती हैं बहुत ही इजीली। अच्छा एंगल उनके पास है। लेवलक्स की अगर बात करें, एक्सेप्शन से एक ग्रेनेड यहाँ पे कुक करने का ट्राई कर रही है। आईजेल इज ऑलरेडी डाउन, एंड उनको ग्रेनेड के द्वारा फिनिश करने का एक अटेम्प्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। नो दोनों में दूसरी साइड जो प्लेयर है उनको फिनिश करने का ट्राई था। ब्लीड की टीम बहुत ज्यादा स्मोक डिप्लॉय कर चुकी है, कंप्लीट विजन डिनाई कर दिया गया है, बट एचपी दोनों प्लेयर्स का बहुत ज्यादा लो है, एंड मशीन गन है एवलक्स के हाथ में। M24 है और पॉसिबल है, एंड बहुत प्यारा नॉक कर सकती थी, बट खुद यहाँ पे नॉक हो गई है। यस, हमने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ब्लीड esports का ऐसा टर्नओवर इवेंट्स आएंगे। एक्सेप्शनल esports completely taking over the legacy, completely taking it over against bleed esports, leaving it to the last few players left from exceptional, and we've got team number 8। यहाँ पे बीएल के अभी भी एक प्लेयर जिंदा है, वो जहर है, वो बाहर खुलेआम में घूम रहे हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ही विल इवेंचुअली गेट स्पॉटेड आउट बाय समवन। स्नाइपी की एक्सेप्शनल esports को रेस्क्यू करने आ गया, कि नोब एक्चुअली रेस्क्यू नहीं, कवर देने के लिए आए हुए हैं। द लास्ट 3 teams, the last one circle to determine and to tell us which of these teams is going to walk away with a massive amount of prize pool of 50,000 rupees and also be the chicken dinner winners of the last game। अगर स्टाइल में शुरू किए तो क्या बात है, एंड में तो स्टाइल में कर सकते हैं टूर्नामेंट की। अगर ये ही मोटिवेशन पकड़ के चलेंगे तो मुझे लगता है कि Team 8 will get the chicken dinner in their hands. They not only have man advantage but also the number of finishes advantage. Zahir spot हो चुके, Zahir B down हो चुके। It's exceptional esports versus Team Nas DC, and it's a 2v3 situation. Man advantage in the hands of team number 8 Shadow।
वेल डैडीचिल की टीम के पास नंबर्स एडवांटेज है, फिनिश पॉइंट्स भी 16 फिनिश पॉइंट्स हैं एंड गॉडल की टीम की तरह एक चिकन डिनर ये पहले ले चुके हैं एंड क्या इस बार एक और चिकन डिनर लेके चीजों को इवन करेंगे या फिर एक्सेप्शन ई स्पोर्ट्स जो काफी गेम से ट्राई कर रहे थे बहुत नजदीक, ये दोनों टीम्स तन्वी वो हैं जो बहुत नजदीक चिकन डिनर के आके ऑलमोस्ट लूज कर गए थे, बट इस बार कोई एक ही विनर आएगा. लेट्स सी व्हिच इज गोइंग टू बी दैट, एक्सेप्शन या फिर डैडीचिल. नोरा नूब की अगर बात करें काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे ले चुकी हैं, स्मोक में रैंडम शॉट्स यहाँ पे लेने का ट्राई करते हुए काफी एग्रेसिवली नाज जा रही थी, पनिशमेंट मिलेगा, नॉक हो जाएंगी. दूसरी साइड से अनकिन आएंगी, स्नाइपी को नॉक करेंगी, कीवी नूब इज ऑलरेडी देयर एंड उनका पोजीशन ऑलमोस्ट ओपोनेंट को पता है, अनकिन को जल्दी से हील करना पड़ेगा. एंड नंबर्स की अगर बात करें दो प्लेयर्स हैं, कीवी नूब अकेली बची है. इट्स अ 1v2 सिचुएशन तन्वी. It's actually a 1v1 situation. नहीं, it's actually a 1v2 situation. आपने सही कहा है. But कीवी spot हो चुके हैं. She gets one, but immediately gets traded. That was so close for Exceptional Esports to be walking away with the chicken dinner in their hands. But well played coming in from Exceptional Esports. I should say, आखिरी मोमेंट तक उन्होंने फाइट लिया. Only अगर स्नाइपी जिंदा होती तो चीजें और आराम से हो जाते थे. And there you go, Team Daddychill for the second चिकन डिनर इन द बेस्ट ऑफ 5 सीरीज. पहले उन्होंने सानोक पे लिया था, फिर से उन्होंने एरांगिल पे लिया है. अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, अ ब्यूटीफुल गेम प्ले ओवरऑल कमिंग इन फ्रॉम टीम डैडीचिल. आई थॉट एक सेकंड के लिए कि नोरानबू भी नॉक्ड था एंड वी ओनली हैड वन प्लेयर एंड आई वाज बैडली एक्सपेक्टिंग टीम एक्सेप्शनल ईस्पोर्ट्स टू विन, बट अ गुड कमबैक कमिंग इन फ्रॉम डैडीचिल. And that is it, I guess. We are in the end. We have finished the last map of the day also, Shadow. जी हाँ, बहुत ही स्टाइल से यहाँ फिनिश किया है. डीसी की टीम की अगर जैसे कि आपने बात किया, ऑलरेडी एक चिकन डिनर ले चुके थे, एक और फिनोमिनल चिकन डिनर इस एग्रेशन के साथ यहाँ पे दिखाई दिया है. एक्सेप्शन की टीम की अगर बात करें, कंसिस्टेंटली हर गेम में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस उनका भी था. दे हैड अ वेरी गुड आउटिंग इन एवरी सिंगल गेम, स्पेशली इन वीकेंड ऑल्सो. इस बार भी सेकंड पोजीशन पे फिनिश कर रहे हैं, बट नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. नंबर्स नहीं थे, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से. दे हैव मेड देयर मार्क एटलीस्ट एवरी सिंगल टीम. एंड इंडिविजुअल प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें, टीम नोरा से गॉडेस इज, नॉक से गॉडेस इज देयर, देन नोरा इज देयर बीएलडी की टीम से, रिद्धि इज देयर फ्रॉम एक्सेप्शन, गॉडल की तो पूरी लाइनअप, रिबेल वाज देयर. इंडिविजुअली काफी सारे हमें ऐसे प्लेयर्स दिखाई दिए हैं जिनके पास बहुत अच्छा स्किल और टैलेंट है. यस, डेफिनेटली. इतने सारे नए प्लेयर्स को मैंने देखे, इतना सारा मोटिवेशन लिया मैंने खुद, इतने सारे गेमर गर्ल्स को खेलते हुए देखे. एंड द वे एवरी प्लेयर केम बैक इनटू द गेम. उन्होंने कम बैक किया इवन दो अगर वो हार रहे. पहला गेम नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेकंड गेम नहीं हुआ कोई बात नहीं, तीसरी, चौथा, 5th गेम तक उन्होंने कम बैक करते हुए बैठा है. एंड आई गेस द रिजल्ट विल टेल अस इफ द हार्ड वर्क वाज वर्थ इट और नॉट. बट डेफिनेटली हैंड्स ऑफ टू ऑल दिस गर्ल्स हु प्लेड टुडे राइट नाउ. एक ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल प्लेयर होना इज नॉट एन ईजी थिंग, शैडो. यू नीड लॉट ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी बिल्ड इनटू इट. एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा तो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए था, एंड ये टीम्स बहुत ही आराम से प्रेशर हैंडल कर दिए थे. जी हाँ, बिल्कुल, बहुत आसानी से प्रेशर सिचुएशन में भी दे आर कमिंग आउट एज अ विनर, एंड दैट्स व्हाट ऑल विमेन आर अबाउट. डजंट मैटर हाउ मच प्रेशर, हाउ मच डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, दे कैन कम आउट स्ट्रॉन्गर इन एवरी सिंगल सिचुएशन. एग्जैक्टली वही यहाँ पे होते हुए हमें दिखाई दिया. ओके, everyone can't be at the first place, but individually हर एक टीम ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है. I can't say कि कोई भी एक ऐसी टीम थी जिनके लिए हम बोल सके कि they had a very bad outing. नहीं, इंडिविजुअली हर सिंगल मैप में, पांचों मैप्स में कोई ना कोई टीम डोमिनेटिंग गेम प्ले के साथ आई थी. दैट मीन्स दे हैव द स्किल, दे हैव द टैलेंट, दे हैव गॉट एवरीथिंग इन देम. इट्स जस्ट दैट कई बार सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती है, यू लूज, समटाइम्स यू विन, बट ओवरऑल दे आर वेरी टैलेंटेड, वी कैन से दैट. Yes, they definitely are talented, and I guess without any delay. बट हाँ, डिले तो होगा ही, थोड़ा तो टाइम चाहिए हमें कि हम कैलकुलेट करें स्कोर कार्ड कैसे हुआ ये मैप का. एंड ओवरऑल स्कोर कार्ड के लिए तो सब लोग वेट कर ही चुके हैं
But do you think, Shadow, there are any changes between the first position and the second position? मुझे तो लगता है कि Godlike has retained in the top position. I can now officially announce this Godlike is in the first position with 25,000. I'm not sure, but I put my bets on them. Well, we'll soon find out. But अभी फिलहाल मैप वाइज की अगर बात करें इस गेम में तो Daddychill is leading the chart at the first place with 33 points and I think maximum 35 points थे first game में Godlike के. They are the second best teams बोल सकते हैं इस इवेंट में. एक्सेप्शन esports की अगर बात करें तो 18 टोटल पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे. एट द सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे वी हैव टीम ब्लीड ऑफिशियल्स अगेन हैविंग अ वेरी गुड आउटिंग विद 14 टोटल पॉइंट्स. देन वी हैव टीम BLX ऑफिशियल्स अगेन 12 पॉइंट्स टू देयर फेवर. काफी अच्छा परफॉर्मेंस. इस बार अगर बात करें इरांगल के मैप में लेवेलेक्स विंटर का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आता है. लुक, जस्ट हैव अ लुक एट दैट. सिर्फ एक प्लेसमेंट पॉइंट है. दैट मींस बहुत जल्दी अर्ली एलिमिनेशन इस टीम का हुआ था. रोजक में फाइट इन्होंने लिया था बट 7 फिनिश पॉइंट्स अपने लिए निकाले हैं. दैट मींस दे हैड अ वेरी गुड आउटिंग. दे वर प्रीटी एग्रेसिव स्टार्टिंग से बट अर्ली एलिमिनेशन की वजह से ज्यादा आगे गेम में नहीं जा पाए. बट good outing, I think. 7 finish points with 1 placement point is not that easy. Yes, but Daddychill ने second highest number of points लिया है. आज का पहला Godlike था 35 and now we see Daddychill with 33 points. And are you ready for the moment we've been waiting for? That is the overall scorecard, ladies and gentlemen. Let's have a look at the overall scorecard की क्या changes है. First position Godlike, second position Daddychill, just 10 points away from Godlike. On third we have Team Exception and on the fourth we have Team BLX. जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था Shadow, I was expecting Exception, BLX and Daddychill and there they are in the top 5 of the overall scorecard. Well, they certainly are. and अगर बात करें तो पॉइंट डिफरेंस भी सिर्फ 11 पॉइंट्स का डिफरेंस है. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे सभी टीम्स के द्वारा हमें देखने को मिला है. एंड दे आर विनर. दे ऑल आर द विनर्स बट एक इवेंट में एक ही टीम विनर हो सकती है. एंड फॉर टुडे दैट इज टीम Godlike. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से दे आर एट द फर्स्ट प्लेस विद 95 पॉइंट्स एंड दे आर वॉकिंग अवे विद 25,000 रुपीज. बट अगर Daddychill की भी बात करें तो 15,000 का प्राइज मनी इनको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है. एक्सेप्शन एंड BLX ऑल्सो आर गेटिंग 5,000 ईच. तो सभी टीम्स को यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिला है. मनी वाइज, एक्सपोजर वाइज और प्लेटफॉर्म वाइज दे हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ इट. एंड वेल, मुझे तो एटलीस्ट बहुत सारे न्यू प्लेयर्स के बारे में पता चला हु हैव ट्रिमेंडस स्किल एंड टैलेंट. Yes, I have got to know so many fellow female gamers who not only, shined their names but also put down 100% efforts. And the 7th place we have Team Bleed officials. Actually a little adjustment over there. We have 6th position Team Bleed, 7th position for Team Bleed officials. But care. And as we are done with the event, as we almost come to an end, Shadow, I would love to thank our sponsors, Immortals India, broadcast partner Playtonia, our media partner SportsKeeda, and of course in association with Houseofesport, one of the biggest reasons why we are sitting here today and hosting this event. Thank you everybody for giving such a great opportunity for me to cast beside Shadow and hosting such a great tournament for women. And I hope to see I hope to see more and more women tournaments coming in through, just not on Women's Day. जी हाँ, बिल्कुल. सिर्फ विमेंस डे नहीं, थ्रू आउट द ईयर वी आर होपिंग और भी इवेंट्स आए जिनमें विमेन को चांस मिले, फीमेल टीम्स को चांस मिले. एंड आई वुड लाइक टू से एज अ 5th प्लेयर हमने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है. नॉट बहुत सारी, कुछ फीमेल्स को देखा है लाइनअप में. काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बट टिल द डे वी गेट टू सी अ फीमेल एज अ मेन प्लेयर इन एनी लाइनअप. we have a long way to go. काफी अभी लंबा रास्ता है जब तक कि एज अ मेन प्लेयर हमें कोई फीमेल देखने को नहीं मिलती है. यस, सही बताया आपने. नॉट ओनली एज अ फीमेल टीम बट ऑल्सो मिक्स टीम में भी इंकरेज करने चाहिए फीमेल्स को, ताकि उन्हें भी एक नॉर्मल जनरल इक्वालिटी की
feeling high. So I guess we are coming down to the end of the event, and if you loved our event and if you want to give more feedback on how much more we can improve from the production side or from the casting side, you can find us on our socials. It is Immortals India @House of Esports on Instagram. Sub links description में mention किए हुए. And just for once, और भी events के लिए update रहने के लिए subscribe to House of Esports and Immortals India on their YouTube channels. And I guess with that coming through, once again me and Shadow wish you all very happy International Women's Day. Until the very event, this is me, Helicopter W, signing off along with Shadow.
So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? Hello guys, this is Archie from Houseofesport. We wish you all happy Women's Day. Hi, this is Sakura OP from Team ESC and we wish you all a happy Women's Day. Hi, this is AJ from Team Aronai Esports. Wish you all a happy Women's Day. Hi, this is Advika from Esports. I wish you all a very happy Women's Day. Hi, this is Dolly from BleedESP. I wish you all a very happy Women's Day. Hi, this is Pixu from Team BleedESP and I wish you all a very happy Women's Day. Hi, this is Anikin from Team Daddychill. We wish you all happy Women's Day. Hi, this is AJ from Aronai Sports. We wish you all a happy Women's Day. Hi, this is Ashma from Team BleedESP. I wish you all a very happy Women's Day. Hi, this is Celcius from Celcius. Wish you all a very happy Women's Day. Hi guys, this is Aisha from Team BL and I wish you a happy Women's Day. Yes, this is Spicy from Esports. Happy Women's Day to everyone. Hi, this is Ishika from Team Bleed. I wish you all a very happy Women's Day. No, you can't control it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne.